जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए। कई सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। देवी प्रसाद जी ने कंफर्म किया है, वी कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर, थैंक यू। सभी हमारे दर्शकों से पहला रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। और आज जो हम एपिसोड लाए हैं इस्लाम से इंसानियत तक, और उसमें जो हमारे मेहमान हैं वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। आपने ऑलरेडी थंबनेल देखा होगा और टाइटल देखा होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जितने ऑल ओवर इंडिया हम जितने एक्स मुस्लिम्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहे और ये जो मूवमेंट है उसको सफलता मिले, ताकि जहां से भी, जहां कहीं से भी अगर लोग इस्लाम छोड़ते हैं तो ये एक नॉर्मल चीज होना चाहिए। इट शुड बी अ न्यू नॉर्मल। ऐसे नहीं कि उनको एक अलग निगाह से देखे हमारे मोमिन भाई या मुसलमान भाई। उनको लगना चाहिए कि ठीक है, इसने इस्लाम छोड़ दिया, उसका बिलीफ है, उसको नहीं जम रहा है इस्लाम तो उसने छोड़ दिया। ऐसी सोच होना चाहिए। और आज का जो एपिसोड है और जो आज हमारे गेस्ट है वो, उनका इम्पोर्टेंस इसके लिए भी ज्यादा है क्योंकि वो अपने फेस के साथ आकर अपनी बात रखते हैं। बिना किसी डीले के मैं उनको स्टूडियो में लेना चाहूंगा और लेने वाला हूं। बस एक छोटी सी मुश्किल आप लोगों के लिए ये हो सकती है कि जो स्ट्रीम है उनके साथ जो गुफ्तगू होगी वो इंग्लिश में होने वाली है, क्योंकि उनको हिंदी बस हल्की सी समझ में आती है लेकिन वो हिंदी बोल नहीं पाते हैं, चूंकि केरला से है वो। तो स्ट्रीम जो है वो इंग्लिश में होने वाली है, इसीलिए हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर मुझे लगे कि कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है तो मैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। विदाउट एनी डिले हम आज हमारे मेहमान को स्ट्रीम में मैं ज्वाइन कर लेता हूं। आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो वी हैव मिस्टर जजर मोहम्मद। वेलकम मिस्टर जजर मोहम्मद टू आवर चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल। Thank you so much, Sahil. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Yeah, and I would like to thank you for accepting my invitation to come to this channel and share your story, why you left Islam, and what are the things that has you have gone through. So I would like to thank you for that। and काफिर क्रिस जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं नो इशू साहिल, जस्ट गेट रॉकिंग ब्रो। Jazar, I would request you to first tell me about, your organization, so that people also know, what kind of work you are doing, and then we will start with the actual, questions that I've shared with you. So tell me something about your organization, and what are the things you people are doing in that. What is your? I know this was the last question, but I would request you to, answer this first, and then we'll move to our actual questions. Yeah, sure, I'll do that. First of all, I thank you, Sahil, for this wonderful opportunity, and all the listeners who are listening us. And I'm very sorry that I cannot speak in Hindi. I'm from South India, and I'm not well versed with Hindi, although I can understand Hindi and I watch Hindi movies. Uh, because it's not my native language. My native language is Malayalam, and but I'm also comfortable with English. And once again, I thank all of you for taking time to listen to me. And today is actually a very happy day in the sense that I think in India, it is this is one of the first of its kind to be registered.
as a registered organization, and to come out in the public and to announce its publicity to the press. Today we held a press conference. I'll come to the details. Our organization is Ex-Muslims of Kerala, and we are an ex-Muslim organization. We it's our I think I should go back to a little to the history of the formation. Last year there was a debate between the ex-Muslims, or I should say more of the atheist kind, and versus an Islamist debate. And it was on the topic was the science of Quran. So, is there any scientific facts or any scientific stuff in the Quran? And so that was on last year, exactly on last year on January 9th. And that was a very that was the exactly the starting point of how our organization. I'm sorry. Can you hear me? Am I audible? We can hear you, Jazar. It's perfect. Sahil? Yeah. Yeah, we can hear you. Go Okay. ahead. Yeah. Yeah. So our organization is Ex-Muslims of Kerala, and we are an ex-Muslim organization. The main objective is to bring out the ex-Muslims of Kerala. Sahil, can we go by actually by the order? Acha, no issues. Okay, it's Like, absolutely fine. We'll go. I yeah, know you might have note down some pointers, based on the list that I've shared with you. So what we'll do, yeah. we'll start with the actual question. No issues. हमारे जजर मोहम्मद कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी ये आज रजिस्टर भी इनका हो गया है और एक डिबेट हुआ था इनका लास्ट ईयर 9 जनवरी को साइंस इन कुरान कि वाकई में कुरान में कोई साइंटिफिक फैक्ट्स या साइंटिफिक चीजें है या नहीं और एग्जैक्टली एक साल के बाद इनका ये रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ये लोग बहुत खुश है इनकी एक आज कॉन्फ्रेंस भी थी केरला में तो लेकिन जजर हमको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चनर था वो मैंने लास्ट में रखा था तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक काम करो आपने जो सीक्वेंस दिया है उस हिसाब से आप क्वेश्चन करो सो जैसे कि आप लोग जानते हैं सबसे पहला जो हमारा सवाल होता है वो यही होता है कि जो हमारे गेस्ट है उनको अपने बचपन से लेकर इस्लाम में रहने तक का सफर बताना है तो मैं इंग्लिश में भी एक बार उनसे वो सवाल कर लेता हूं सो जजर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज टेल अस So tell us about yourself and your journey from your childhood to living in Islam till the time you are in Islam. Share us your journey. How was your childhood? How was your education qualification as far as Islam is concerned? Whether you studied in some madrasa and what was your which sect you belong and everything you have to say from your childhood till you followed Islam. Okay, thank you. I'm sorry for that inconvenience because, I've got things to say, and I was actually using that to lead to Ex-Muslims of Kerala, and it's so if we go by the order, it'll be more easier. That's why I asked you to, I said that we should go by the order. Anyway, I'll tell about myself. I'm Jazar Mohamed. I'm actually an MBBS student. I finished it. I finished my course. I'm waiting for my final year exam. Uh, Jazar, your voice is breaking. Let me check with people. Let me check with people. Hello. दोस्तों क्या जजर की आवाज ब्रेक हो रही है या मेरी आवाज में प्रॉब्लम है? Jazar, your voice is breaking. Some issue with your internet connection, I think. Hello. Yeah, Jazar, your voice is breaking. Hello. Am I audible now? Yeah, you're audible now. Please go ahead, sir. Okay.
So I'm Jazar Mohamed, and I'm an MBBS student. Actually, I finished my course, and I'm waiting for my final year exam. I'm a native of Kerala. Now, the first question to me was, what was my life as a Muslim, and how, you know, I think that was the question. Anyway, I'll come quickly to what I have to say. I Jazar, was born in India. Hello. can you do one thing? Can you Hello. close the camera? Maybe, since you have the camera on, it's consuming more of the Yeah. MBs, and due to which the audio is not clear. Yeah. Yeah. Yeah, Yeah. Okay. just check. Okay. Yeah, just So. Is it okay? no. Or maybe Oh, is you that can leave the stream and rejoin. Maybe that will resolve the issue. okay? तो दोस्तों, जजर जो है, आपने देखा जजर को, काफी यंग है और एमबीबीएस के स्टूडेंट है। फाइनल ईयर उन्होंने शायद कहा है, फाइनल ईयर उनका चल रहा है और फेस के साथ बात कर रहे हैं। आप लोग सोचिए, केरला जैसे स्टेट में उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और बाकायदा उसको उन्होंने रजिस्टर किया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन एज एन एक्स मुस्लिम रजिस्टर हुआ है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जजर की जो पूरी टीम है, जिसमें मेरे ख्याल से सीनियर मेंबर्स और जो फाउंडर है वो भी उनमें है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी किसी दिन स्ट्रीम में लाऊं और उनसे भी कुछ बातें हम देखें। जजर और फिर से ज्वाइन हुए हैं, मैं इनको स्ट्रीम में ले लेता हूं। यस जजर, वेलकम बैक। आई थिंक जजर का इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इशू है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी जो एपिसोड्स होते हैं उनमें भी कई सारे लोगों को जुड़ना काफी जरूरी है। तो आप लोग ये ना सोचे कि यार इसमें आज मोमिन भाइयों से बातें नहीं होने वाली है तो आप लोग कम तादाद में आए, ऐसा ना करें। ये एपिसोड काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट के लिए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। जजर इज बैक। Hello, can you जजर, hear कैन me यू now? हियर मी? Yeah, we can hear you. Yes, please go ahead. You were telling us that you are an MBBS student and Yeah. you are from Kerala. Ample. You don't want the camera on, right? If there is, if it is Hello. not creating any problem with the voice, then I'm okay with the camera on. But I don't know what is creating the problem. Maybe we can go with the camera being off. Is that okay? Yeah. It's absolutely fine. People have already seen you, so even if your cam is on, is off now, Yeah. that is absolutely fine. Yeah. So Go ahead. please go Go ahead. ahead with your yeah. Okay. So I was born in India. When I was 3 years old, family moved to Dubai, and most of my childhood was there. Then I was Jazar, your voice is breaking again. hello. Your voice is breaking One again. second. Do you have a Wi-Fi connection or are you connected to your hotspot, mobile data? No. Am I audible now? Yeah, you are audible now, but when you start Hello. speaking, your voice goes, your voice goes bad. Um, Are you is it connected okay through now? Wi-Fi connection or are you connected through your mobile data? I'm connected with my mobile data. Oh, so can you keep the phone somewhere, at near window so that there is no network problem? Actually, And I'm if you near the have any app window. open in the background, just No. close that.
No, your voice is still breaking. सो मीनवाइल निखिल ने 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं नमस्ते साहिल भाई, यू आर डूइंग अ स्प्लेंडेड जॉब एंड विल बी रिमेम्बर्ड बाय कमिंग जनरेशंस, विल बी मोर एनालिटिकल। थैंक यू निखिल भाई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि आज गुरपुरब है, विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ऑल द 10 गुरुज ऑन द रेस्पेक्टिव बर्थडे, तो आप सभी को उसकी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। हैप्पी गुरुपुरब सभी लोगों को। सचवाला जी पार्ट 2 कह रहे हैं काफी लोगों अल्लाह का आजाब आ गया है, सुधर जाओ। जजर, Can you hear me now? Am I audible? या वी कैन हियर यू नाउ। Let me see if my voice is still breaking. Please tell me. या यू नो इट्स फाइन नाउ, प्लीज कंटिन्यू। Okay. Okay. As I said, most of my childhood was in Dubai. Uh, Even दुबई, when I was in preschool and yeah, in Dubai, I was in Dubai till my ninth standard. I was in ओके Dubai. ओके Even when I was in preschool and kindergarten, my father used to take me for Friday Juma prayers and all. And My parents used to pray, like they are devout Muslims. They pray, but as I was very small, like they didn't force me to pray or something. But when I started, when I crossed the age of 7, when I was in school and when I became 8 years old, I was asked to pray, and from 8 years onwards, that's what I can remember. I started going to madrasa. The thing is, like, my mother's family is a hardcore Salafi family, or a Mujahid family, as some people would call them, Mujahids. So naturally, I too went to a Salafi madrasa. There I studied the Qiraat and basic Tajweed, Fiqh, Tarikh, the 6 articles of Iman, 5 pillars of Islam, and all the Hadith, and all those stuff, and how to pray and so stuff. And after that, I was supposed to pray. There was actually, there was a kind of an order, and even like I used to think that that was right and that was what I was supposed to do always. I used to go to mosques for at least 3 times a day. I used to go to mosques. Mostly it was for Asr, Maghrib, and Isha. I still remember that I had learned the whole last Jews of Quran. That is from the Surah al, सूरह नबा। yeah, till Surah An-Naba, till Amat Salun. I learned it by heart, and like I could recite it without having to look at the Quran. Like it is funny now thinking about it that even at that time I even dreamed of becoming a Hafid. I mean, can you even imagine that being a Hafid? And and it was not just prayers. I used to fast in the month of Ramadan, and I used to in the month of Ramadan. It was our family was very, absolutely in prayers and very in all kinds of Islamic stuff. I used to go to pray to the mosque for all the prayers, almost all the prayers. At least whenever I was in my home, or when I'm back from school, I used to go to the mosque, and even for Taraweeh. And when it is in the last 10 days of Ramadan, our whole family, we used to go to spend our days, the last days in the mosque, for Qiyamul राइट Layl and Tahajjud and all those kind of. And then when I was 14 years old, it was then I had to come back to India due to personal reasons. But still, I still continued my madrasa education. A lady used to come and used to teach us the Quran and other stuff. And for quite some time in my life, like I was in my mother's house. Uh, because mostly my father was still there in Dubai, and we mostly we used to stay in our mother's house. There, only our grandmother was there, and and like later, most of my like from 14 years and until I
got through entrance, medical entrance, I was mostly I lived used to live with my grandmother in my mother's house. Now, as I said, my mother's family a very very like they are very hardcore Salafis. They they are very proud of being Salafis, not just Muslims. They're very proud of being Salafis, and even my mother's family, the elders, the male people, my mother's brothers, and all those my mother's father's brothers and all. They were all members and in the leadership of Kerala Nadwatul Mujahideen (KNM), which is the Mujahid organization Oh, in Kerala. Yeah, that uh, what is the full form? Kerala Ke- Nadwatul Nadwatul Mujahideen. Mujahideen. Yeah, Okay, so KNM. your family members were on the high position in this organization. That is what you are trying to tell? Yeah, yeah. They were in either in the district leadership or they were in the state leadership, and at least they knew everyone. They were well connected with the leadership. Okay. Okay. And near my mother's house, there is a Salafi masjid, which was I think, almost completely under our family's control, or we were the main prominent members in the family, in the masjid Okay. committee. Okay, Yeah, and so I'll just give short summary of what you have said. दोस्तों जजर जो है ये कह रहे हैं कि ये दुबई में थे और मदरसे में इन्होंने तालीम हासिल की है, इन्होंने तजवीद सीखा, इनको जो कुरान का जो लास्ट पारा होता है 30वां पारा जो अम्मा यतसा अलुनसुर नबा से जो स्टार्ट होता है, इनको बाय हार्ट हो गया था, याद कर लिया था इन्होंने। और ये सलफ़ी मकतब फ़िक्र के थे, जो सलफ़ी फ़िरका है उससे ये बिलॉन्ग करते थे। बल्कि इनके जो घर वाले हैं, वो एक प्राउड यानी वो अपने आप को प्राउड सलफ़ी मानते हैं और इनके जो रिश्तेदार हैं, वो केरला नदवतुल मुजाहिदीन शायद इन्होंने कहा है, ये जो ऑर्गनाइज़ेशन है या जो इदारा है, इसमें ये काफ़ी बड़े पोज़ीशन पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वो पोज़ीशन पे थे इनके रिश्तेदार और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये 3 टाइम की नमाज़ पढ़ते थे, असर, मगरिब, इशा और रोज़े रखते थे और इसके अलावा जब रमज़ान का महीना आता तो जो आखिरी 10 दिन होता है, आखिरी अशरा जो होता है, उसमें इनकी पूरी फैमिली मस्जिद में पूरा वक़्त बिताते और आम तौर पे अगर आप देखोगे जो सलफ़ी मुस्लिम होते हैं या अहले हदीस जो फ़िरके वाले होते हैं, वो रमज़ान में लास्ट 10 दिन जो है उसमें जो 5 रातें होती हैं, वो अक्सर जो है पूरी रात वो मस्जिद में ही बिताते हैं। तो ये उस फ़िरके से ये बिलॉन्ग करते थे और इनकी जो फैमिली है वो पक्की एकदम पक्की सलफ़ी फैमिली है मानती है और ये मेडिकल स्टूडेंट है, ये भी इन्होंने बताया है। इनके घर के पास मस्जिद है सलफ़ी मस्जिद और उसको कंट्रोल जो है इनके फैमिली के हाथ में ही है। तो इतना मैंने शॉर्ट में बताया आई होप इतनी उनकी बातें आपको समझ में आई होगी। अ, अब आगे उनसे जानते हैं कि उनके पास आगे कहने के लिए क्या है। यस जज़र प्लीज़ कंटिन्यू यू there was a mosque, Salafi mosque near your house, and yeah. your family had a control of that mosque. Then, Yeah, and when I was a believer, even that mosque and or going to prayers and all all those kind of Islamic things were very dear to me. I enjoy doing those things, and you will not believe it that I there was the permanent or the full time muazzin for the masjid, but I was a part time muazzin for the masjid oh, because I loved delivering the azan, and I'm not boasting or bragging about it, but my azan was quite good. Even when I was in college or when I was in Dubai can you madrasas. can you can you give azan now? And our Muslim brothers and sisters listening to you, maybe sometimes they think that we call some fake people, and they were not actually Muslim, and it's a scripted thing. They I mean some of them they think like that. So as you said, Yeah. you were very good in giving azan.
I would request you to, give maybe 2-3 lines of that in a good voice. Okay, yeah, I've been out of practice for years now, and but still, I'll It's give it a try. okay. Yep. Yeah, give a try. Yeah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. That was fantabulous, जजर. जजर ये कह रहे थे कि वो जितने जो अमल करते थे वो दिल से अपने करते थे, उन्हें काफी इंटरेस्ट से वो करते थे, और इनके जो पास में मस्जिद थी वहां पे ये लाइक पार्ट टाइम मुअज्जिन जैसे थे, क्योंकि इनको अजान देना काफी पसंद था। तो इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे दर्शकों को भी अजान देकर बताएं, ताकि जो हमारे मोमिन भाई जिनको लगता है कि हम फेक लोगों को बुलाते हैं, कम से कम वो उनको ना लगे। So Jazar, that was absolutely fantabulous, and please Thank go ahead, you, please thank you. continue. Yeah, Yeah. so uh, that was, I think, that was most of my religious life. I think we should go to the next question to continue the story then. Yeah, sure. So the very next question for you is why you left Islam. Tell us in detail why you left Islam. Yeah, okay. Now, I got the what happened next was like I got through medical entrance. I secured my medical seat. I got into a government. I had a government medical seat, and like it was then like when I was began like my life began to be a little more free. I began to take a little more interest in politics. That was not something of. It did not happen just like that. It was because in India, it was during those years, it was then that the rise of the fascist Hindutva government came in India, and they were promoting anti-Muslim sentiments. And back then, when I identified myself as a devout Muslim, the suffering of Muslims really troubled me a lot. Uh, the Sangha Parivar gaining control of India, and on the pretext of even possessing, you didn't even have to possess a real beef or something. They just have to make make a rumor about it, and they can come and mob lynch and kill you. Muslims were discriminated against. They were shunned away from the mainstream society. They were treated worse than even cow dung, I should say. And being a devout Muslim, being a true Muslim back then, I couldn't just stay quiet. That was not because I was a great humanist then or allowed all of mankind equally. It was because I cared about Muslims and Muslims only. Because then I used to believe in Muslim supremacy.
Now, all of you know that the left wing politics in Kerala, the left wing politics is very strong. It has a very solid base in Kerala. I was very much attracted to the left because they were talking about equality, they were talking about freedom, they were talking about rights, progress, fraternity, and most importantly, why I was attracted to the left wing was because they even included the discriminated or the persecuted minorities such as Muslims in their activism. And I decided to read more on left wing politics. I was very much in love with leftism, because like equality and freedom and rights and progress and fraternity and all those stuff. Like it makes you more. At least as far as I'm concerned, it makes you more of a human being. And but later, when I began to read more on left wing leftism, I was facing problems with being a Muslim and a leftist, because how like I couldn't reconcile the teachings of Islam and leftism when Islam taught me Muslim supremacy and Islamist rule. Leftism taught me equality, freedom, rights, progress, and all of these good stuff, that the equality, freedom, rights, and progress and fraternity, they were meant for the whole of human beings, whole of mankind. It was not just limited to a particular religion or a particular community. It was for the whole mankind or for the whole humankind. And uh, and I began to, when such differences of opinion between, began to crop up in my mind, I was like confused. Like, I couldn't decide between Islam and leftism. But like just like how a Muslim is taught in madrasas, like whenever you have any doubts relating to religion, whether your religion is true or whether your religion is perfect, or whether you start when you start having doubts, you should suppress those doubts, kill those doubts, squash those doubts, and those doubts will go away. That is what we were taught. That is what I think every Muslim is taught in madrasas. You're not supposed to doubt your religion. You're not supposed to have any kind of hesitation to do any of the stuff that Islam has commanded you to do. And when I began to use that technique, I was successful. I did not have to think anymore because it was easy to shut away my thoughts, cast away my doubts, and be a Muslim and not to think about other stuff. But later, like I my college life started, I began to engage with more people. It was a more much wider world. There were atheists, there were agnostics, there were people of other religions, and frequently we used to come into conversations about religion. And just like we used to compare stuff, we used to compare ideologies, we used to talk about which is better or which is more humane, which is more good for the people, and which is more tolerant, and such kind of talks. uh, and what happened was that like when I when I went to madrasas, when studied in madrasas, I was taught and I was taught, and also I only knew the good stuff about Islam. I didn't know anything about the bad stuff or the alleged bad stuff. I used to think it was alleged. I used to think it as alleged, all the all those stuff they come out with. But I knew all the good things about Islam and its prophet. Only the good stuff. Only the sweet stuff that was presented very emotionally and passionately by Islamic scholars. Like I know many Islamic scholars in their speeches, and they're very emotional when they talk about Islam, and even I was drawn to it. I used to think that even yes, my Islam is the perfect. Islam is the best. And like when I began to, what happened was when I began to talk to different people from different perspectives, and they started challenging my beliefs, they started challenging my Islam, they started challenging my prophet. And being a Muslim, being a true Muslim, you can't just let it go, because it is your religion being attacked, it is your Islam being That attacked, it is your that prophet is absolute, Jazar, that is absolutely a valid point that you have said. yeah. That if someone is questioning your belief, especially if it is Islam,
You cannot just let it go. And this is what the problem of Muslims today we have. And it's not about today, it's it was uh, from the start also. It's from the start. तो दोस्तों, जजन ने अभी तक जो बताया है वो ये बताया है कि जब वो कॉलेज में गए और ये जो केरला से आते हैं, तो वहाँ पे इनका जो ज्यादा दिलचस्पी थी वो पॉलिटिक्स में थी। तो ये लेफ्ट जो आइडियोलॉजी है या जो भी कहते हैं उसको, आई एम नॉट वेरी गुड इन पॉलिटिक्स, बट उन्होंने जो बताया है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो लेफ्ट की तरफ इनका ज्यादा झुकाव था। तो इनको लेफ्ट में जो जो चीजें होती है, जैसे सबके साथ इक्वालिटी के साथ रहना है, या यानी क्या कहते हैं उसको, डेवलपमेंट का सोचना है, यानी जो भी इनको लगा कि ये बेहतरी वाली चीज है, वो इनको इस्लाम में नहीं मिल पा रही थी। वो दोनों मैच नहीं हो रहा था। और इसके अलावा जब ये कॉलेज में गए तो वहां पे इनकी जो मुलाकात है वो यानी एथियस्ट के साथ हुई, एग्नोस्टिक के साथ हुई, और फिर जो बाकी मजहब वाले या धर्म वाले लोग थे उनके साथ इनकी अच्छा, ये कह रहे हैं वी अंडरस्टैंड इंग्लिश। आप समझते हो, लेकिन कई सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश इतनी साफ। तो ये जो है जजर जो है वो जब कॉलेज में दोस्तों के साथ मिले, वहां पे एथियस्ट थे, एग्नोस्टिक थे, दूसरे धर्म वाले थे, मजहब वाले थे। तो वहां पे इनकी उनके साथ कॉन्वर्जेशन होती थी, या वो जो सवाल करते थे इस्लाम में। तो जजर ने एक बहुत वैलिड पॉइंट बताया है, जो आज आप लोग बिल्कुल इसको यानी समझ सकते हो हमारे चैनल पर भी, कि एक मुसलमान के सामने अगर कोई इस्लाम को चैलेंज करे, या इस्लाम को गलत कहे, या मोहम्मद साहब को गलत कहे, तो वो मुसलमान उसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। अगर फिर से मैं कहता हूं कि कोई मुसलमान के सामने अगर कोई इस्लाम को बुरा कहे, या मोहम्मद साहब को बुरा कहे, या गलत कहे, तो वो मुसलमान उसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। यही हाल जजर मोहम्मद का था। और उस वजह से उन्होंने फिर उनको जवाब देने के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो आगे बताएंगे। लेकिन ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो हमारे मोमिन भाई आते हैं उनके अंदर हाइपर एक्टिव मोड होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो इस्लाम को गलत सुनना पसंद ही नहीं करते, या वो सुनना चाहते ही नहीं है। इसके वजह से ये हाइपर एक्टिवनेस उनके अंदर आ जाता है। और यही हाल जजर का भी था। आगे सुनते हैं कि जजर को क्या कहना है। यस जजर, सो you cannot stand hearing that Islam was false, or Prophet Muhammad is not a good person. So what happened then? Yeah, just as you said, I even my hyperactive mode was on because I was emotional. Like I have not seen this prophet, I've not seen him at all, and none of us have. But you know, I loved this prophet. I loved Prophet Muhammad more than my siblings, more than my parents, and even more than myself. Or that was what I was ordered or commanded to do. So that is a hadith. You are supposed to love your prophet much more than anyone, including yourself. And of course, when you hear someone criticizing or even ridiculing, mocking your prophet in a way which is even the slightest way, you won't look at the severity of the attacks. You just look at whether he's attacking or criticizing a prophet, and that is it. You get angry, you get emotional, you want to reply. You become, you want to reply in a much more fierce manner. But since it was Kerala, and that was not the culture that I grew up in, it was I could restrict myself to words or discussions. That is not the case when you mock the prophet in a Islamic country. So Hmm. what happened was, they called prophet a killer, they called the prophet a rapist, they called the prophet a child abuser, mass murderer. They also told that Quran has no morality, the Quran has no scientific facts at all. And I was really disturbed, and I wanted to show them that my religion, that my Islam is the best. And they it was better that they did not criticize it. But for that I needed to study Islam better.
much more than what I was taught or knew in madrasas. So I decided to study. Islam better. And because I wanted to prove them that the Quran was perfect in every way. I wanted to prove that my Prophet Muhammad Rasulullah was the most perfect man in the whole world, in the history of earth, and is the role model for all humans in the future, for the future. And for that purpose, I began to study Islam. And what happened next is the crux of the story. That is the Islam that, like, I started going deep into Islam, not the stuff that you're taught in madrasas or in, in general, not those kind of stuff. I began to go in deeper. The Islam I knew from learning in madrasas and from listening to study classes of Islamic scholars was not at all similar to the Islam that I studied by my own efforts. Now, when people listen to this, like when I say that I studied by my own efforts, they'll, it is very natural to suspect me, to think that it was probably my mistake, that I got Islam wrong, that I interpreted Islam wrong, that I got the wrong idea of Islam, and that is not what the real Islam or the true Islam is, and it is all my fault. No, I will reply to that possible accusation within a minute. I'll tell you where I studied the Quran or how I studied the Quran. I studied Quran from tafsirs of great mufassirs. I don't think any Muslim, any Islamist would say that Abdullah ibn Abbas, who was a cousin of the Prophet, is not a reliable person. He is said to be the greatest mufassir of Quran. There's a hadith that when he was blessed directly by Allah, because the Prophet prayed that Ibn Abbas should receive the best of knowledge of the Quran, and the tafsir Ibn Abbas is one of the best tafsirs. It is the most reliable because Abdullah ibn Abbas was was a companion of the Prophet and lived during his time. And so Tafsir ibn Abbas, and so I studied. One source of knowledge was Abdullah ibn Abbas. Next, it was one of the other tafsirs was Tafsir al-Jalalain, which was written by Imam Jalaluddin al-Mahalli and his student Jalaluddin Suyuti, who's popularly called as known as Imam Suyuti. I also studied Quran from Tafsir ibn Kathir, which was written by Ibn Kathir, who is an expert and an authority in tafsirs, and a lot many mufassirs, including the Tafhim al-Quran by Sayyid Abdul Ala Madudi, and a lot many, even Badawi, Baygavi, and all those great mufassirs. I studied. So you have gone through all these tafasirs, Jazar? You have gone through all these tafasirs? Most of them? I have, and I'm still going through. That Okay, would be the more accurate. Yeah, I'm still going through. Okay. Because the Islam stands by just one. Islam's greatest claim is that if you find one wrong thing in it, and that's enough. That's enough. Yeah, absolutely true. Yeah. So I don't have to go looking around, finding all the mistakes and then deciding whether I should continue or not. I have found whatever I needed to come out of it. Not to come out of it, I looked at it objectively. But then, and now I'm studying Islam as a part of a personal interest, and so that I can answer questions when Islamic scholars themselves ask, try to play down the people who are ex-Muslims, and they just cancel ex-Muslims because they think that ex-Muslims don't know anything, and they just pretending, or they have some anti-Muslim sentiments. It is why, because they're doing all this. Anyway, I studied, and a lot many tafsirs. I studied hadith from the Kutub al-Sitta, that is Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah, and the six of which, these are the six greatest books of the hadith, together which they are called as Kitab al-Sitta, Kutub al-Sitta. And fiqh, you can study fiqh from Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, from Imam Malik,
and their students, Imam Nawawi, Ibn Rajab, Shaykhul Islam Ibn Hajar al-Asqalani, Shihabuddin Ibn Hajar al-Haytami, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyah. All these are great scholars. And like, it is not the olden times. You can study all this if you want. You can study because everything is available. Everything is, you can have access to almost all sources, whichever source that you want. It's very easy now that the internet has come, and people are, the books in the form of PDFs have come, and so it's easy to get a hold of these books. If it was in the earlier times, it were like, some 10, 15 or 20 years back, it would have been very difficult. But now, You no, that's not the case. can you try opening the camera if it is possible? I think your connection is stable now, and it would be more interesting for people to watch you and listen to you if it's possible. If it's not working, then we'll move to the audio version. Yeah. Okay. Yes, Jazar. Yeah. I'm really sorry to interrupt you in between. No, no, it's okay. It's okay. So, and I kept reading and I kept studying. And in spite of all those days and weeks and months and years of studying and reading, I left Islam. Now, you might ask why. It was Yeah. because Allah is just another tribal god, which was elevated by a man, a Qurayshi named Muhammad, for his own, I'm sorry to say this, but Benefit. for his own selfish needs and desires of bringing under the world under his, under his control, controlling it for the with, that was what his main intention was. It's like, he had his own agendas and desires and needs and stuff, and he wanted the world under him. Um and what happened was, yeah, and his selfish sexual and sensual needs and desires of playing the god man, after coming to know about the mythological stories of Jewish and Christian background. He was a merchant, he was a businessman. He used to travel, long, in those days they used to have the caravans and stuff, and they used to come come into a contact with a lot of people, Jews and Christians and all other people. And it is it is very high, much possible and highly likely that he has talked to most of them. He has an idea of what Christianity, of what Judaism was. And when he had, and I should say that he was very shrewd. You have to accept that Muhammad was a very good businessman. He was a great merchant, which was why Khadija was impressed, and which was what led to their marriage too. And so he's not someone who had, who just came out of the blue and decided to create a religion. No, he had a plan and he was going exactly by that plan. And but Allah was just a tribal god. Allah was actually the tribal god, the chief god of Makkah, and the all the history is there in that, and was the main god of the even the Ibn the Banu Hashim tribe, of which Muhammad was a member of. Their main, the Banu Hashim tribe of Qurayshis, they had a chief god, or their tribal, the tribal god, and that was Allah. And Allah was also the chief of gods in Makkah, the head of the 360 idols around Kaaba. And I would say that if Muhammad had a verified Facebook and Instagram account, his fake profile would be have the name of Allah, because that is what Allah is. That is nothing more. Can you repeat It's that? nothing more. I will repeat that. That is, if Muhammad had a verified Facebook and Instagram account or whatever other social media accounts, and if he had a fake profile, that fake profile would have the name of Allah. And now, why not Islam? Because Islam is nothing but a fascist, authoritarian dictatorship. It is misogynist, it is patriarchal, it is discriminative, it is communal, it is violent, it is bloodthirsty. It has no regard for the lives of people who are non-Muslims. Uh,
But then, the listeners will ask, what is Islam then? Islam is Quran and Hadith. And what is Quran and Hadith? Hadith is, of course, the Sunnah of the Prophet. So that is again Muhammad. Hadith is completely Muhammad. And what is the Quran? You can see in a Hadith by Imam Muslim and Sahih Muslim that Aisha was asked, what is the character of the Muhammad? What is the character of the Prophet? What is the character of Muhammad? By, I don't remember the name. You can find that hadith is there. It's a long, detailed hadith in Sahih Muslim, and Well Aisha said. says, yeah, Aisha says that You the are not character of the dating on Prophet, yeah, Aisha, the character of the Prophet is the Quran. So, Yeah, who is Muhammad and what is Islam? And it all answers it. Every question has the same answer. Who is Allah? Allah is Muhammad. What is the Quran and Hadith? That is Muhammad. Everything is Muhammad. Where's the difference? If you talk about one, you're talking about everything connected to it. There's no need to talk about everything separate. It's all Muhammad. And I think your next question was why I don't think Muhammad is a prophet, right? yeah. No, so what is your viewpoint about the Quran? Quran. Yeah, I think there's that And which is if you want to answer the next question, according to you, why can't Hazrat Muhammad be a prophet? We are absolutely fine. You can answer that question. okay. I think everything is connected, so I just answered everything together actually. It's okay. You want to take any question, you can take that. Go with the flow. Yeah. Yeah, okay. So, why I don't think Muhammad is a prophet? I'll also add, one more statement to that. Why I don't think Muhammad is a prophet. I don't think Islam is a religion which has any quality to be considered as a model or a standard. I don't think Allah can be considered to be a god. Uh, uh, Reason? I'm coming to that. That is, for example, for the first thing, why I don't think Muhammad is a prophet. There are many reasons. The first reason is the the revelation or the kind of revelation. The revelation is the most important part in Muhammad's life. It was how he became a prophet, or how he declared himself to be a prophet, how he assumed the prophethood. I would like everyone listening to this to read there are a lot of hadiths on how Muhammad receives his revelations from Jibril, from Allah through Jibril. And just read it. And, you know, just think that such an incident happened today in this world. What will we do? Maybe now, you'll need more time because there are many hadiths on it. Like I'm sure any person who think, at least a little skeptically and critically, that he will definitely have doubts whether Muhammad had a psychiatric disorder. And that is not something to be mocked at, or something to be made fun of, because being a medical student and all that, or being a human itself, I don't have to be a medical student for that. A medical, when you have a medical condition or when you have a psychiatric disorder, it is not a good thing. It's a very pitiable condition. It's you need support, you need treatment. But that was not what happened to Muhammad. Now, I'm not and will like I'm not going to mock Muhammad, but the point to be noted is that Muhammad is not acting when he says about the various ways which he receives revelations. Like when you read the hadith, you can see that, you can read that Muhammad, when he receives revelations, sometimes he hears it, like the ring of a bell, and he goes unconscious. He starts sweating. He starts foaming at his mouth. Uh, he goes all, he starts shivering. He starts sweating, and it's all, it's and he sees stuff. He sees people who are not there. He once, when he was walking down the road, it's a hadith, it's a Sahih hadith. Once he was walking down the road, he saw Jibril sitting on a chair in the sky. I mean, how can you believe that? You saw someone sitting on the chair in the sky. I mean, how ridiculous is that? Okay, And so Jazar, sorry to interrupt. So my yeah, question yeah, to you is, yeah, I'm really sorry. So my question to you is, if you say, being a medical doctor, and you said not necessary that to consider this you have to be a medical doctor. Normal human can also comprehend to this. But my question is, and I'm sure the Muslims will also raise the same question,
that a person who has this mental disorder, psychiatric disorder, how he can do things so well. I mean, he is such a, uh, he has done it in such a good way that he had control over everything. So a person with mental disorder, how he can be so perfect in getting that power that he got? Yeah, that's a very good question. What I would like to say is that since that Muhammad lived, 1,500 or 400 years back, I cannot confirm that he actually had a psychiatric disorder, but it is a possible conclusion. It's a possible assumption, and it was I'm not the first person who's raising such an assumption. It has been it has been raised by a lot of historians because and doctors. There have even been studies conducted on this on Muhammad psychology. The thing is, a psychiatric patient does not have to be, he might not be uh, mentally ill in the sense that he should always be confined to a bed or chained. Not like that. He can be okay or quite normal Normal. in some time. Okay. Hello. Yeah, Yeah, he can yeah. be quite normal. Yeah, he can be quite normal, most of the times, and he can have an attack of, it could be epilepsy, it could be fits, it could be convulsions. Like he would be going for epileptic fits. Start shivering and all. Do you know what epilepsy is? Yeah, you get convulsion, right? Yeah, You yeah, get exactly fits. that. Hmm. Yeah, and so and when you are in epileptic state, you can see things. You can see things because your brain is in a really excited state. You can see things, and that is very much possible. And Okay. such he there were a lot of poets. There were a lot of, because Arabia had a rich culture of poetry, and uh, everyone, not everyone, I mean, there were a lot of poets over there. He must have listened to a lot of poetry, and he could have got many ideas from that. He could have mixed that up with what he learned or heard from Jewish scholars, from Christian scholars, and or it might, maybe this is just I said this is just an assumption, or he could be, perfectly, he could be acting too. He could be acting too, because what he wanted was power, and he could be, acting for it, to achieve that power. That could also be that's also an assumption. I mean, when you look at history, you can only come up with assumptions. You can't, because you can't go back to history, and that is not going to happen again. So you can only make assumptions about it. One of the assumptions is this, and another assumption is he was perfectly acting, and he started getting power and such stuff. And but when you look at the hadith, which talks about receiving revelations, I don't think anyone can actually, think that that is true. Or if such a person think that that is true, they will have to, I would like to ask them that if, hello, Can you hear me? yeah, I can hear you. I can hear you. Am I audible, Jazar? Yeah, yeah, Yeah. you're So audible. I You're was audible. telling you that we have a Muslim viewer, and he's now good friend of us. He comes and he discuss with us on various topic. So listening to your discussion, he's telling that his name is Muhammad Salman. He's asking, how do we know that you, Jazar, isn't suffering from epilepsy? Mohammed Salman, epilepsy has, you can see someone who's suffering from epilepsy. You can, even someone who has seen epilepsy can confirm it. They would start convulsing. They would start contract. Their muscles would start contracting and relaxing, and they would go unconscious and stuff. And it's quite clear. I don't know how to answer that question. How am I now suffering from epilepsy? I don't know Yeah, how but to we answer it. cannot. The simple answer can be, we have not seen Jazar having those epileptic attacks, having convulsion and all that. So Yeah. Salman, the Uh, moment you see him, getting those attacks, then you can definitely think or can say that he's suffering from epilepsy.
Apart from that, we also have Dr. Sky Wilkinson, who's telling that a patient with temporal lobe epilepsy and Exactly. audio-visual Yeah. hallucinations can still live a perfectly normal life and be cunning. Thank you, Yeah. Dr. Sky. Yeah, so please go ahead. Yeah, so epilepsy is not, epilepsy is more of a neurological condition. It's not a psychiatric condition. It's not exactly a psychiatric condition. But what I meant was the way he received his revelations and he saw things. He saw Jibril in the sky sitting on a chair. He saw, all those stuff. And he thought himself to be someone, who has to rule, who I know something, a kind of delusion of grandeur. We say in medical terms, we say something like that. And so, uh, you know, he could be. I mean, we can't confirm something which has happened in history. It's like, when if we talk about the resurrection of Christ, we can't confirm it. We can't say anything about it because it happened, or it was alleged to have happened. It is there in the Bible, and those who want to believe it can believe it. But there is no evidence for it. And so, like, when you're looking at history, you can only make assumptions about history, what could have been, or what is a most probable explanation for that. And so I think I'll continue. The Another reason is that why I reject the prophethood of Muhammad is for moral reasons. Hmm. It's like, I don't think it needs any more explanation, because like you know I don't think any decent human being, let alone a prophet, any decent human being would commit crimes and injustice as Muhammad has done against people of other religion, against men, against women, even against children, even against animals. For children, when I talk about children, the first thing that comes to my mind is the that instant where the Muhammad and Banu his Qurayza? companions attacked. Yeah, Banu Qurayza, exactly. The Hmm. boys who had pubic hair, they were killed. They were just killed. And Yeah, animals. that He is had. really disturbing. Yeah, that is like, I think that is one of the, I've seen many Muslims who listened or read the story of Banu Qurayza and became ex-Muslims and left their religion. Oh, Because, yeah, because that is because no one can, any decent human being, or any human being with at least some good qualities, or at least some good in them, cannot say that that is justifiable. No, you can't, because children are children. You can't. I'm not saying that any killing is unjustifiable. You can't. At least that is my opinion. But killing children who can't defend themselves, just on the pretext of having pubic hair, that is barbaric. That is, you can't justify it with any number of arguments. yeah. And apart Uh, from the incident of Banu Qurayza, there is one more, hadith in, I think it's in Sahih Bukhari, and we conducted an entire stream. Nitrates, right? Yeah, night raid. So Yeah, yeah, the companion goes and check with Hazrat Muhammad that yeah. when we do night raids and attack, unknowingly, or what you say, without intention, we kill the women and children as well. So on that, Prophet Muhammad says that you don't have to worry on that. They belong to the mushrik. They were mushrik. Mushrik. They were of them. So They were. even I don't know how a person with humanity can accept this statement from Hazrat Muhammad. He should have stopped that. He should have told them not to do night raids. If because of night raids the children are getting killed, then he should have simply stopped that. But instead of that, he's telling that they are from them. And I don't know, I really do not know, we had so many Muslim callers coming and defending that, what Muhammad said on that occasion. That is terrible, actually. And I've read, when you take consider women, there were, during these raids and or wars and stuff. When you read Tafhim al-Quran of Maududi, you can see that when these people are captured,
the non-Muslims, they're even if they were couples, like even if they were husband and wife, because Islam has power over them, their marriage is automatically cancelled, and they're not husband and wife anymore. That is as per Islamic rule, they're not husband and wife anymore, and those women, they belong to the Muslims and will be handed out as slaves for whatever purpose, including sex. I mean, Yeah, what kind of profit does that? What kind of right. profit does that? So we have someone who is defending Banu Qurayza incident, and Muhammad Salman is telling Banu Qurayza were killed according to the law of Torah. This is a standard excuse these guys have, that they were killed according to the law of Torah. See, Muhammad Salman, if I tell you one hadith where Umar was reading from Torah, the Prophet got angry. Have you not read that hadith? He got angry. He got angry. Abu Bakr saw him and he stopped Umar. And then Umar apologized for that. And he asked, then Prophet Muhammad said that even if Moses, if Moses is alive now, he has to follow me. You cannot follow his Sharia. Okay, so why this killing was done according to the law of Torah? The Prophet See, Muhammad should have Sahil, handled it on the even if basis of, yeah, I don't understand how the Torah, even if the Torah says that, how does it become justifiable? I don't understand that. yeah. Right. Like This, just they have this standard excuse. I mean, what is this, yeah? What is this? Standard because Torah excuse. said They it. were punished on the basis of Torah. Why Prophet Muhammad? The reason why, they appointed that man, because they thought like, he will do something so that their life will be spared. Was this not the reason why they appointed that man who said that as per the Torah you should be killed? Why they appointed him? Can you think? They appointed him thinking that he will do something so that our lives are spared, we are saved. What kind of excuse you guys are bringing to kill people, to kill children who just got their pubic hair? What kind of standards you have? If a boy is having pubic hair, he's a grown up man. A 9 or 10-year-old boy can start growing the pubic hair. I have only Yeah. one thing to say to such people, like, just imagine if these kind of thing is happening to you and your family, how will you react? Will you still justify it? And That is what all was I the have to mistake ask. of and what was the mistake of women and children? What was the mistake of women and children? The women were sold. The woman was sold. They made them slaves and they were sold. And you people are justifying this act. Come on, I mean, like Salman bhai, come wherever you on. take, whichever point you take, it's it's unjustifiable. For leave the women and children out of it. Still, it's not correct. Wherever you take it, it's Yeah. still not correct. You only say he was merciful, right? Why didn't he spare them? Why didn't I he think spare them? He was I think they'll he come. was sent as a mercy to humankind. If Allah can forgive someone who has done hundreds of killing, why can't Prophet Muhammad spare them? I don't think anyone can justify this act. Yes, Jazar, I'm really sorry. Please No, continue. it's okay. It's okay. And yeah, and not only that, Prophet Muhammad had sex slaves. He promoted slavery. He actually bought slaves. He sold slaves. He had sex slaves. He tried to have sex with one of his sex slaves, when his wife was not looking. I think it was Hafsa. I think Maya, Hafsa was not yeah, looking.
Yeah, Maria. When Hafsa was not looking, he tried to have sex with Maria ibn Kipti. I think that was it. Maria Kiptia. Yeah. Yeah. And so, like, I don't know, like, what standard does he have to show us to lead the world? I don't know. I don't have anything more to say on that anyway, because it's, which prophet will allow all this? I don't know. And just now Sahil said that he was sent as like Muhammad was sent as a mercy, but towards the end, or that was what the Mufassir say, that the fifth or the Surah At-Tawbah, the fifth chapter, and related hadith say that he was sent with a sword to establish the Islamic rule, the kingdom of Allah, the Islamic rules, the Sharia rule in the world. Muhammad was extremely intolerant of other religion and people. There's a hadith in, I guess, in Bukhari. I think he said that he will not, allow the Jews and the Christians to live in Arabia, and that was reported by none other than the second Khalifa of Islam, Umar bin al-Khattab. Like, he will not leave the Christians and Jews, or he will not allow the Christians and Jews to live in Arabia. What mercy is this? Or maybe if you think of it in another way, that's actually a mercy, because not having to live under a prophet like this or a ruler like this, it is actually a mercy. Sahil, what was the fifth question? Hello? 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 Sahil, I can't see you here. Can you hear me, Jazar? Hello, Yeah, yeah, I'm I can really hear you. sorry I got disconnected. What happened? Yeah, due to some network issue. Yeah, so Oh, please continue. yeah, so what was your fifth question? Sorry. What was your fifth question? So my fifth question is, what do you think is the position of women in Islam? Yeah, okay. Okay. I'll go to the fifth question. I think we have covered enough for the second, third, and fourth question. Like, it was Yeah. about Quran, Muhammad, and Islam. I mean, why I left Islam. And I think we'll go to the fifth question. Now, as I said earlier, that Islam is a very much misogynistic and patriarchal religion. Islam considers women in the same way as a person, in the sense man. Man is being given utmost importance in Islam. Women is being considered as his property, just like money, just like property and all other kinds of wealth of a man. Women in Islam are one of the properties of a Muslim man, and
difference in is that women are a bit more expensive. They're not just like other properties, not like money or land that you possess. They Women are they are they're responsible for your next generation, for your children, and so women become more expensive. And the condition of a woman in Islam is same throughout her life. Like when she is a daughter, she's under the mercy of her father. When she's on when she becomes a wife, she's under the mercy of her own husband. Uh, Something that really troubled me was that when I first read that verse in Surah An-Nisa, I forgot which verse that was. I think I think it was the third or fourth verse. I think I don't remember. That even young children, Prophet Muhammad gave his permission or his consent that even young girls who are not even mature, that is not even have crossed puberty, pre-pubertal girls can be married off by their father, by their father or the guardian. Father can marry off his daughter at a very young age. She can even be married off even before puberty. You don't even have to cross puberty. Your father can decide your marriage and then marry it off, even if that young girl refuses to go. After being married off, even if she refuses to go, um the father has the power to marry her off and send her off with her husband. This is because there is no minimum age of marriage in Islam. There is absolutely no minimum age of marriage in Islam. Uh, if the girl is a minor, the father does not even have to consult the girl. If the girl is above 9 years, or if the if the girl has crossed puberty, then her consent should be obtained, and her consent is silent. Silence. Her silence is a consent according to the hadith, and she's paid a mahar. Now, what is mahar? Mahar is another actually a very disgusting thing, because nikah in Arabic, when I found this out recently, nikah actually means, in a way, it means sexual intercourse, and mahar means you're legally paying to have sexual intercourse with your wife. That is what is mahar. That is the amount of money, or the whatever has been agreed upon, that is being given to the wife, the woman you're going to marry, so that you can have sex with her. That is what is mahar. I mean, w- what what standard is this? What moral values there in this? It's like legalized prostitution. You're marrying a woman who's supposed to be a wife, and you're giving her mahar, which the Muslim community boast of something, something very progressive. They say that in Islam there is no dowry, but the status of mahar, or the reality of mahar, is this: mahar is being paid so that a man can have sex with, legally have sex with his own wife. That is what is mahar. And now, the classical Islamic scholars gave this definition, or that is what they considered mahar to be. And classical Islamic scholars are the greatest authority. Modern Islamic scholars have changed the meaning, or they obviously they would have thought that this is not something which the new world or the modern world will accept, because it is very disgusting. It's absolutely dirty to think of something like that. You're paying your own wife to have sex. And that's disgusting. That's really disgusting. And so the modern Islamic scholars, they changed the meaning of mahar to something which is more acceptable, which is more people, when they hear about mahar, it has completely changed the meaning of mahar now, especially in a society in India, like in India, where we see innumerable cases of dowry and dowry related deaths. uh, Muslims say that mahar is something very progressive, but the real meaning of mahar is this. And now, when you come to women, I'll come to the marriage part. The women, they're not supposed to go out of the house without a mahram. Now, what is a mahram? Mahram is a man with whom she cannot have a marriageable or a
sexual relation or legal sexual relationship or a marriageable relationship, she can't go out of her own home alone. She can't. She's absolutely forbidden because she is a woman is aura. As soon as she steps out of the house, shaitan comes looking for her, and she herself is a form of shaitan for the other men. I mean, That is seriously. absolutely amazing logic of Prophet Muhammad. She is a Yeah, shaitan for the someone else. I, Disgusting. I, I mean, like the extent to which Muhammad objectifies women is, it's so disgusting. And and like the and Jazar, yeah, the irony is, if you look at Muslim women now, I don't think anyone is following this, this teaching of Prophet Muhammad, Hazrat Muhammad, that a girl should go out with the mahram. I mean, you yeah, have Muslim women, girls going out without anyone. They go alone. exactly. Yeah, Yeah, no one is following that. no. You can see like Muslim women are going for jobs. Muslim women are studying in universities and colleges, and Muslim women are, I'm actually very proud or very happy to say that Muslim women are really, making a great movement within the religion. At least, they are getting education, they're getting jobs, they're trying to become self-sufficient, even though, the setting in India and being a Muslim is, it's very difficult because Islam is a regressive religion. But Muslim women, at least in what I've seen in Kerala, is something like that, because you can see lots and lots of Muslim girls in medical colleges and engineering colleges, in professional institutions, and even high positions of in companies. I mean, that's a great movement actually. They are completely destroying what Prophet Muhammad had, orders. Right. Okay. So this And guy is yeah, asking, yeah, Abdul Rahim is asking, where it is said she's Satan, Satan. See, Abdul Rahim, there is a hadith wherein Prophet Muhammad sees a woman and he gets excited. He goes to Zainab. He has sexual intercourse with Zainab, and then he comes out, go to his companion, and says that if seeing a woman, if we get this kind of feeling, excitement, then you should go to your wife and get relieved, because woman comes in the form of Satan. Okay, so if you want, I can share that. I was searching that hadith because we have already discussed on this. I'm not finding that, but it's very much, if you see my previous streams, you will find this hadith also. So Prophet Muhammad did say that. Yes, Desert, please continue. yeah. Now, when a woman gets married, she's supposed to be, a tip top. She's supposed to be perfect, or a very, utmost. She should always have a pleasant, happy face. She's supposed to be at their best. She's supposed to dress up, and she's supposed to, and like, when her husband sees her or looks at her, he should feel happy. He should feel like as if, uh, I mean, that is a notion that is being told there, uh, that a woman, a wife, a Muslim wife, everything is for the husband. They have to dress up properly. They should have a happy face always, so that the husband feels happy. That is, and that is a perfect wife according to scholars. You can read that in Ibn Kathir's Tafsir Ibn Kathir. She has to be obedient. That is very, very important. A Muslim wife has to be obedient to her husband at all times and in all matters. A Muslim wife cannot go out. Of course, obviously, she can't go out. She does not have to get married for that order to be, come around. She can't go out even before she's married, or even after she's married, without a mahram. She can't even, if her husband tells her not to see her parents, not to visit her parents, she can't, because husband becomes the master. Husband is the master of the house. If the husband says that you can't see even your parents, the wife can't do anything. That is final. And almost every scholar confirms this.
there's actually a very a huge consensus on this topic. Yeah, if the husband forbids it, she can't do anything except if it is in the matter of religion. I mean, if the husband says you can't pray, she does not have to listen to that. But other than that, she's supposed to listen to her husband in every matter, in every at all times, in all matters. If the husband asks her to come to bed for their sexual intercourse, she has to listen to it, even if. Sahil, are you there? Ah, okay, okay. You're Yeah, yeah. listening to Hadith. Yeah, Yeah, okay. I just wanted to show this hadith Yeah, which he okay. was asking. It's in Sahih Muslim, hadith number 1403a. I'll just read the hadith. It says, Yeah. Jabir reported that Allah's messenger saw a woman, and so he came to his wife Zainab as she was standing a leather. She was standing a leather. She was tanning a leather and had sexual intercourse. So Prophet Muhammad saw a woman, so he came to his wife Zainab as she was tanning a leather and had sexual intercourse with her. He then went to his companions and told them, the woman advances and retires in the shape of a devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart. So just imagine, yeah, the Muslim brother who asked this. This is the hadith which we were talking about. You can go through it. Thank you, Indian That's Agnostic, for sharing the link. that's Yeah. very funny, Hadith. Actually, I mean, uh, how many times will a man will go to his wife then? I don't know. Yeah, I mean, this world is becoming smaller and smaller. It's becoming a global village. You have to see men and women and transgenders and all other people. How many times will you go to your wife in a day? Hmm. And just And imagine a person who is a prophet. yeah, Just imagine he goes out, he sees a woman, and he's getting excited, so much excited that he has to go to his wife who is standing a leather, and he has to do that, do the sexual intercourse. Just imagine, how can you, Muslim brothers and sisters, how can you digest that? A person who is a prophet, a person who already has so many wives. See, if someone who is not married, we can just consider it. He is not married, yeah, he is not yeah. getting anything to get relieved, so possibly he got excited. But a person who is already having so many wives, multiple wives, and he's a prophet, and then he's getting excited. Actually, there is even a hadith for that too. He had the strength of 30 men, and he used to go to his all 11 wives in a night, on the same night. And after having sex with all 11 wives, he used to have a bath once, just once. Imagine having sex with one of your wives and going to the second wife, and then going to the third and the fourth and the fifth, and have you're you're having a bath only once. I mean, how hygienic is that? It is Yeah, so unhygienic. and that's the And reason Prophet Muhammad said that the water of a man is white in color, the discharge of man is white in color, it's thick and white, and the discharge of woman is yellow. yeah, and these just you just showed back then, like Zainab tanning the leather. That was one of my points actually. That is, she was tanning leather. I mean, she was in a job. She was doing some work. Even then, he couldn't wait. He just couldn't wait, and that is what he says. A wife has to submit to the husband, even if she's on a camel back with him. Camel sandal, yeah. Yeah, I mean, like that is I've read another hadith too, that Umar bin al-Khattab calls a woman a toy, that you are just a toy, and we'll call you when we need you. I mean, that is what a woman is in Islam, just a toy. When a man calls her, she can come. When a man asks her to jump, she should jump. When a man asks her to lie on the bed, she can lie on the bed.
I mean, it's just like a robot. This is what is a woman in Islam. Yeah. Uh, and apart from that, I was supposed to say something. It just got away from my mind. Is it? Yeah. So if the wife denies, then the Hmm. uh, the angels will send curses to her Yeah. the entire night. Yeah. Entire night. The Most High Allah will be, he'll be angry. So I even mean, that is a problem. yeah. I mean, like what I feel like asking is, do these angels have no other job other than cursing them? I mean, being an angel. I mean, at least they should have the sense that they are angels. Even they don't have that. Okay, so let's move ahead. You have answered very well. What is the status of women in Islam? Okay, so the Actually, next there are. question If is, we, 1 second, yeah, if you we have more start. points. Actually, I have, but I think it will take a lot more time. And we there's You no, can you can share the bullet points. You can share the bullet points. I mean, yeah. what other things? I'll just say that there's a hadith which says that women are deficient in intelligence and women are deficient in religion. They lack gratitude to their husbands. Uh, Most they'll of them will go to hell. Yeah, most of them will go to hell. And the way, yeah, after they die, I mean, after death and after the judgment day and stuff, when they go to the not women, when the judgment is over and people go to the heaven, the the houris in heaven, the way they are described in the Quran, it is like, and the way generally the paradise in Jannah is described in Quran. It's like, it's like going to a, you know what was I used to say? Yeah, it was like going to a prostitution house come dancing bar. Seriously, like, you have alcohol, you have honey, you have milk, and you have hundreds and hundreds of houris who will come to you. You can have sex with them, and it's like, just like when you go to a strip bar or something like that. It's just like that. I Have mean, you been to a strip bar? no, I've not. I've just seen that in movies. I'm really sorry asking that personal No, question. no, no. Like I've seen that in movies, and I just want to know how that is. I want at least I want to know it, like, I would go at least once to know what it is. Though I'm not interested in going to a strip bar for whatever reasons. But I just want to know what is all about, the atmosphere which is what is that is there in there. Just to know about it. And that is how Islam describes women. It's, a woman is just an object. That's it. Just an object by which a man can play with. Nothing more, nothing less. And people who say that Islam is the most feminist religion and Prophet Muhammad is a true feminist, I don't know what they have been reading or what they know about Islam. Maybe, they were just like me, and they know only the good stuff about Islam. It's because of that. Yeah. Yeah. And the sixth question was, what was the sixth question? Maybe you can repeat it, at So least for the audience what sake. is yeah, so what is such a thing that can compel Muslims to think that they should read Islam and Muhammad's life by removing the band of faith? I mean, you have that Yeah. sect of Yeah. Aqidat, Yeah. right? Yeah. So Yeah. Yeah. what you can advise them, suggest them, what can be the major points you can ask them to go and check so that they can really think that this is not a true religion. Yeah. I'll share what led me to disbelieve, or what led me to my disbelief. It's like,
you should always have an open attitude. You should be open-minded about everything. Do not, have the assumption that Islam or any ideology that is of this world, you know, like how much ever people claim that it is to be it communism, or be it any religion, or be it any capitalism, or whatever ideology, whatever political, social, or economic, or moral ideology. Don't believe that anything that was created or that was designed in this world is perfect. Nothing is perfect in this world. Nothing is perfect. Whatever was created, or whatever we believe or have been taught to believe, was designed, or was written down, or was devised by a human being similar to us. And a human being will definitely have his own or her own, or whatever faults of their own. And so those faults are bound to come up in those ideologies too. So no ideology is perfect. If you have that is the first start, that's a starting point you should have. If if you're not ready to have even a little, or iota of skepticism or criticism, or the ability to think critically, that maybe by chance something in this could be wrong, you can't think about anything critically. And without thinking critically, without thinking skeptically, you can't come up with how to improve the world. If you think the system you have, or the thing, the ideology, the religion, or whatever it is you believe is perfect, you cannot progress, you cannot move on to you cannot what should I say, like what is next. You can't progress. You will still you'll stay the same position as you were the around the time the said ideology was created. For example, if you are an Islamist, or if you believe in true Islam, and if you follow everything that Islam says to the point, to the dot, I mean, there is no Muslim who can do that, because the world has changed a lot. But if there is a Muslim like that, that Muslim is still living in the 7th century. There's no doubt about it, because that is because you believe that that is perfect, and it was perfect. Islam was perfect during the Prophet's time, and the Sahabas, and the Tabi'un, and the Tabi'un, and that was the perfect Islam. And if you believe that was how we should live, then we are still living, or we are they are still living 1500 years back. There's no moving forward. And the next point I would like to say is that the first if you want to study Islam, if you want to if I say that, like, what happened to me, I was supposed to give an answer to the atheists and the agnostics who criticized my religion, and I ended up being an atheist. So if you want to you know uh, see for yourself that, or prove to yourself that Islam is true, start by reading Sirah Rasulullah by Ibn Ashaq. That has been translated by Alfred Guillaume into the Life of Muhammad. The Life of Muhammad is the book. You can start by reading that. And then you can go on to the history of Al-Tabari, or Tarikh Al-Tabari. I'm sure that everyone knows who Al-Tabari is. Muhammad ibn Jarir Al-Tabari. He is one of the most celebrated historians, one of the most celebrated Islamic scholars. There's a big history written by him. There is also the history written, the universal history, a very comprehensive history written by Ibn Kasir. And then I think you should read about the Quran, because without reading the history of Islam, there is no, I don't think reading the Quran will help you think critically. Yeah, it will not make any sense. You have to know what is happening, and then only you can read about the Quran, and then it will make sense. And when you're reading the Quran, you should read it, not just limit to one tafsir or one translation. Not even translation. You have to read the tafsirs, because translations just give you the word meanings. Again, it does not help you much. You have to know about what
The was background. the background, yeah, background, the situation, and the stuff, why that verse was revealed, and everything related to it. And I would say that Ibn Kasir's tafsir is the best for that. One of the best. Even Tafsir al-Tabari, if you can get Tafsir al-Tabari, that is also very good. Then I would say read the Hadith along with the Quran. Uh, Kutub al Sitta is enough, or maybe even Imam Bukhari and Imam Muslim's Hadiths are more than enough. And then you can go on to the other four great, and there are still even great, even other tafsir books which are, other which are not included in the six great books. And then I think people should read about Islamic fiqh or Islamic theological law books of great imams like Imam Shafi, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Abu Hanifa, and uh, and their students like Ibn Hajar al-Haytami, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, and all those great, great Islamic scholars. You should read the fiqh books on them. And when you're doing all this, when you're reading and studying all this, think about this critically. Think about everything that you read and study critically. Uh, just imagine every situation of any injustice that you see. You are like you should have an idea that killing or that a particular act is good or bad. You should have that idea. Do not think that whatever the Prophet said or whatever Islam commands is good. That is not what is moral, or that will not help you at all. And then when you try to be skeptic and critical, and when you when you say when you try to apply that law or that knowledge in today's world, if you think that it is still right, or if it is wrong, that is how you should proceed. Try to apply that knowledge or the law in today's world. If it most of it, most not most, I think 99% of it does not make any sense, because and the rest 1% is almost taught by almost all religions, because it refers to in group or tribal morality, wherein people of a particular tribe, they are good to each other because the tribe has to go on. That is as per, that is evolutionarily, that is there in every human being or every human tribe. But other than that, religions in general, as far as I know, is not particularly good, uh, or at least it is not required in today's world, because we know what is good and what is right even without consulting religions. We have ethical philosophies to know what is good and what is right. We don't have to go to religions. We don't have to go to something which was written or preached 1,500 years back, or 2,000 years back, or 3,000 to 4,000 years back. We don't have to go there. We have enough uh, enough philosophies, or even people, who are talking about this, thinking about this, writing about this. We can come to a conclusion. And Yeah. So, the Jazar, my point of view, your point is absolutely valid, and you have told in detail how a Muslim should go ahead if they really want to understand Islam and the teaching of Islam. And apart from that, my personal belief or thinking is that a person, even if he has to follow any religion, it has to be only till spirituality. That's it. It has to be exactly, only till, because see, our constitution gives right to practice whatever religion you want. Okay, but what is that my understanding is that if we want a peaceful world, uh, the religion, may any religion, be it Islam or any religion, it has to be only till spirituality. That's it. exactly. Yeah, that's it. You I restrict mean, it. Yeah. yeah, everyone should So have the freedom to believe whatever they want. right. So Yeah, Arsalan is telling, why don't you guys debate with a proper scholar instead of doing all this gibberish and spreading hate? You guys don't have the guts to do that, right? You won't let them talk, ignorant nerds. So Arsalan, let me tell you very clearly,
on this channel, we do live stream, open live stream every Tuesday and Friday, and it is open for everyone, be it, I mean, the Muslim callers, be it a normal Muslim or be it a scholar, mufti, anyone. Whatever topic we select, anyone can join and give us reply, give keep their logical arguments till the time they are logical. Yeah, see, our brother Adam, I'll do one thing. I'll share a link to you on Discord. So people who are waiting for you, I would request to join for some time. So, as Adam Seeker said, bring a proper scholar. Arsalan, my challenge is to everyone bring them. So, it's an open platform for the Muslims. You are a seeker, you are a normal Muslim, you are a scholar, mufti, muhaddis, faqih, imam, hafiz, anyone. You can come here, answer our questions. If you prove us wrong, we will accept that. Openly, we are telling, we will accept that. Okay? So we give chance to everyone. The only thing is that you have to be logical. You have to keep your point. Whatever you claim, it has to be based on the evidence. Okay, so if you talk to us, discuss with us on the basis of logical argument and the evidences, you have this platform. We will let you talk. We will set the timing. And if you bring a scholar, we'll dedicate an entire stream for that scholar with respect. We'll give the respect. See, Indian agnostic is telling, I'll give 1 lakh rupees to any Muslim scholars, to any Islamic scholars who can defeat Sahil and Adam. See, and it's not only about Indian agnostic. We have so many people, so many viewers who are ready to donate and contribute. If any scholar comes here, any good scholar with the camera on and discuss on the topics, and if they defeat us, defeat, we are not here to win and lose, but if they answer our question convincingly, on the live, I will accept that my uh, doubt about or my question or my what do you say, एतराज को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, कोई एतराज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लीज लिखो. So my doubt on that particular topic, it's resolved, and I was wrong, I'll accept that. So guys, don't say that. And to be honest, I have spoken to very good, speakers and scholars on various topic offline. So don't say that, we have not spoken to them. Concerns or objections. Yeah, objection. Thank you, everyone. Yeah. So Jazar, our next question is, and it's very important since you have come openly, it's very, very, very important. Okay, the question is, how is it possible you people are coming forward, revealing your faith? Are you not afraid of getting harmed or killed by any random psychopath? Or maybe the social boycott? Very important Okay. question. Yeah, I'll try to answer that. As I said earlier, Kerala has a very strong leftist presence. Leftist presence. I'm not talking about any. I'm a leftist. I'm not a communist or a socialist. I'm a leftist. Leftism is clearly different from communism. Communism can be a part of leftism, but leftism is not communism. Leftism is a broad idea. It is a more. It's an ideology which gives you, which is for the equality, for rights and freedom, and such kind of things. So Kerala has a very strong leftist presence. It has a rich history of revolutions. There has been numerous atheist organizations. There has been many rationalist organizations in the history of Kerala. Namely, or the most important example needs to be mentioned is Kerala Yuktivadi Sangam. Kerala Yuktivadi Sangam, or in English it is Kerala Rationalist Society or organization. And so the history of revolutionary movements, or
in Kerala. It starts from the anti-caste revolutions, the caste discrimination and all those kinds of discrimination which were faced by the lower caste people from the upper caste people. They were not allowed, like just like how it is in the rest of India, how it was and is in the rest of India. That was also there in Kerala, and it is still there, but it has reduced a lot. And that was a very important part of Kerala's history in when you take the rationalist perspective of it. You have Sri Narayana Guru, you have Sahodran Ayyappan, and a lot more atheist and agnostic and social activists who openly talked about against religion, who openly talked about the caste system, the Varna Jazar, system, okay. So, yeah, Jazar, can you hear me? I'm really sorry to interrupt you. So, see, what we have yeah, seen is our observation is, a person living Islam is different from a person living from any other religion. Okay. yeah, Uh, yeah, yeah, our observation is that the other religion, to be brutally honest, if someone lives if someone belongs to some other religion and if he lives his religion, I think, and my experience is that no one will kill him. It can be some amount of social boycott, but at the end, the family will accept them. Okay, if they have become atheists, in fact, if they have become Muslim also, I have seen so many Hindus who became Muslim. Their family abandoned them, and later on they accepted. Okay, I have seen that personally. Okay, but yeah, if someone who is Muslim who lives Islam, it's a very different story. Okay. And apart yeah, from that, the question was very specific that you have become ex-Muslim. And apart from that, people like us cannot reveal our face and do this activism openly. But people like you have registered your organization. Okay. So people like you who has come out of Islam, it's a very different story. And, criticizing Islam and Prophet Muhammad, it's very different. So, what do you never get a feeling that someone suddenly come and do harm to you? yeah. So I was coming to that. That is, I was just talking about the background. That is the high compared to the rest of the country. Kerala is a very high education level and the scientific temper and religious tolerance compared to the rest of India. I'm not saying that it is, it has absolutely no amount of religious problems or anything like that, but it is a better compared to the rest of India, which is why even 40 to 50 years back people were they could do this, they could talk against religion. But some few days before India got its independence, there was a Muslim family in Malappuram who, I don't know if you've heard about them, but it was a few days before India got its independence. That is 1947, a few days before independence. A man with his whole family, they were Muslims. They converted to Hinduism. They became Hindus. And what happened was, within a few days, his whole family, including the cook and the servants there, were killed, brutally killed. They were brutally killed. That was the history or the first incident that I can think of that comes to my memory as an example of Islamic intolerance or Islamic violence. That Everyone is was killed. apostasy. Yeah, the whole family was washed off. The whole family was killed. Okay. And then, Were they caught and uh, were they punished? excuse me, I didn't hear. What was it? Were they Sahil, caught? can you Were repeat? they punished? The killers were Um, caught and were they punished? um, I don't remember actually.
I think they were caught. Yeah, I think they were caught. The man whose family was killed, the man and his family. He later he assumed he accepted the name of. He changed his name to Ramasimhan. If you can, if you can, you Sahil and all others listening, they can Google it and search for Ramasimhan, who was killed in Malappuram for converting from Islam to Hinduism. Okay. And that, yeah, that was the first incident. And another incident which comes to my mind is of a Maulavi who was who was popularly known as called as Cheganur Maulavi. Cheganur is a place in Kerala, in the Malabar side of Kerala. And this Maulavi, he was he interpreted Islam in a little more different way, in a little different way. He used to say that the Quran talks about only three prayers, three times of prayers, and not five times, and such things like that. He was he was what do you say? He used to he brought new things or brought new ideas, introduced new ideas to Islam. But even if you stay in the religion and bring new ideas, or even if you leave the religion, you're treated the same way. You are still a heretic or an apostate or whatever, because you're not the Muslim who has to be live, or who accepts and lives the Mainstream Islam which was Muslim. accepted. Yeah, mainstream Muslim, or the one which was accepted by the Ahlus Sunnah wal Jamaat. Yeah. So this Maulavi, he is actually an Islamic scholar, but he started to openly talk about modifying religion. He even talked about that all religions are equal and all religions should come together, for peace and prosperity, for the safety, and for the brotherhood. And he was an exemplary man. What happened was, when this Maulavi, he began to gain support from Muslims, even from the Muslims, he began to gain support, and people, Muslims, started to started to go on to his idea of Islam, which was quite peaceful, and which was what is that word? I forgot. A reformist, yeah, reformist, that kind of Islam. And the mainstream, the others, the some people, especially the political side, and the Islamist side, and I think the Sunnis, actually, they were very they were very much troubled by this. And what happened was, some people, they one night, it happened some 30 40 years back or something. They came to his house. Some people came to his house and asked him whether he could talk for a program the next day. And so, of course, checking out Maulavi said yes, he could. And they asked Maulavi to come with them. So Maulavi went with them in their car which they came in, and that was the last time anyone saw Maulavi. Maulavi was never seen after that. Even his dead body, or if he's dead, we don't know whether he's dead or not. He's probably dead by now, because all these years, we still don't even have a body to confirm it. Okay. And another thing which happened quite close to Kerala, in Tamil Nadu, in Coimbatore, 3 years back, I think in 2017 or 18. I don't know if you've heard about Farooq. Farooq was an atheist. No. No, okay. Okay. Farooq was an atheist. He was a Tamilian, and he was an ex-Muslim. He was an atheist. And what happened was, he started to openly criticize religion. And uh, one day, when he was talking with his friends in his WhatsApp group, he said that there is no God, and all that is a myth and just a belief, and there is no evidence. And I know typically how an atheist talks. That was how he talked. And what happened was, he was killed by his own closest friends, his own best friends. He was killed by them in Coimbatore, in Tamil Nadu.
and that happened just 3 years back. And last year, some of ex-Muslims of Kerala, before ex-Muslims of Kerala became an official organization, they went to Coimbatore. It was a memorial program, Farooq Memorial Program, and attended it. And what happened is that Farooq's family, I think they no longer believe in Islam. Because they were devastated. Because they lost their son. I mean, he was not killed by any Islamist or any people who with extremist ideas. No, he was killed by his own friends, people whom he trusted, Hmm. and that was terrible actually. Yeah, Uh, it's another really terrible. another thing that happened in Kerala itself, in Kerala, in Idki district in Todupuzha. What happened was there was a college professor. His name was Joseph, and this professor he set up a question paper for an exam in his college. He set up a question paper in his exam for the exam, and it was some story or something. I forgot the exact details of it, but it was a there were in the question paper there was a passage or something and it had the name of Muhammad in it, and it was a bit controversial story or something, but it was just a story. It had no connection to Islam or Muhammad, the Prophet Muhammad whatsoever. It was nothing connected. It was nothing related to that. It was just a question paper and some random story in which some random guy had a name which was Muhammad. But the story was, but what happened was this became a very big issue, and this was taken up by the Popular Front of India party, and they have the political party. Their political wing is SDPI. These people, they they actually, you know, they punished Joseph, that Professor Joseph, in the way, exactly the way which you can read in Surah Al-Ma'idah, the 34th verse, if I remember correctly. That is, Professor Joseph's, his hand and his limbs were cut off, opposite limbs were cut off. Hmm. And he's actually a living martyr. He's a living martyr. He's a living martyr, uh, which all for all of He's us to still see. alive? Yeah, He's he's still still alive? alive. He's still Okay. alive. He has even written a book also, uh, and he's a living example for us to see the violence of Muslims in Kerala. I'm not using the word Muslims, or maybe Islamist. Maybe that's a better word. Right. And uh, yeah, so but So, now, see, you have shared so many stories, which is really scary. But what made yeah, you people come, yeah, revealing your faces? yeah. So Brother, by the way, sorry to interrupt. Hi, brother. How are you? I hope you're doing well. This is very interesting what you are showing us, especially when you said their limbs was cut off from the opposite side. That's exactly what Quran says. It's like 533, chapter number 5, verse number 33. Cut their hands and feet off from the opposite sides. So it like, and when you said it's pure Islamic, you are absolutely right, brother. Absolutely right. The guy did not do anything wrong other than following the Quran itself. Yeah, so let me introduce Jazar. He is Adam, our friend. He is also an ex-Muslim okay. Christian now, and he has Oh, got okay. amazing knowledge of Islam, and he has challenged almost all the scholars of Islam to come and have debate with him. In fact, he said, you can be four muftis together, and I am alone sufficient for you all. So he's such a great personality.
he is with me on our team, and I am with him on his channel. So we Okay. come together and we have the discussion. So Adam, just imagine a person who is an ex-Muslim and they have their organization which is registered, and they got their registration yesterday or today. They had the conference. He is coming live. He has said so many things about Islam and Prophet, and he's telling that showing his face. What you have to say about it? Man, that shows a lot about India. I love the freedom in India when it comes to that, and especially in Kerala, where you have like a huge majority of Muslims, and they are. He's talking from the Kerala point of view, where he's getting things registered. I'm not even just amazed, but rather I'm happy. This is the first movement. We should support this movement, so that in India at least, ex-Muslims should be able to come up with their faces and could be able to show. But at the same time, when he is telling us how much of a persecution has happened in the past for these ex-Muslims, imagine that, like cutting the limbs off, like it's it's not shocking, it's shivering for me. I just shivered, you know. The guy in Sholay film, the Thakur, whose both of his Right. hands were cut off, like that's what they did, like simply. And yeah, think about it. Yesterday we were laughing about the movie Sholay and Thakur, and we were laughing about it because it was a movie. Okay, we can laugh about a Right. movie, but imagine right now it's a real human being. It's a Hmm. real human being who has to go through this agony. How will he eat? How will he go to the bathroom? How will he do his basic stuff? Why? Because he just left Islam. He left Islam and he questioned. Exactly. Yeah. Right. So Hi, Jazar, Adam. Yeah. yeah. Yes, I'll continue. Tell. Yeah. So Jazar, you got this. So don't you feel scary, or are you not afraid? I like to repeat that question because Yeah, it's yeah. very important that we have people like you. You are an example for all the ex-Muslims. We want people from all over India as well as the world that if someone lives Islam, it has to be normal. It has to be normal. So you people are, what do you say, burying that seed. You are planting that seed that it can be a normal thing. You are really brave, and I would like to salute you and the entire team of ex-Muslims of Kerala, the entire organization. We would like to salute, and this salute is from all the viewers who are watching you now. Thank you so much. I'll surely convey all this, all your regards to the other members of my organization. But you know, like I think if you call me brave, it's because it has got nothing to do with me, because I don't think I have done anything. It is because my predecessors have set the ground for it. There is a there has been there has been violence, yes. There has been persecutions, yes. Even now there are persecutions going on. People who leave Islam are being persecuted by the by the masjid, the mahal committees, and by their own families, by their own relatives, and people like that. But the the because you have left Islam, people do not come to kill you anymore, or that is what the general situation is, or it can change any time. I mean, if some extremist mad guy wants to come and kill you, it can happen. But still, the situation now is quite peaceful, because people are turning to challenge disbelievers, or ex-Muslims, or atheists, or agnostics, or people of other religion, and we are slowly creating an atmosphere of debates and discussions. We are trying to bring about a change in the way religion is being handled, and it is not through violence. It is by words. It is by speaking to others,
It is by holding debates. It is by holding the discussions, and using various social medias like Facebook, Instagram. Clubhouse is a greatest one of the greatest alternative now. We just had a debate yesterday, and this is what we're slowly trying to bring about. Like I have to mention this name. He's EA Jabbar. EA Jabbar is one of the oldest ex-Muslim atheist rationalist in the history of Kerala. He has been writing and speaking against Islam and Islamic scholars for a long time in Kerala. I mean, you can check out his channel in YouTube, which is EA Jabbar, goes by the name of EA Jabbar, but it is in Malayalam. But still, you can just check it out. And he has been a role model for us. He has been a role model for all of us. Even when he became an atheist, when he left Islam and continued with his life, he did not, attack Muslims. He did not in the sense he did not, go against Muslims. He went against Islam. He still had he maintained good relationships with any Muslim, with every Muslim in his area. He is from Malappuram. With every Muslims in his area, in his locality, with his own family members and relatives. And he's one of I'm not saying using the word perfect, but he's a very good example for us ex-Muslims of Kerala to follow, because that is what we should be. We are not trying to attack Muslims. That is not our intention. Any ex-Muslims does not and should not have in the intention of attacking Muslims. We are not against Muslims, or we are not against any human being believing in any ideology or religion or whatever. We are against fascist authoritarian ideologies, be it Hindutva, be it Islamism, be it just against humanity, just against the progress of humanity. That is what ExMuslim is such an organization. And I have, I am showing courage, or I can show my face and talk to you people in public. I do all my religious criticisms on Facebook and Instagram. I don't have a YouTube channel because I'm not that, now is not the right situation for me to create a video or become active in YouTube, because first of all, I don't have the necessary equipment for all the stuff, and I'm concentrating on my academics now. But I can do all this in public because the society in general, not just Islam, has improved, has progressed. People are more concerned about their own well-being, their own family, their wealth, and the progress of Kerala as a whole. It's people do not want to engage in things like violence, communal violence, killing, and unnecessary things which can only take take peace of your mind, break relationships, divide families. People are no longer interested in that. Your voice is lagging. Your voice is breaking. Jazar. Am I audible now? Yeah, you're audible now. I think I will, pause the camera. Right. No issues. So we got the message, that you wanted to give, and that was the last question about, and you have already answered that what is the vision and, of the organization ExMuslim of Kerala. I'll just repeat the vision and the future. The ExMuslims of Kerala was created to help Muslims or ex-Muslims who have left religion and are facing persecution in the community. Any kind of persecution, like if they are being mentally tortured, if they have chance of being physically tortured, if they are being neglected by their family, if they are being avoided by their families, if they have, if they are being
discriminated against, if they are being thrown away from their jobs or facing any kind of difficulties in their life. That is what extremism of Kerala for. We are trying to give moral and financial support to people who have left Islam, and that is what our objective is. That is to protect the basic human right to live without any religion, to take effort to normalize dissent, blasphemy, and apostasy, and support people who publicly announce their apostasy, both emotionally and morally. This is what our vision is. And our objectives too are some related to this. We once again, I would like to make it clear that we are against any fascist ideologies, uh, and I have no fear in naming that we are against any Hindutva ideology or any Islam ideology which is fascist, authoritarian, kind of dictatorship. We're against all that. We want freedom. We want freedom for humanity. We want people to believe, who want to believe in religions, to have the freedom to believe in religion. A Muslim who wants to remain as a Muslim should have the right to remain a Muslim. A Muslim who wants to become an ex-Muslim, leave religion, and become ex-Muslim or atheist or go into another religion, he should have the freedom to have that too. That is what we want. We want a world where people are or can do things in which does not affect other people's lives without hurting anybody. That is what ExMuslims of Kerala is for. And today we formally announced our registration, and it has been we held a press conference. Many mainstream news media came, and actually we are viral now. Actually, Asianet News and a lot of other news has broadcasted ExMuslims of Kerala's organization. That is a good The sign, coming out. actually. Yeah, that's a very good sign. That is a And good sign. Yeah, yeah, this that is is a good what is sign. ExMuslims of Kerala. Yeah. So, Jazar, it's really it was an amazing interview with you. You put down put forth your points very well, and I hope people listening to you, especially the Muslims, will try to understand that being an ex-Muslim is normal, and this is what we are trying to spread through our channel. You can be an ex-Muslim without being discriminated, uh, without if someone is living Islam, it has to be normal. And when the situation comes like that, that a person living Islam is normal, then possibly we might have to shut down our channel. Okay, so that is also possible. So for that we are doing so many things, and we are trying to bring so many people. What I'll request, Jazar, is if you can connect me to other ex-Muslims of from this organization, especially uh, Liaquat, and some Indian agnostic is selling Arif Hussain Theruwat. So we want people like them to come to our channel and share their views, so that we want that everyone from every part of the world, especially from starting from India, that we are connected with each other. So I would Exactly. request you to speak to your fellow members, that we would like to have word with them also on our channel. And special congratulations to you once again for getting registered as ex-Muslim of Kerala. Thank you so much. Thank you so Adam, much today. yeah, Adam, you want to add any point? You want to have a word with Jazar, then you can go ahead. Yeah, thank you so very much for this opportunity, Jazar. It's so nice to meet you. Please don't mind, but I'm gonna put you on a hot seat a little, okay? If you don't mind. Okay. All right. So what happens in Pakistan is that in Pakistan we had a group of Muslims who came up and he started debating with Christians. Now what happened was in the last 5 years they realized when they are debating
those Christians and those people are actually showing them things from their own scripture, which is destroying Islam from the root, from the core of it. And they stopped debating because Pakistan has the Islam which is not like the Indian Islam. Indian Islam is modified, it's changed, or at least they say it from their mouth differently what is written. But Pakistani Islam is very much Orthodox Islam, which was in the first 600 years, 700 years of Islam, rather 800 years, let me just say. So they have now stopped debating. Do you foresee the same kind of a thing happening in India, or do you think that they have put up an Islam 4.0, version 4.0 in India, and it's much easy to have a discussion, dialogue with them? At least in Kerala, things have been changing. Actually, in the past 2 years, things have been changing very quickly because Islamists or Islamic scholars, I mean, at least even just a day before yesterday, just 2 days back, Islamic scholars are not ready to debate with us. They do not want to discuss Islam in an open platform. They do not want to discuss Islam in a social media. They don't want to bring Islam into the limelight. I mean, it is because they learned that having doing debates on Islam is bringing more damage to Islam, and so they do not want to do it anymore. Instead, they want to debate us on atheistic philosophy, free thinking, humanist philosophies and moral ethics, philosophical stuff. That is what they want us to debate on. They do not want to discuss Islam at all. That is what the change has been Exactly. coming. That's what happened in Pakistan. That's exactly what I'm saying. That in the last 5 years, debating with Christians and trying to show that Christianity is wrong actually put a very reversal effect in Pakistan, that they are actually exposed, and now they are not even debating. They stopped debating on public platforms because it exposed Islam far more than it was exposed before. So they have stopped it. So you are saying the same thing has happened in Kerala already now? Yeah, that is what is happening now, because we are You finding it know, very hard to find people, Islamic scholars to debate on. Adam and Jazar, you know what you have rightly said, and we are seeing that. Adam, you know very well that most of the Muslims who are, we can tell that the clever Muslims, when they come to talk to us, they don't want to discuss Islam. They want to discuss Christianity, they want to discuss atheism, they want to discuss humanity, they want to discuss agnosticism, but they don't want to discuss Islam. Exactly. And You are it's very absolutely right. evident. And a person who is on mufti level, he has openly said in his life that we will not going to answer on Islam, we will question you on your belief. And that's a big problem because he's a mufti of Islam, not on agnosticism, not on atheism, not on any other Hinduism, right? He's a mufti of Islam. Like, if I need questions to be answered, should I go to a mufti of Islam or should I go to some agnostic atheist? That's how silly it is. I This mean, is this is how, yeah, this is how things should get normalized. I mean, no one is asking them to talk about Islam. If they stop, persecuting or boycotting ex-Muslims or other people, or spreading around lies and hatred, or all the kinds of stuff, and just limit the religion to their own personal lives, everything is going to be good and happy and peaceful. That is what we all want. yeah. So apart from what you have said, one more point that I would like to add is that instead of putting the Islamic supremacy on others, they should not try to do that. They want people, to be Muslim. That is the worst thing about Islam. They want everyone to follow Islam. Yeah, true. And the thing is that you can't. That is not entirely their fault. That is Islam's fault. That is a problem. Yeah. Exactly. So Now yeah, that brings me to my second question. Sorry, brother Sahil, and yeah, yeah. sorry, Please continue. sorry, I'm gonna put you in another hot seat, brother. I'm so sorry about that. But like this, these are very, very deep questions because when I left Islam,
I faced all of these questions and things as well before I went in live and I started doing what I'm doing. So one of your more motto of your organization is you can keep your religion. If you want to be Islam in Islam, say in Islam. If you want to be an ex-Muslim, be an ex-Muslim. If you want to be a Hindu, be a Hindu. If you want to be whatever, be whatever. Right? Yeah. Now the problem is multifold here. If you want to be a Muslim, then by default, Islamic scripture does not allow you to be an ex-Muslim and proclaim it openly. So how can you allow your organization say that we want you to be Muslim, yet we do not want you to persecute ex-Muslims or socially boycott ex-Muslims or throw the ex-Muslims out of that state or that country, or do what or not do what your prophet has asked you to do as a Muslim? Now that's a circular question, yes, but you see what I'm trying to say over here. Yeah, I get the question. The thing is, we are against, we can't say people, we can't force people to abandon their belief, but we would rather ask them to keep it within themselves, like not to impose it on others, keep it within their personal life. If personal life, it means, if a man or a woman wants to be a Muslim, or is a Muslim and wants to continue being a Muslim, ideally, I would say they should not impose it even on their own children, which is which may not happen. Most cases, children follow the religion of their parents or whatever the parents believe in. But if that happens, and if the child grows up and becomes an ex-Muslim, they should learn to accept that too. We are trying to moderate the Muslims, because we can't moderate Islamic beliefs or reform Islam. We can only reform Muslims. That is what we are trying to do. We Interesting. cannot Interesting. reform Islam. We cannot Interesting. reform Islam. That's a Yeah, very, because very, Islam. very, yeah, but that's a Because very, very Islam. good answer. But at the same time, brother, when you say we are trying to moderate Muslims, in reality, what you are saying is we are trying to moderate Islam. Because as long as these people are ignorant of their own scriptures, they are good Muslims. The day they become learned of their scriptures, the moderated part went off. It just went off. You know what I mean? Like certain people come Yeah, to me and they tell me, hey, you have your religion, I have mine. Like La ikraha fid din, Quran chapter number 2 verse number 256, right? But yeah, any Muslim mufti scholar knows that that ayah has been abrogated by Quran chapter number 5 verse number 33, by Quran chapter 9 verse number 29, and so on and so forth. Rather, Quran chapter number 9 verse number 5 and Quran chapter number 9 verse number 29, according to the Orthodox Muslim tafsir writers, has yeah, abrogated 276 ayahs of Quran itself. So as yeah. long as you are not a knowledgeable Muslim, you can remain a Muslim and you can be a very nice, moderate, humble human being. But the day you accept the true reality of the Islamic scripture, you can either have to follow it and become an extremist, or you have to leave Islam. You don't have a third choice. You know what I mean? Yeah, I get you. But as I said, like, if we start, if we have to force religion or force Islam out of Muslims, I mean, we are being just like them. And I don't think that's a good idea. Um, I think it would be better to reform Muslims. Um, I don't know what to say to that. I mean, See, that's why I uh, told you, brother. That's why I told you this is a very circular question. I told you I'm gonna put you on a hot seat. And yes, it's a very, very circular thing. So yes, I admire your courage, what you are doing, brother. And we have Abbas Agha. He is like that kind of a moderate Muslim in such a Makeup way that artist. he actually rejects all of his early scholars, like literally all of them. Okay, and he tries to present us an Islam which is not in the Orthodox Islam at all. Like for the first 800 years of Islam versus his Islam is altogether different. So if people will actually reject their early scholars and say them openly, like Abbas Agha does, okay, that Islam is livable.
Okay, but like that Islamic people has to come up and go to their own Muslim people and say this is the new Islam or accept this reality. Otherwise we have a big problem, brother. So what you are doing is good. I think you should connect with these kind of Muslims as well, who are new age Muslim with Islam version 5.0. I That's what I think you're say. I don't talking even about say 2.0. Quranists, right? No, he's not Quranist. He accepts hadiths as well, and he Okay. accepts Quran in a very Oh, different way. He is Ahle choice. So, so his tafsir of Quran is also very different than what is written in by the tafsir writers as well. So he's a very he's Islamist 5.0. Like there's Islam 1.0, the original version. There's Islam 2.0, which got changed after 600 years of Islam. Then there is Islam 3.0, which is created by after 800 900 years of Islam. Then there is an Islam 4.0, which was created in 18th and 19th century. And now there is an Islam 5.0, which is the fifth version of Islam that is right now present in this time by these certain people. So I think you should capture these certain people and Hmm. use them against the Muslimin. That's just an idea, Actually, suggestion. the Muslims I have, the normal Muslims, like the everyday Muslims that you come across, like as far as I know, they don't know much about Islam. They know only the good stuff about Islam, like which I knew. Like you should. It's more of a humanist idea, and they don't know what the real Islam is. Such Muslims are of no danger because they are no danger means. They have a sense of a belonging, a sense of cult, but that is what it is. Other than that, they won't go to any extreme. But the extremes are people who take Islam not just as a religion, but also politically, and something to their own selfish end. Those people are what we should really target and try to change if it is possible, or at least those people are ones which should be targeted, because the a Muslim who just reads Quran, the Arabic Quran, and does not know anything, the meaning of what is written in there, does not have any, does not pose a danger to anyone, because he does not know what is written there. He just knows that he's reading in something in Arabic, and that is going to get him a place So, in the paradise. Yeah. Yeah, with many versions. So yeah, Oh yeah. I absolutely true. Agree with you on that one, brother. But like we should be fighting against people like MD Huck, who came to our channel the other day, who wants to kill us and stab us and punch us and make us not talk. And there was another guy in our channel long time ago who wanted to sacrifice me like a goat on Eid al-Adha by tying my hands and feet and using a blunt knife. And other people like jihadist in Discord who came and said, I will personally behead you and stuff like that. So yeah, so we should be fighting. And Muhammad Ali, who came in and said, hey Sachwala ji, we are trying to find your location so that we could kill you, and he wants to kill every murtad, and he wants to tell to the Indian people, hey, these ex-Muslims are there, go and kill them, and etc etc. But yeah, You know in what? Like just now you said, that's when I remember that these people do not get these ideas by themselves. They are being planted there by people. Those people are the ones whom you should target. Actually, I think those extremist Islamic scholars who has a madrasa under their control, and they decide what they to teach there. Such institutions should be brought under government control. Not such institutions. I think almost any institution should be under government supervision and control. true that. True that. I, And then, I, I, I yeah, fully agree with you, and like fully 110%. And the madrasas should be closely watched, monitored. The madrasas teachers and their teaching should be recorded, and there should be a governance body who should see what they are teaching in there. And I could not agree with you more, man. Seriously speaking, bec- like, yeah, because just now, again, when you said the point, now I remember another thing. Last year, just few months back, there was a big issue because it was lockdown in India, right? So even madrasa classes were being conducted online. What happened was
a class 11 or 12, I don't remember, class 11, I guess. Uh, uh, the class was taken, and that Islamic class was on apostasy. And the online madrasa teacher, when he came to the topic of punishment for apostasy, he said that apostate should be killed, and he made a sign like this, like like keeping Yep, a saw to the neck, and that's what it just Muhammad said. Now it's in yeah, there's multiple yeah, ahadiths. Their yeah, head that should was be that. That's chopped true. off. Apostate should be killed. Yes, yes. Yeah. I think what I was saying was like these things, just because it was locked down, and these the education, even madrasa education, became online. People, very huge number, Recorded large that. number of people, yeah, recorded that and came to know about it, and that became issue. So there are madrasas even in Kerala. I'm talking about a madrasa in Kerala which was talking about apostasy and punishment for apostasy. So I can only imagine the madrasas in Pakistan and all other extremist countries. So But brother, madrasas should be the target. that's the biggest thing over here. So you are actually saying that madrasas should not teach what Islam is teaching. You see what you're saying? That's another circular issue over here. You are actually saying that madrasas should not teach what Islam is teaching. In Al Azhar University, where you actually become the grand muftis, in other university, if Yeah. anybody mufti wants to go to become a grand mufti, there is a book over there, Asnabul Iknaf, right, where they teach that an ex-Muslim, the hurmat of an ex-Muslim is literally nothing. And if you see a walking, talking murtad, right, his hurmat is nothing, and you feel like eating it, go cut him and eat it. Chop him, make a barbecue out of him, and eat him. I showed That that is Man. painful, yeah, I showed that in my live videos, the book, the chapters, the page numbers, and everything. Because Al Nawaira was captured by Khalid bin Walid, and he chopped off his head, put a tas, put water in it, boiled his head, ate it, and then had intercourse with his wife on the same day. So when you look at the Islamic scripture, and we are talking about Al Azhar University, where you become a grand mufti, without studying this. This is the fourth year teaching of Al Azhar University, where you get 236,000 foreigners becoming grand muftis every year. So we are talking about that university. We are not talking about an Indian university or a Pakistani university. So in reality, what we are saying is that in India, the muftis should not teach what is written in the Islamic scripture, but rather they should teach humanity and morality in reality. and that is the same question which Sweetie ji is asking. But if Quran is teaching beheading people, how would keeping madrasa under control would help? If the Yeah, teachings are wrong, then what other things will madrasa teach? Little bit confused here. And same thing, on the same line, Kushal Galod is asking the same thing. If we take away the objectionable stuff out of Islam, what is left? Can it even be called Islam? yeah, because like if you even see Quran chapter number 9, Surah Toba, ayat number 5, it says, when these specific months are gone, kill the polytheist, mushrikeen, and all the Hindus and the Christians are mushrik according to Islamic scriptures. Wherever you find them, capture them and besiege them, sit and wait for them in every place of ambush. Now, this is Quran. And by the way, there was a guy in India who said we should remove 28 verses from the Quran, which are actually very, very bad. Wasim We Rizvi. Wasim Rizvi, we should focus on that. We should remove these verses from the Quran. Okay, there is a Actually, that specific question for Jazar. yeah. Why people from Kerala going to ISIS as compared to rest of India? Can you throw some light on this, Jazar? Since you are from I Kerala. would, I would completely accuse the Mujahid or the Salafi, the Salafi line of thinking or the Salafists on this matter, because in Kerala, the one of the Salafi leaders is a MM Akbar. He's a Salafi Islamic scholar, and it is I think 4 or 5 people in his institution, which apparently, very ironically, has the name
I mean, he has a school, and the school's name is Peace School. Peace means, the peace, and that is very ironic. I mean, I don't know how it can be peaceful. By There the way, is no brother, peaceful. MM Akbar is the Yeah. same guy who actually said in front of his people that I'm very old, I can't get a nice little Muslim girl, but you should go and get a nice educated Muslim girl, marry her, sorry, non-Muslim girl, marry her and convert her to Islam, and then get her wealth and her kids and her family, something to the similar lines in Kerala, in the Keralian language. And I have I shown that wouldn't I have shown watch his that. interview live in the Kerala Uh, language, and I got a Kerala language knower to translate hmm. it live on my channel. Like it is a recorded line. I can send it to you so that you could show it to the people as well. MM Akbar. Oh yeah, please do then. I would love to show that to people. And it was through his institution, like 4 or 5 people went to the ISIS. And it is because the Salafist ideology is a very extreme ideology. If you look at the history of Salafi Islam, the Wahhabism, it's very violent. It even killed the Sunni Islamic scholars in Saudi Arabia. And that was how Wahhabism came to prominence in Saudi Arabia. I mean, you have even the present, until now, the Wahhabis are the ones controlling everything, the religious side and everything in Saudi Arabia, as they have the violent side. And I wouldn't be surprised if the selfish became terrorists and they went to ISIS to fight. Um, I mean, even there is I'm not. Maybe you might have heard of this Islamic scholar, Mujahid Balusheri. He was there in the national media. He was a one. He's a very extremist. He said he has made very controversial remarks, like giving money to, like when people when Hindus come to you for any their religious festival or something like that, to contribute money to their cause. It is, if you give money to their cause, it is equal to contributing to the setting up of a prostitution house. He also said that if the Salafis are granted, the Juma khutbas in every Islamic, in every mosque in Kerala, the Salafis can convert Kerala into an Islamic country within 10 years. I mean, the guy's, he's a real extremist. And so the Salafists, um, they follow very Puritan Islam. They're not like the Sunnis, and they don't. This is an ultra Puritan Islam, actually. And if it is no wonder that it is actually from their organization, from their people, from the Salafis, that people are going to ISIS. It is because of their ideology. That is what I've got to say on that. Okay, so let's move to the Hello, hello, Sahil. I can't hear you. Yeah, I think Sahil is down. His internet is down. Maybe he'll rejoin in a little later. But okay, Sahil is daif right now. Brother, Oh my god. No, you're not. brother Sahil, you are daif. I was Oh, how do we tell them that we can't hear him? Yeah, brother Sahil, you might need Am I to. still not audible? Now you are audible. Yeah, now you're audible. Oh, thank you. Did you go off? Are you sure I'm audible now? Now Yeah, you now are, you're brother. audible. Okay, thank you. So what I was telling, if anyone has to ask any question to Jazar Mohammed, you can ask through super chat or super sticker. And meanwhile, what we will do is we'll take the super chats, those who have sent before also.
Anyone has a new question for him can send to super chat. I'll just share this screen. What questions we have for Jazar? Okay, so what I'll do, I'll share the screen. Adam, is the screen visible? Not yet, brother. Now it is. Okay. So if we have any new super chat, just let me know, Adam, so that I can take it from here. Uh, सो ग्रीन पीस ग्रीन पीस ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रीन पीस जी। कुशाल गहलोत जी का क्वेश्चन ले लिया था एंड थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। निशांत जोशी कह रहे थे एडम ब्रो पॉइंटेड क्वेश्चन, नो गुड बैड तालिबान। अनिल कुमार जी कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस एंड यूनिटी इज इंपॉर्टेंट, स्टडी योर सराउंडिंग बिफोर गोइंग पब्लिक, ओनली स्मार्टनेस कैन विन ओवर कट्टरपंथी, सी एडम हाउ स्मार्टली ही इज पब्लिक। बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस एंड यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी योर सराउंडिंग, अदरवाइज आप रहोगे ही नहीं अपनी दावत पेश करने के लिए। इंडियन एग्नोस्टिक का क्वेश्चन हमने ले लिया था, कैन यू ब्रिंग आरिफ हुसैन थेरुवत इन दिस चैनल? Yeah, sure. Yeah, Joseph, sure. I will. I'll yeah, speak to all my yeah, I'll speak to all my comrades in the organization, and I'll try to bring them. I'll ask them. yeah, please. Okay. हैरिस पाल्मर ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है। साहिल ब्रो प्लीज ब्रिंग एडम, जैसे ही आपने भेजा एडम की एंट्री हो गई थी, तो इट्स अ कोइंसिडेंस। हारिस हैरिस शर्मा जो है, इन्होंने ₹100 का कंट्रीब्यूशन किया है। जजर मोहम्मद, ब्रदर यू आर ट्राइंग टू बी बियॉन्ड ब्रेव, प्लीज डोंट रिवील योर आइडेंटिटी। I think there is nothing left, if you have already shown your face, जब आपने already अपना चेहरा दिखा दिया है, तो और क्या आइडेंटिटी रिवील करोगे? I have nothing Right? left to reveal now. But thank you for Right. the concern. Thank you. Yeah. So आलोक शर्मा जी ने ₹19 का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ₹20 का भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लू हार्ट कह रहे हैं Sahil, Sahil is gone Adam, can you again. hear me? Oh, Yeah, okay, I can okay, hear okay. you. It's Sahil. I'm gone again. Now you're back. Yeah, now you're back. Okay, good. So Blue Heart is telling, "Hi Sahil. Basically, I'm a Dalit from India. Due to discrimination among Hindus and my Muslim friend wanted to become Muslim. Thanks to internet and ex-Muslims. चलिए ब्लू हार्ट जी, आप बच गए इस्लाम की झंझाल में जाने के लिए, and it's a message for Hindus also that people like him is complaining that there is a discrimination, so you need to work on this। योगेश सहाने जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैन इस्लाम, इज इट पॉसिबल एडम एंड जजर? I didn't hear you. You were cut off again. कैन इस्लाम को एग्जिस्ट पीसफुली विद अदर फेथ्स? इज इट पॉसिबल? Islam cannot, but Muslims can try to. And that is एडम, a That's a व्हाट good इज योर answer. व्यू? Yeah, that's a good answer. Islam cannot. So if you are true to your religion, you cannot. But if you are not true to your religion and you moderate yourself and you accept humanity, then you can. So basically, Islam cannot live with other faiths. Muslims can. Absolutely right. राइट। मिसम्बो ने ₹100 का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर ऑर्गेनाइजेशन बीइंग गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव जिहाद? सी, जो सेकंड पार्ट था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एंड सिंस इट कम्स इन पॉलिटिकल इस्लाम, आई am not comfortable discussing here, but we have already discussed this. Adam has also presented this, so you can watch that stream which is available on my channel. But thank you for congratulating Jazar on the the to the organization that they have come up with. uh,
तो लव फॉर मुस्लिम जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड जीसस ब्लेस यू मोर माय ब्रदर साहिल लाला जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर जजर। साहिल भाई आज तो संडे को हलवा पूरी खिला दिया आपने। हलवा पूरी मिल गई है। लाला जी काफिर तुसी क्रिश जी ग्रेट ने हो। ग्रेट है, कोई शक नहीं। काफिर क्रिश जी ने ₹100 का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं दी वर्ड मेहर एंड उजरा, इट्स अरेबिक और व्हाट? मेहर is mentioned in translations, but in Quran ujra is mentioned, which can be called as mazduri. Adam, Yes, yes? sir. It is the money you give for to your girl so that you could have sex with her in the bedroom. I think I'm pretty clear on that. साहिल भाई की आवाज चली गई एक बार फिर। Yeah. Can Sahil? Yep, साहिल is gone once again. काफिर कृष जी ने उनको म्यूट कर दिया है। काफिर कृष जी का अगला चैट था। काफिर कृष जी ऐसे ऐसे why do you ask such deep questions that Sahil bhai is not able to stay live with us? Kafi Krish ji, you don't do that next time, please. Don't send these Am I kind of audible now? difficult questions. Am I audible now? Yes, sir. Yeah. Okay. So, Kafir Krish, and the question, I think I want Answered. answer from Adam. It's answered. Adam, It's आपसे answered. आंसर चाहिए। So it's already answered. Next. अच्छा, आप this मेहर नहीं। और उजरा पे आपने दे दिया आंसर। जी सर, जी सर। Okay, let's move to the next question. Ravi A कह रहे हैं Sahil, you need to do more of your streaming on Banu Qurayza if that's what made people to turn off from Islam. बिल्कुल हम एक स्ट्रीम, एक स्पेसिफिक स्ट्रीम बनु कुरैजा पे भी रख देंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक द वे इट वाज डन, जिस तरीके से वो किया गया, सजा दी गई और औरतों को स्लेव्स बनाया गया, उसके बाद उनको बेचा गया, इसको कोई डिफेंड कर सकता है तो वी विल डेफिनेटली डू दैट। गौरव यादव कह रहे हैं व्हाट अबाउट काव थीव्स एट्रोसिटी सर, एनी डेटा? अब ये सवाल मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में आर यू टॉकिंग अबाउट specific thing in Kerala? I don't have any idea, गौरव यादव जी। अलीफ लाम मीम कह रहे हैं साहिल भाई फ्राइडे के स्ट्रीम में जो यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान नाम से आपको एडम भाई को गाली दे रहे थे, वो सेम अभी वो आजाद ग्राउंड पे है। यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान जो है एक एक्चुअल आईडी है जिसमें यूनिवर्सल ब्यूटी जी आते हैं, तो वो तो कोई गाली गलौज नहीं करते हैं, तो आई थिंक कि जो कमेंट में कर रहा है वो हो सकता है कि फेक यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान हो। सचवाला जी पार्ट 2 ने £2 का कंट्रीब्यूशन किया था, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी लोगों अल्लाह का आजाब आ गया है, सुधर जाओ। और मेरा इंटरनेट जो बार बार हो रहा है वो भी एक आजाब हो सकता है अल्लाह की तरफ से। निखिल जी कह रहे हैं नमस्ते साहिल भाई, यू आर डूइंग अ स्प्लेंडेड जॉब एंड विल बी रिमेम्बर्ड बाय कमिंग जनरेशंस हु विल बी मोर एनालिटिकल। बहुत बहुत शुक्रिया। सचवाला जी पार्ट 2 ने €2 का कंट्रीब्यूशन किया है। सब भाई लोगों को नमस्ते, सर आपको भी नमस्ते। इंडियन एग्नोस्टिक कह रहे थे डियर जजर ब्रो, डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट्स विद आरिफ हुसैन and Abdul Khader Putiangadi? Can you help bringing them Pudiyangadi. in? Yeah, he has Abdul already Qadir answered that. Pudiyangadi. Yeah, he'll speak to the fellow members and he'll ask them to join us. काफिर किस कह रहे हैं it's our pleasure that Jazar you are here to share your experiences and also I'm really Sahil, excited. Yeah, Sahil, Jazar. I have Indian agnostic asked about Abdul Qadir Pudiyangadi. Abdul Qadir Pudiyangadi is currently in a jail in Dubai for blasphemy. Oh, He was trapped by Kerala Muslims in Dubai. oh, so he's still in jail? Yeah, he was. He got a verdict of 3 years and 5 lakh dirhams of punishment. Oh, that is too much. 5 So lakh dirham basically, कहाँ से? Yeah. so basically, he said something in Kerala. He went to Dubai. He was in Dubai, but he made his speeches in. He was talking in Malayalam. There was no way the Arabs could understand it. And again, he was not criticizing Islam. He was reading from Quran actually, Quran and Hadith, and that was enough to get the Muslims instigated because they think he was making these things up.
So imagine that, brother. This is what true Islam is. So you can't even read their own scriptures because it shows that there's blasphemy in them, and if you read them, you will put to jail. Yeah, dude, that's Islam. That is That's the Islam in beauty of reality. Islam. Yeah. And these So Kerala Muslims there, they translated his Malayalam speeches into Arabic and pressurized the Dubai police to take a case on him. Just imagine the level of the cruelty that you're doing. He has a wife and child, and you know, and they are in Kerala and they are helpless. They can't do anything, brother, and So he is. is he not having is he not getting any political support so that they can work with the Dubai, they can speak to the Dubai government and get him out of the jail? what kind of Uh, political support do you think India can give him? India doesn't yeah, have it's power over already. I Dubai. mean, especially it's already been. He's already started his punishment, and I don't think it will work out anymore. Though we can try to bring, like we are contacting international organizations like Amnesty International and all, try to bring down his confinement. Sentence. Yeah, so his sentence so that he can come out earlier. But one sentenced is sentenced. But the thing that is really sad is like your own people of your native place has betrayed you. No, but like Oh, they did ho, not ho. betray him, brother. Listen. This No, is this is like your yeah, your view. Look at it the other way around. According to them, he betrayed them by Islam. leaving Islam, yeah, and now he true, is showing the issues of Islam. That's Islam. By yeah, Islam true. by itself is a nation. You realize when you look at Islamic scriptures, Islam by itself is a nation. Islam has no boundaries. Islam is nation. Yeah, India is not nation according to Islam. Islam by no, itself is nation. So that's one yeah, nation, Islam. yeah. That's where the concept of Islam, the Muslim Ummah comes in. Exactly. And that is why, brother, when you look at it, did you ever see a true Muslim in India saying, I'll die for India? You won't find any true Muslim saying that. Yeah, He we will not have die for Muslims India. selling that, but he cannot be a true Muslim. Yeah. A true Muslim who knows the scriptures, he will never say, I'll die for India. Because that nation is not his nation. He belongs to the nation of Islam. But Right. anyhow, that's Islam. It's very sad. It's very sad actually. Indian agnostic कह रहे हैं Jazar bro, please work on ex-Muslim movement in entire South India. Also, let us know how can we help you ensuring your voice reaches every Muslim house. So it's a message from Indian agnostic Jazar. Yeah, sure. We are already set up coalition with Muslims of Tamil Nadu, and we're trying to because it will take time, and as we come north, things are getting difficult. But we'll try to support you people and all of us who need help in the whatever way we can. Right. So गौरव कुमार ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत नहीं, ये पिछली स्ट्रीम से था. आई थिंक वी हैव टेकन ऑल दी सुपर चैट्स फॉर टुडेज स्ट्रीम. आई वुड लाइक टू, अच्छा, निशांत जोशी जी ने ₹40 का कंट्रीब्यूशन किया है, टेलिंग एडम यू स्टोल माय लव बाय योर प्रिसाइज कमेंट्स. लव, निशांत, comment is for you, Adam. I think he joined Thank us you. yesterday. Nishant Joshi. Thank you, Nishan Joshi ji. Thank you so very much. Yeah, Srinivas is telling Islam is a communism with God. Okay, so Jazar, it's really a pleasure for us, to have you on our show, and thank you for sharing so much of information with regards to Islam and Kerala, Islam in Kerala and ex-Muslim movement in Kerala. Vishal Singh is telling if reading out Quran in Malayalam is blasphemy, why not in Urdu? How illogical, irony, and ridiculous at the same time. You're true, Vishal Singh. It's not just about reading Quran and Hadith. It's about reading in a way.
that they seem, for them it seems like it's a blasphemy. So you need to keep that in mind. Reading Quran and a Hadith in a way, you are reading the same thing which is written in the Hadith, but the way in which you are presenting that, maybe for them that is a blasphemy. Am I right, Adam and Jazar? Yeah, the tone of your voice is Exactly. very, very important. And secondly, brother, if you read the Sharia of any, a non-Muslim cannot even read Quran or the Tafsir to show what it is. That's Sharia. Imam Shafi and Imam Malik, they were very, very clear on that. And by the way, you wanna watch a small clip of Shafiq Saab or not? Or should I send you an email, Jazal? Can you send me my email? Okay. So, please, Sahil, do you have his email? Yeah. No, Okay. I'm connected with him on Insta, but I'll take his email ID and I'll share it with you. And if it is a short video, then you can play it now also, so that Okay. everyone else can also see that. Meanwhile, Parvat Kaur ने $5 का contribution किया, बहुत बहुत शुक्रिया. Jazar, if possible, please translate Sachwala work in Malayalam. So, Jazar, let me tell you, Sachwala is also an ex-Muslim. He's connected with us. He has his own channel. He has come to this channel and he comes to our channel and he is doing a very wonderful job. And, he speaks on Quran. So possibly what you can do, I'll share the link of his channel. Uh, Okay. but problem, Parvat Kaur, is that for Jazar, Hindi is not his first language. And, though he can understand Hindi, but I don't think, uh, since Sachwala is more on the Urdu language, the most of the words that he use is Urdu. But any which ways, Jazar, I'll share the link of his channel. If you people can translate his video in Malayalam and do the dubbing and upload it, in this way also we can spread the knowledge to other people, from the South Indian belt. Yeah, definitely, definitely. Please, and I'll see what I can do. Yeah, and he's doing a fantastic job, Sachwala ji. I'll share the link with you. Yes, Adam, wo Okay. share karo aap. Yes, it's shared, brother. You can play it. It's a 1 minute video in Malayalam language, and then after the Great. video is അല്ല finished, ഏതായാലും our വലിയ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയൊന്നുമല്ല. ഒരു അച്ചായത്തി പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുക കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. കാരണം ഈ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദുക്കളിൽ എടുത്താൽ ഈസി ഗെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചായത്തി പിള്ളേരാണ്. അപ്പൊ വളരെ അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെയൊക്കെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ ഇപ്പൊ പ്രേമിച്ചേനെ. പക്ഷെ എന്റെ സമയം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പ്രേമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഗുരു ഇട്ട തന്നെ റൂമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പബ്ലിക്കായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനത് എന്റെ പ്രേമമൊക്കെ ഇവിടെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മുസ്ലിം യുവാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്റെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ, എന്റെ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ ഖത്തറിലുള്ളവനും പിന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരത്തി അച്ചായത്തി തന്നെയാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അവള് എം എസ് UK നിന്ന് MS കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബയോടെക്നോളജിയിൽ MS കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ തന്നെയാണ് അവനും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ 25,000 ദിർഹംസ് ശമ്പളവും മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശമ്പളവും അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വീഴുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ഏതായാലും നല്ല രീതിയിലാണ് വെളിയിലിറങ്ങുന്നത്. കാരണം നല്ല ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ്, അവർ നല്ല കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി ബൈക്കിലും കാറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ വെളിയിറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവരെ കണ്ടാലും ഒന്ന് പ്രേമിക്കാൻ തോന്നും. അത്യാവശ്യം ഗ്ലാമറുള്ള പിള്ളേരാണ് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ. Gee, brother, So, I have no Jazar, idea. Jazar, first question Yeah. is why there is a smile on your face, and tell us, the viewers, who is this guy and what is he telling? Why you are smiling? No, I was smiling because I mean, where he spoke, it was on Clubhouse, and it was a public platform, and he had the nerve to talk like this in a public platform, and like, I mean, I was actually, that smile was out of disgust. I mean, I don't know how to respond to What all is he these telling? people. What is He's telling? telling that Muslim boys, Muslim youth, I mean, especially the boys are very handsome and very well dressed, and they should target, or they should go after Christian girls, and they should target Christian girls. They should marry Christian girls, and so that um, and that is how you can, one of the ways of spreading your message, or that is how you can. That's a general Bring them idea. to It's Islam? kind of. Bring them to Islam?
Possibly that too. That is how you can take over, other religions. That's a way of taking over. I mean, these. I know this guy. I've talked to him in Clubhouse. People like this are, these people are a danger to other Muslims too. Other Muslims meaning other moderate Muslims or people, other Muslims who have no interest in all these matters. These people are a danger to them too, because people like this Shafiq, they set a very bad example. Not a bad example, it's actually some kind of it's like terrorism. You would go to any length to spread your religion, and that is damaging to the society when you take as a whole. Is And he a that scholar? is no, he's he's not a scholar. He's Islamist who talks in Clubhouse on the Islamic side. He's not So a which scholar. sect he belongs to? I He's a don't know that. Salafi. I just I, I think he's Salafist. He's one of the he's one of the movement Salafist movement guy. The That's it what would reason, be I. Adam, yeah. the reason I'm asking is because I cannot see beard on his face. I can see the mustache. But But like, mostly people who talk like this, spreading religion and doing such stuff, they're mostly Salafis or Jamaat Islami. Sunnis are not bothered about these kind of thing. Most or majority of Sunnis are not bothered. They just go on with their lives as like or that's what I see in Kerala. But the Salafis and the Jamaat Islamis, they're not like that. They are very outspoken. They're very violent. They want an Islamic state. That is what they want. exactly. Sorry, Sahil bhai, but this is the reality of Islam. Reality. Yeah. राइट ओके लव फॉर मुस्लिम जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं साहिल भाई एक सवाल आपसे है अल्लाह का आजाब एडम लाला जी पर आना था पर उल्टा हो गया है ये तो मोमिनों के लिए आजाब बन गया है प्लीज कंटिन्यू सर Okay. So once again, I would like to thank Jazar for accepting the invitation, coming to this channel, sharing your views. We are really proud of you and your organization. That though you know the consequences, but still you are uh, so much. What do you say? You have so much guts that you're coming live with your face, being in a state where you have lots of Muslims. I want to congratulate you once again and thanks for coming, Jazar. Thank you so much. Thank you so much. It was it was a great opportunity. It was a great pleasure talking to Sahil, and when Adam joined, that again, it was very fun. And just because I show my face and we speak about it, or me or my ex-Muslims in Kerala show their face and talk about it publicly, doesn't mean the work you people are doing is any less, because it is because we have a privilege and we have a a better societal chances or opportunities. You people are doing in danger, even and so that is nothing to be something to be seen as less important, or not as important as our work. I think it would be much. I would say your work is much more important, because being in North India, or being in a places where the extent or the power of religions is too much. It's it is a daring task to talk like this. So Sahil, you're doing a very good job. Adam, you too, and you should be proud of yourselves too. And I'm sure that we can make a difference. We'll try all that we can from this end. You can also try from your end, and we will make it, I'm sure. Amen to that, Thank brother. you, Jazar. Thank you, Jazar. Uh, this is Sachwalaji's channel. If anyone has not subscribed to his channel, please do subscribe. And Sweetie J is telling guys, please don't forget to comment. Thank you for your love and support. See what we'll do, since so many people have requested, and since Adam is also here, and yeah, so Chulbul Pandey has shared a link of Adam's channel as well. So all viewers are requested to please
subscribe Adam's channel as well. So what we will do, since Adam is here, Adam है, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं. I'll share the link and it's strictly for Muslims. सिर्फ और सिर्फ मोमिन भाइयों के लिए है. अगर वो आते हैं तो एडम से बात कर सकते हैं कोई भी टॉपिक पर, और इस्लामिक टॉपिक पर ऑब्वियसली. और In the अगर meantime, वो while you do that, या brother, Jazam, you can subscribe to my English channel, which is just Adam Seeker. The same link that you can see on the screen. Okay. If you remove Okay. Urdu out of it, Urdu is my Hindi/Urdu channel. Okay. If you remove Urdu out of it, Adam Seeker is my English channel. Subscribe Okay. there and please contact me. Sahil Yeah. Sure. will Sure. get Sahil, give Sahil his email. I will get you Yeah. to my English channel where mostly I have people from UK and America and all the rest of the part of the world, the western part of the world. I would like Yeah. you to invite there as well to show what Yeah. you are Sure. doing Sure. in Kerala and all, and it will be a Yeah. great Sure. stream. And I'll bring in a couple of other Keralian ex-Muslims as well. So Yeah. maybe you Sure. guys can have a bit of a discussion and you guys can focus on this movement together, and maybe some other people will help you from Yeah. Sure. the other side. Yeah. Sure. I'll try. I'll talk to my, the other people in my organization, and we'll make a plan about it. Yeah. Sure. Amen, brother. Thank you. Right. So, Jazar, in case the if you want to take a leave, it's up to you. But in case if you want to be in stream and see, how our Muslim brothers come and talk, uh, it's up to you, because we have already completed 3 hours. In case if you want to be, and we will, love that you remain in this stream. But I keep it on you. If you want to take a leave, it's up to you. And if you want to stay, you can stay. I have already shared the link. If any Momin callers want to join, कोई मोमिन हमारा भाई अगर जुड़ना चाहता है और बात करना चाहता है इस्लाम पर, और इस्लाम की हक्कानियत को साबित करना चाहता है, तो मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर किया है. अ, आप लोग जुड़ सकते हैं, और हम इसको शॉर्ट रखेंगे, मे बी मैक्सिमम 45 मिनट्स. 45 मिनट्स का मौका है आप लोगों के पास. आप लोग जुड़कर इस्लाम की हक्कानियत बयान कर सकते हैं. ये लीजिए, फिर से मैंने स्क्रीन शेयर किया है. सिर्फ आप लोग एक बात गौर करिए कि आप लोग जब आते हो तो अपनी बात दलील की रोशनी में रखें. हाइपर ना हो, दलील की रोशनी में अपनी बात रखें. We'll wait for some Sahil. time. Yeah, yes, Jazar. Yes. It's already 1:15 and it's getting late for me. No Because issues. because I told you right earlier, my exams are coming up in 2 months' time, so I need to get up and study and things like that. Sure, bro. Best of luck Yeah. for your exams. Yeah. Thank you so much. It And was once again, wonderful thank you. talking. Yeah, it was Yeah. wonderful talking. We will We'll, like to have many such streams with you and your team. yeah, sure, definitely. Uh, Anyway, we'll definitely keep in contact. Yeah. I'll send my email, which you can forward to Adam, and Yeah, sure. I'll do that. yeah, sure. Once again, thanks Yeah, a lot, Jazar. Please yeah, thanks. please take care of yourself, and Yeah, on your safety is very important. yes, yeah, I understand. Thank you, Thank Jazal. you. Yeah, thank you, Take Adam. care. Bye. Good night, Bye. or should Good I say night. good morning? Yeah. Okay. Bye. Anyway, Thank you, anyway, Jazar. you guys take care. Yeah, sure. Yeah, sure. Okay. ओके, सो दैट वाज जजर थे वो. उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को जजर की बातें अच्छी लगी होगी. और देखिए, सी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किसी का कोई अलग है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस, हमारे लिए ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो इस्लाम से बाहर निकले हैं, और इतनी हिम्मत है उनमें, इतना करेज है उनमें कि वो फेस के साथ अपनी बात रख रहे हैं, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर किया है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई नो, उनके कुछ थॉट्स जो है आप लोग अग्री नहीं कर रहे होंगे, मैच नहीं खा रहे होंगे. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन गाइस. कम ऑन.
इतना तो स्पेस रखो यार कि एक इंसान का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किसी और जगह हो सकता है, आपका और मेरा जो थॉट्स है नॉट नेसेसरी के सेम हो, कम ऑन द कॉमन ग्राउंड्स। एंड आई एम रियली हैप्पी, बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है जो इस तरीके से बात कर रहा है, खुलकर। एडम, क्या बोलते हो इस पर? सर मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ कि इंडिया जैसी कंट्री में इतने ओपनली आके इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया, एंड ही हैज अ करेज मैन, सीरियसली स्पीकिंग, he has guts, he has हाँ, courage, because in reality अगर देखा जाए तो he has a social boycott for sure from all the rest of the his families and extended family. He should have a full social boycott from all of them, और and एडम that's how it is. इतना तो स्पेस होना चाहिए यार, मतलब लेट्स अग्री टू डिसअग्री यार, कम ऑन। पॉलिटिकल बिलीफ एंड योर आई योर थॉट्स अबाउट रिलीजन, इतना तो स्पेस होना चाहिए यार। इफ समवन इज बेशक, अगेंस्ट योर रिलीजन, ये मतलब थोड़ी ना उसको गाली देना शुरू कर दे। exactly, exactly. भाई अगर हमारी आपस में सबका माइंडसेट एक हो जाए तो फिर हम ह्यूमंस ही नहीं है. You see राइट। what I'm saying? We are not even humans. If each and every one of us will believe in the same thing, then we are not even humans. The basic fact of being human is कि हर किसी के पास अपना दिमाग है और वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए जिस चीज को एक्सेप्ट करना चाहे कर ले. That's what humanism is. और मुझे इसी वजह से चंद एक लोग, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा, वो बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि इवन दो कि वो एक्स मुस्लिम्स हैं, लेकिन अब वो अपनी जिस चीज के ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो कहते हैं नहीं इसके अलावा बाकी सब गलत है. नाउ दैट्स अनदर हाँ, प्रॉब्लम. बहुत डेंजर है। या दैट इज वेरी डेंजरस। That is dangerous. That's dangerous in itself because now you are creating another extremism of your own mental understanding of whatever you believe in. Now that's another problem in itself. राइट। अच्छा, वी हैव यार, ये इंग्लिश में स्ट्रीम करके जब से मेरे मुंह से इंग्लिश ही निकल रही है यार एडम। सर आप अंग्रेजी दान हो गए हैं सर. ओह, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आसिफ अली साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। ये तो आईएस का परचम लेके चल रहे हैं. उनकी डीपी तो बड़ी खतरनाक किस्म की है. देखते हैं उनको कहना क्या है। आसिफ अली साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। जी, कहाँ से हैं जनाब आसिफ अली साहब? पाकिस्तानी आवाज लग रही है आपकी, यानी पाकिस्तानी जी मैं एक्सेंट लग पाकिस्तानी रहा हूँ। है। जी ओहो जी हो। जी, क्या कहेंगे? जी मैंने प्राइवेट चैट पे एक मतलब क्रिश्चियनों का एक वर्स देखा है, आदम को, मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकता है? ये आसिफ अली साहब, असल में ये जो हमारा जो चैनल है, ये इस्लाम स्पेसिफिक है, तो आप गलत जगह पर ये पेश कर रहे हैं। एडम का खुद का चैनल है, एडम सीकर नाम से, एडम सीकर इंग्लिश है, उर्दू है, वहां पर आप उनसे ये चीज का एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। जी तो मतलब मैं मुसलमान हूँ, तो कोई मुझसे मतलब डिबेट करेगा तो वो एथियस्ट होगा या क्रिश्चियन, तो मैं उस पर भी बात करूंगा ना, मैं हाँ, डिफेंड तो कर नहीं सकते करूंगा हैं ना आप खुद को। आसिफ अली जी साहब, आप कर सकते हैं, लेकिन जी जी उनके प्लेटफॉर्म पर ना, एडम के प्लेटफॉर्म पर आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे क्रिश्चियनिटी पे भी बात करना है, वो उनके प्लेटफॉर्म पे। अब आप लेकिन आए आसिफ हैं। साहब, लेकिन एक बात यहाँ पे है, अभी जब आप आई गए हैं यहाँ पे, इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप अपने दीन को डिफेंड नहीं कर सकते किसी भी सूरत में जब तक कि आप दूसरों के ऊपर कीचड़ ना उछालें. इज दैट द रियलिटी? क्या ये जी आपकी सच्चाई है? ये यही बात, जी यही बात मैं आपको भी कहना चाहूंगा, तो आप क्या हम्म. बोलना चाहोगे इस पे? मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ इस पे. मेरा दीन कहीं पे नहीं कहता, किसी के भी का भी, साहिल का भी, मेरा भी, किसी का ये नहीं कहता कि जो कोई आपके दीन के खिलाफ खड़ा है उसको जाके कत्ल कर दो. नंबर एक. नंबर दूसरी बात, मेरा दीन ये नहीं कहता कि अगर मैं एक्स हो जाऊं तो मुझे कत्ल कर देना चाहिए. लेकिन मोहम्मद साहब ने क्लियरली कहा, मन बदल दीन हूँ फअक्तुलू, जो कोई अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो. तो
हाँ ये आपके मैंने में पढ़ा, ये और हम हदीसों में। में, आप में और हम में ये बेसिक फर्क है। आपकी इवन जो डीपी है वो भी यही दिखा रही है कि आप तलवारें और बंदूकें लेके निकले हुए हैं। आपने ये डिस्प्ले पिक्चर ये वाली क्यों लगाई हुई है? जी, तो आप ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हो? नहीं सर, वो मेरे लिए एब्रोगेटेड है। मतलब आप अब ये कह सकते वो हो कि मोसेस एब्रोगेटेड है झूठा है? सर। नहीं, जी जी। आप सर एक सेकेंड, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन का कुरान में पता है कि किसे कहते हैं एब्रोगेशन? आपको किसने बोला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन नहीं होती? नहीं मतलब आप नहीं मतलब नहीं नहीं सर, मानते हो एक तो आप सेकेंड, जलेबी मोसेस नहीं, को। एक सेकेंड, जलेबी नहीं सर, जलेबी नहीं। मैंने बोला वो एब्रोगेटेड है। आपसे मैंने पूछा कि कुरान में कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन है कि नहीं है। क्या कुरान झूठा है? अगर कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन कुरान में है तो क्या कुरान झूठा है? नहीं नहीं झूठा है मतलब। झूठा नहीं है ना? तो मैंने आपसे बोला है कि वो एब्रोगेटेड है, नासिख व मनसूख हो गया हुआ है। आप मुझे ये बताएं, कुरान में नासिख व मनसूख है? कुरान कहता है कि जब तुम शराब नशे की हालत में हो तो नमाज के पास ना जाओ, और फिर बाद में ये कह दिया गया कि हर नशावर चीज हराम है। आप किस वली को मानेंगे आयत को? जी, अगर कोई मतलब शराब पीता है, मुसलमान क्यों नहीं पीते हैं? मतलब गलती में भी मैंने पीते ये हैं, बात नहीं वैसे भी पूछी पीते सर। हैं। सर देखें, जलेबी नहीं सर, मेरे प्यारे भाई, सर जलेबी वाली बात ना किया करें मेरे साथ। ये क्या एब्रोगेटेड वर्सेस हैं कुरान में कि नहीं? नहीं, जलेबी बात मैं नहीं कर रहा, मैंने आपके मतलब चैट पे सर एक मैंने वो देखा है, सिंपल सा आप सवाल उसका किया जवाब है, नहीं दे उसका रहे हो। हाँ या ना तो देना, उसका हाँ या ना नहीं, जवाब तो आप देना। उसका जवाब नहीं क्या दे रहे हो मेरे पहले कॉन्सेप्ट सवाल का। ऑफ, हाँ, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ नहीं एब्रोगेशन नहीं, कुरान के अंदर मैं है? आप मैंने जवाब दे दिया है, मैंने जवाब दे दिया है। नहीं वो पुराना मैं आपके अहदनामा है, वो एब्रोगेटेड है। आपने बाइबल पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना? मेरे चैनल जी पे आइएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मुझे ये बताइए, कुरान मैं में आपके चैनल पे कॉन्सेप्ट आऊंगा, ऑफ ठीक है? एब्रोगेशन है कि नहीं है? आसिफ साहब, कुरान मैं में आपके कॉन्सेप्ट चैनल ऑफ पे बात होगी एब्रोगेशन, फिर, ठीक है? जी जी करिएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे बताएं, कुरान में आप कुरान को डिफेंड नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ कुरान पे में बात नहीं हो कॉन्सेप्ट, सकती। कुरान में कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब? और भाग गए साहिल साहब, 2 मिनट में भाग गए यार। क्या यार वो साहिल चले गए यार, आसिफ अली साहब? भाग गया यार, भाग गया। वो कहता मैं नहीं बात करूंगा, इंडिपेंडेंट बात नहीं करूंगा। नहीं, अच्छा ऐसा बोल दिया उन्होंने। हाँ, भाग गया। और यही चीज हमने डिस्कस की थी कि जो मुसलमान हैं, जो इस तरीके के होते हैं, आसिफ अली भाई, अगर पहला सवाल उन्होंने कह दिया, पूछ दिया आप कौन हो, क्या मानते हो, समझ लेना कि वो इस्लाम पे बात नहीं करेगा। एग्जैक्टली अच्छा, अब बात यह है साहिल कि अब यहाँ पे मैं छोटी सी बात करने लगा हूँ, जस्ट फॉर हिज सेक, और तमाम लोगों के लिए भी जो मुसलमान आएंगे यहाँ पे डिफेंड करने की इस किस्म की बकवास के लिए। यार देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन 22 साल के अंदर मोहम्मद साहब पे उतरी, ठीक है? 22 साल में साहिल साहब, मोहम्मद साहब ने 22 साल में कुरान दिया ना, तकरीबन 22 22.5 साल में। 22.5 साल में कुरान के अंदर आयात हैं जिनको एब्रोगेट करती हैं कुरान की अपनी ही आयात, ठीक है? और इसे कहते हैं नासिख व मनसूख का कॉन्सेप्ट। ये भाई साहब मेरे पास आके ये कह रहे हैं कि 5000 साल कबल मसीह जो चीज आई गई थी उसको आप एब्रोगेट क्यों कह रहे हैं? साहिल साहब, कितनी स्टूपिड बात नहीं है ये कि 5000 साल पहले की चीज को मेरे को मानना है, और वो इनको कुरान के अंदर 22 साल में एब्रोगेशन है, वो उसको इनके ऊपर जो है ना मसला है। क्या बड़े बकवास है कंफ्यूज है यार। यार, बड़े कंफ्यूज है। अरे ये तो हमारे साथ हमारे जुड़ भाई आ चुके गए। हैं। हाँ, एक्स मुस्लिम अली साहब, बड़े प्यारे भाई है। कैसे हो अली साहब? ठीक ठाक साहिल सर, एडम सर, आप कैसे हो? सर ठीक ठाक, आप सुनाइए। सर तुसी ग्रेट हो यार, सीधी गर्दन फाड़ लेंदे हो। अरे अच्छा बाप रे यार। एडम, अच्छा जी एडम, सर। एडम बड़े सही टाइम पे आपने ये क्वेश्चन किया था। मुझे ये बताओ यार, स्टार्टिंग की जो वर्स उतरी है, और कल आपने वो रेवलेशन का ऑर्डर भी बताया था, द जी जी फर्स्ट रेवलेशन इकरा। जी, इकरा, 109, 109 चैप्टर। जी, इकरा। और उसके नहीं, ये सूर्य इंसान की है, सूर्य अलग की है ना ये इकरा जो। 109 है ना, चैप्टर नंबर 109 नहीं है? इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलका। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक 109 है। ओके, नहीं 109 109 नहीं है, एक तो, सेकंड। हाँ, क्या थी यार? तो 100। इकरा जो पहली आयत उतरी और जो भी लास्ट आयत उतरी है, हम्म। मेरा सवाल ये है आपसे, क्या एग्जैक्टली 23 साल थे?
सर कहते तो वो यही है ना। नहीं, कहने से नहीं होगा ना, कोई साबित कर पाया है एग्जैक्ट 23 साल? और कौन से साल? इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 23 साल, या फिर जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से 23 साल? कोई आज तक अरे साबित कर पाया है? मैं अरे मैं मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपकी नॉलेज के हिसाब से क्या है, किस मतलब इस पे क्या इख्तिलाफ है कि नंबर जो है यहाँ वहां है? कोई 22 साल, 4 महीना कह रहा है, 6 महीना कह रहा है। सर इसको बाय द वे चैप्टर नंबर 96 है, मैंने ढूंढ लिया है, चैप्टर नंबर 96 है ये। सॉरी मैं पहले 109 बोल गया था। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। सर इसको आज तक कोई अथॉरिटेटिवली प्रूव नहीं कर सका। ठीक हो गया। हम्म। अच्छा वो जो मैंने पीडीएफ दी थी ना उस दिन अपने, वो मेजोरिटी का कंसेंसस है। ठीक है जी, मेजोरिटी का क्या? कंसेंसस ये होता है कि जी मेजोरिटी का कंसेंसस है। जो मैंने पीडीएफ नहीं दी थी लास्ट टाइम, मैंने कहा था कि ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जी जी। यहाँ पे भी दिखाया था आपको। तो हम्म। वो सर वो मेजोरिटी का कंसेंसस है। वो ये नहीं है उसमें से फिर भी 10% लोग 15% लोग ऐसे आ जाएंगे जो उसमें थोड़ी सी चेंज मारेंगे। ठीक नहीं, है वो तो ऑर्डर है ना एडम, जी वो जी तो ऑर्डर जी जी। ऑफ रेवलेशन है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्ट कितने साल कितने दिन का ये पीरियड था? कोई है उस पे डेटा? सर उसके अंदर ऐसा डेटा नहीं है, लेकिन वो मोहम्मद साहब पे 40 साल की उम्र में पहली वही नाज़िल हुई, उसके बाद कुछ अर्से तक वही नहीं आई। तो उसके बाद मोहम्मद साहब की वफात हुई 62 ईयर्स में। तो ये तकरीबन टाइम के दौरान मोहम्मद साहब पे तो वही तकरीबन है ना आती रही। एडम? जी जी एडम सर बिल्कुल तकरीबन है ना, तकरीबन बिल्कुल तेईस सर। साल है ना। अब जी मैं सर। सवाल क्यों कर रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ मैं। अब ये जैसे मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी है और इनके जैसे, ये जहां से लेते हैं ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल मिरेकल। ओके। अरे उसने नदीम वाजिदी ने न्यूमेरिकल मेरिकल पे बात की है कभी? हाँ, 23 ओके के एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। उसने इतने सारे मिरेकल और सर छोड़ दें एक सेकंड, छोड़ दें नदीम वाजिदी जी। वटेवर मुफ्ती, मेरा चैलेंज, आपने कुरान के न्यूमेरिकल मेरिकल के ऊपर बात की है। मेरा आपको चैलेंज, सुन ये जो रहे होंगे न्यूमेरिकल वो। मेरिकल है 19 का मेरे को साबित कर दें कि वो कुरान में 19 का न्यूमेरिकल मेरिकल है। ये साबित कर दें, आ जाएं जाएं। उन्होंने 19 और 23 को लेकर, 23 और 7 को लेकर इतने सारे बताए। और आ, सर 19 का मेरिकल साबित कर दें, पता है कौन सी वाली वर्स से? नून हम्म। वल कलम। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, इनके मैंने ये सारी चीजें जो है ना बचपन में पढ़ी थी। सूरह नून, ये कौन सी है ये सूरह, कौन सा चैप्टर तो एक नंबर? खलीफा आया था ना जो स्टार्टिंग में ये 19 वाला जी जी मिरेकल दिया जी जी था? कौन सा जी जी जी। खलीफा था वो? सर रशद खलीफा? चैप्टर नंबर 68 में 19 का मेरेकल साबित कर दें। जब तक नून को नून वाओ नून नहीं लिखेंगे, खलीफा साहब ने, रिशाद खलीफा साहब ने ये किया था। जब तक ये चैप्टर, ये सर स्क्रीन दिखाएं, जब तक ये नून नून वल कलम में नून को नून वाओ नून नहीं लिखेंगे 19 का मेरेकल नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे उन्हें दो नून साबित करने होंगे, नून वाओ नून। तो नून वाओ नून अगर इसको लिखेंगे नून लिखने की बजाय, तो ये 19 पूरा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। रिशाद खलीफा के कुरान में नून वाओ नून नून लिखा हुआ था, रादर देन नून एज इन द हरफ नून। ठीक है। दूसरा, चैप्टर नंबर 9 की सूरह तौबा की आखिरी दो आयात जब तक वो नहीं निकालेंगे 19 का मेरेकल पूरा नहीं हो सकता। रिशाद खलीफा के कुरान में चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा की आखिरी दो आयात उसने निकालनी थी, उसने कहा था ये बाद में ऐड की गई हुई है। तो 19 का मेरेकल आज से बहुत साल पहले टूट गया था। असल में शाबिर अली ने 2002 की अपनी डिबेट के अंदर इसको यूज किया था, और वहां पे जब उसने यूज किया था जे स्मिथ के अगेंस्ट, तो मैंने 2012 में उसने यूज किया था, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया था। तो मैंने जब देखा कि मैंने कहा ये क्या गधा है कि एक ऐसी चीज जो कि टूट चुकी है, जिसके अंदर से कुरान की आयतें भी निकाल दी हैं, इस शाबिर अली जैसे गधे ने इसको यूज कैसे कर लिया। तो ये जो 19 का मेरेकल है, जब तक सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें नहीं निकालोगे, नून वल कलम में नून व नून को नहीं निकालोगे, तब तक ये पूरा नहीं होगा। ये बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं कि उस जमाने में उसने चंद एक कुरान की छोटी आयात के ऊपर ये कैलकुलेशन की थी। जब बड़ी आयात के ऊपर कैलकुलेशन करते हो तो आप वैसे ही फारग हो जाते हो। और अब चूंकि हमारे पास कंप्यूटर आ गए हैं,
तो हम हर चीज को कंप्यूटर से जब निकालने की कोशिश कर लेते हैं आसानी से, तो वो बहुत आसानी से टूट गया था। रिशाद खलीफा ने ये जब कहा था उसको कंप्यूटर इतनी तरक्की नहीं की हुई थी। तो सर ये 19 का मेरेकल तो जो भी गधा आता है ना उसे को आप भाई साबित कर दें। साहिल साहब ये दो चीजें सिर्फ पकड़ लें, आप बाकी सब चीजों को छोड़ दें, ये दो मोटी मोटी हाँ चीजें हैं, सही तबाह कर लेंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान जी जुड़ रहे हैं, लेकिन शर्त यह है एडम कि वो ये इनहेरिटेंस गालियों वाली। वाले हैं, ये यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान ये गालियों वाले हैं कि दूसरे वाले हैं, असल वाले हैं? नहीं, मुझे मुझे ये मैं हुस्ने जन के साथ कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान जो है वो लाइव में गालियां नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े स्कॉलर बनते हैं, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कुरान को लेकर, तो मैं चाहता हूं कि वो इनहेरिटेंस वाली आयत इनके सामने रख के इनका टेस्ट लिया जाए कि इनको कितना आता है इस्लाम, या कितना आता है कुरान। ये ले सर, आपके सामने खोल दी। चलिए, यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान जी, आपका इस्तकबाल है। मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ। आए हाय हाय, आते साथ ही इन्होंने तलवार नीचे डाल दी है एडम। म्यान में सर, म्यान में डाल दी, फुल म्यान में। ये कुरान बहुत ही हाई मैथमेटिक्स पेश कर रहा, मैं तो मैथमेटिशियन नहीं नहीं हूँ। समझ में आता आपके मतलब? मैं यार कोई मैथमेटिशियन तो नहीं हूँ। एडम आए यार। कोई तो मैं आए। मैथमेटिशियन नहीं हूँ। तो यार ये वही वाले यूनिवर्सल ब्यूटी इमाम है, ईमान है जो हाँ। लाइव चैट में गालियां दे रहे थे, या ये दूसरे हैं? अच्छा, इनसे ही कंफर्म कर लेते ना, यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान जी, आप ही गालियां दे रहे थे लाइव चैट में? मैं गाली जो ना किसी को देता नहीं, अलबत्ता जो गाली देता है उसको मैं उसकी गाली उसकी जेब में डालता हूँ। अच्छा, मतलब आप गाली दे रहे थे लाइव में, क्या नहीं दे रहे थे वो बताइए, मुझे पता नहीं। घुमाइए मत। हाँ, मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं। साहिल आज साहब तो कौन सी यही पिए थे, हो? यही थे इसका नहीं, मतलब है। कुछ पी रखे हो क्या, याद नहीं रहता? हाँ आज हाँ, कौन सी वैसे ही पिए हो समझो। यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान वैसे जी, कौन सी पिए हो? आज शराबन तो तहूरा है कि सिर्फ शराब है? हिकमत की शराब पी मैंने। तो हिकमत के साथ ये जरा इनहेरिटेंस वाली जो वाइन ऑफ विजडम, वाइन ऑफ हाँ, विजडम। तो यूनिवर्सल ब्यूटी जी, ये वो हिकमत वाली जो वाइन आपने पी है ना, तो ये जरा ये विजडम। सामने आयत है, जरा मैं ये समझा दो। मैथमेटिशियन नहीं हूँ, पहले बोल दिया ना। आई एम नॉट तो आई एम मैथमेटिक्स नॉट में विजडम भी में सही मैथ नहीं नहीं होता आता क्या? साहिल साहब, विजडम में मैथ नहीं आता यार, ये वही विजडम तो, में मैं भी मैथ वही नहीं नहीं आता। नहीं कह नहीं रहा नहीं, हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। ओके ओके, मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में जरा कमजोर हूँ। और ये कुरान यार, जो ना साइंस के स्टूडेंट बिना मैथ्स के आप साइंस के स्टूडेंट बहुत ही कैसे बन सकते हैं? हाई फाई जो ना एक रेशियो मिनट, प्रोपोर्शन पेश कर रहा। यूनिवर्सल उसके ब्यूटी लिए जी, उसके लिए कॉपी पेंसिल लेकर पूरे जो ना उसको प्लस करके यूनिवर्सल माइनस ब्यूटी करके। सर यूनिवर्सल कापी, ब्यूटी जी, कापी आपने पेंसिल नहीं, कहा कैलकुलेटर। साइंस। नहीं, एक मिनट एक्स मुस्लिम कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अली जो साहब, भी है। नहीं एक मिनट एक्स मुस्लिम अली तो साहब, आप एक मिनट, ठीक। सोचिए उस जमाने में अरे रेशियो रुक प्रोपोर्शन जाओ पेश कर रहा यार, कुरान। यार रुक जाओ थोड़ा, यही मसला है आपके साथ, सुनते नहीं हो। आपने कहा आप साइंस वाले हैं, एडम इन्होंने कहा ना इसी तरीके से सर कोई बात। सर साइंस शो कर देते हैं सर इनको, ये ले। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं मुझे ये अच्छा, बताओ, बिना मैथ्स के, बिना मैथमेटिक्स के साइंस में आदमी कैसे एडवांस कर सकता है? भाई मैं सर वो थियोरेटिकल इनकी फिजिक्स, साइंस है, थियोरेटिकल साइंस जानता हूँ। ओके। अच्छा, अभी थ्योरेटिकल उसमें भी, साइंस, साइंस में भी एक आपने अलग पार्ट कर दिया। थ्योरेटिकल साइंस थियोरेटिकल जानते साइंस, हैं, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं। यार, ये मैथमेटिक्स यूनिवर्सल से जुड़ी ब्यूटी हुई जी, नहीं। प्रैक्टिकल क्यों नहीं ऐसा जानते। करते हो यार? थ्योरेटिकल अब सर, जैसे थ्योरेटिकल साइंसेज ये में, थ्योरेटिकल साइंसेज में मैथ और फिजिक्स के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। आई नो यार, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स केमिस्ट्री, बट वो हम्म मैथमेटिक्स नहीं जानता हूँ। डिफरेंशियल जो कैलकुलस, हम्म जिससे जो ना बड़ी बड़ी जो इक्वेशंस, एस्ट्रोनॉमिकल जो इक्वेशंस हम्म सॉल्व होती हैं, वो मैथमेटिक्स नहीं हम्म, जानता। अच्छा। गए, पहले ही हथियार डाल दिया इन्होंने। और मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई इंसान जो ये कहे कि कुरान आसान है, वो आके हमें, और कब से ये मुतालबा कर रहा हूँ एडम में, सर 2 हफ्ते तो हो गए। 2 हफ्ते ये नहीं यार, इकरा बिस्मि पहले से कर रब्बिकल रहा हूँ। लज़ी खलक, क्या बोंगे हमारे, तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। कोई बोंगिया नहीं मार रहे थे इसमें। आप ये पढ़ सकते हैं, हमें ये समझा सकते हैं जो साइंस आपके सामने इस वक्त है, कि ये भी साइंस आपके ऊपर ऊपर की है। कौन सी है? सूरह मोमिन की आयत नंबर 14, इसकी साइंस समझा सकते हैं कि नहीं, ये भी ये नहीं, आपके ऊपर है? ये नहीं, ये ये भी नहीं, नहीं ये समझा जो ना सकते? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उस पे बात हो रही थी ना, मैं अच्छा, इसीलिए अभी आया। आप बोल रहे थे आप साइंस वाले हैं,
तो इसका ये साइंस बता दीजिए ना यूनिवर्सल नहीं ब्यूटी नहीं, जी। इससे नहीं कि मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता, पहले जो ना मैं जो बोल रहा हूँ वो आयत निकालिए। ये अच्छा पहले ये साइंस डिस्कस नहीं करते है। हैं, फिर इकरा पे भी चले जाते हैं। आपने खुद कहा ना आप साइंस वाले हैं, ठीक है थियोरेटिकल भाई, साइंस, उसको मेरा भी एक बड़ी बड़े वर्ड्स यूज आप किया आपने। आप जो बात कर रहे थे वो बात में निकालो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उसके ताल्लुक से क्या कह रहे थे आप? यानी दो चीज से ये अपनी जान छुड़ा रहे हैं। एक तो इन्होंने साफ हथियार डाल दिया, इनहेरिटेंस वाली मैथमेटिक्स इनको भी नहीं आती है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, लास्ट का जो वर्स पढ़ रहा हूँ मैं, चल लास्ट का वर्ष फतबारकल्लाहु बता। अहसनुल खालिकीन। और अहसन अहसनुल का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अहसन का रूट वर्ड क्या है? सर पता नहीं, हाँ अहसनुल खालिकीन। सर आप बताएं ना सर। अहसन का रूट वर्ड क्या है? बहुत ही सर अरबी छाटते हो ना। सर आप बता देना। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बता दे। सर कोई यही बात तो ही है, पूछ रहा हूँ आपसे, ये आप कोई बता बात ही नहीं दें हुई। ना सर, मैं हमें नहीं पूछा पता ना सर, आप अहसन का रूट बताएं। वर्ड क्या है, सर आप बता देना सर, हमें नहीं पता। तो कुरान जब भी पढ़ते हो तो हम्म 360 आजकल दिया हुआ है, तो उसमें रूट वर्ड्स होते हैं। ओके रूट वर्ड्स पे जाइए, एक लिसानुल अरब, एक डिक्शनरी ले लीजिए अरबिक, सर, पता है हमारे पास, आप फिर बता दें यार। उससे आप रेफरेंस से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो मालूम होगा। अच्छा, अच्छा कुरान ही ना पढ़े, अलबत्ता यार, कुरान इसका के जो रूट अल्फाज है वर्ड ना। तो बता दें यार, आपने पूछा बता तो देना यार। मैं पूछा, मुझे पूछने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सर आसन का रूट वर्ड तो बता दें, फिर वही कुरान जलेबी, 360 यार में से इतनी देख के बता इतनी दें। जलेबी, इतनी कड़वी कड़वी जलेबी हमको खिलाता यार। यार साहिल ये कैसी बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद ही बोला है, मैंने कहा बता दे तो बता भी नहीं रहे हैं, 360 में से देख इतनी के भी नहीं साइंस बार बता बार रहे। वाली बार सबसे बार बड़ी बार है बार इन्होंने। जिद जिद पे आया यार। यार अब बता भी देना यार। इतना जिद, इतनी जिद स्ट्रीम पर, वो भी लाइव स्ट्रीम पर। यार अच्छा, इसका आप ही ने साइंस तो पढ़ा है। बता दे यूनिवर्सल ब्यूटी जी, ये आयत का साइंस अच्छा तो बता दे। सर, वो उन्हें साइंस नहीं आता, इन्होंने जो आखिरी लफ्ज पढ़ा ना, सिर्फ मुझे उसका उस सेंटेंस का मीनिंग बता दें सर, बाकी साइंस को छोड़ दें, जो इन्होंने पढ़ा फतबारकल्लाहु है अहसनुल उसकी मीनिंग बता। खालिकीन। जी अहसनुल खालिकीन, ये जो ना, जो जो क्रिएटर्स हैं, जो खालिक हैं, जो हम्म ये अल खालिक नहीं है, ये जो हम्म है वो खास, वो पूरी यूनिवर्स, यूनिफाइड ऑर्डर के जो ना खालिक नहीं है, बल्कि हम्म वो छोटी छोटी चीजों के खालिक हैं। वो हम्म अलबत्ता अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने आप को, कि जो ना फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वो हम्म अहसन यानी कि हुस्न, हुस्न का सुपरलेटिव डिग्री अहसन, उससे हम्म बेहतर कोई क्रिएटर नहीं है। बेहतरीन। आप अहसनुल मुझे बताएं खालिकीन, कि कुरान के मुताबिक खालिकीन कितने हैं, कौन कौन है खालिक कुरान के मुताबिक? बहुत से बेशुमार खालिक हैं। दिखाएं कौन कौन से कुरान के जैसा मुताबिक, कि कौन बुद्ध, कौन से खालिक हैं? बहुत से जो ना लोग मैन्युफैक्चरिंग, जो ना प्रोडक्शन प्लांट में जाइए, आप सब वो खालिक ही ख- वो मिलेंगे आपको। वो खालिक नहीं होते, वो कोई चीज बिल्कुल, पकड़ते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। खालिक होता है तख्लीक करने वाला, खलक करने वाला, एक ऐसा जो कि नथिंग से खलक करे। कुरान के मुताबिक नहीं नहीं, खालिकीन कितने हर हैं, वो जरा मुझे बता चीज दें। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट जो की जाती है उसको वो खालिक कहते खलक नहीं होता, वो खलक नहीं होता, हैं। खलक, वो फैब्रिकेटेड होता है। मैंने आपसे पूछा सर, कुरान के मुताबिक मुझे फैब्रिकेटर आयतें खालिक है। दें, मुझे आयतें दे, कुरान फैब्रिकेटेड आयतें सर। आयतें मैं लो दे जी, दूंगा यहीं पे, साहिल साहब, अल्लाह जो है ना वो लिसानुल अरब, फैब्रिकेटर है। साहिल साहब, अल्लाह जो है ना वो एवरी फैब्रिकेटर है। फैब्रिकेटर साहिल साहब, खालिक अल्लाह है। जो है वो फैब्रिकेटर है, अकॉर्डिंग टू ओके दिस गाय, ओके, नहीं नहीं, अकॉर्डिंग फैब्रिकेट टू दिस करना, गाय। नहीं, अल्लाह की खुसूसियत दूसरी जगह अहसनुल खालिकीन, उससे बेहतर खालिक फैब्रिकेटर नहीं है या मैन्युफैक्चरर मतलब नहीं है, अल्लाह फैब्रिकेटर है या नहीं है वो तो बताइए ना यूनिवर्सल ब्यूटी जी। प्रोड्यूसर नहीं है, उससे बेहतर प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर, अरे ओके बेहतरीन। तो फैब्रिकेटर। प्रोड्यूसर कितने हैं? बहुत से प्रोड्यूसर, आप ओके, फिल्म सो डायरेक्टर जाके देख लीजिए, प्रोड्यूस अल्लाह भी सिर्फ फिल्म, प्रोड्यूस कर सकता है, खलक नहीं कर सकता, आउट ऑफ नथिंग से पैदा नहीं कर सकता। यहाँ पे खलक नाम खालिक है, अल खालिक, सर कुरान में से मुझे खालिकीन दिखाएं, वन कौन ऑफ कौन से हैं? एट्रीब्यूट अल खालिक। इतना कुरान में बेवकूफ है यार, खालिक बताएं कौन कौन है सर। नन्यन एट्रीब्यूट्स है। सर कुरान में खालिकीन बताएं कौन कौन है। सूरह हशर की आयत है, उसमें सारे जी, सिफात हैं। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा कुरान में खालिक, खालिकीन कौन कौन है दिखा दें प्लीज। मैं ये साहिल मैं साहब, मेरा सर्च करने तो सवाल नहीं बैठता, मुश्किल है तो आप तुम्हारा समझाएं नहीं, सर होमवर्क। बिल्कुल इनको। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है यूनिवर्सल ब्यूटी जी। देखिए मसला ये होता है ना, मैं तुम्हारे मुश्किलात दूर नहीं करूंगा, अलबत्ता मैं जो ये आयत है उसके ताल्लुक से बोलूंगा, बस खत्म। यानी आपके पास जवाब नहीं है।
मैं नहीं दूंगा जवाब, राय में तो नहीं दूंगा मैं। देखिए एक मिनट मुझे म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि ये सुनेंगे नहीं पूरी बात। जिस तरीके से आपने हथियार डाला था इनहेरिटेंस वाली वर्ड्स पे, उसके बाद इसकी साइंस पे, उसी तरीके से यहाँ भी नहीं पता है तो बोल दीजिए ना मुझे नहीं पता है। कौन जबरदस्ती करेगा आपको? नहीं पता है तो नहीं पता बोल दीजिए, नहीं जवाब है तो नहीं है, नहीं मालूम है बोल दीजिए। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, मैं जानता भी हूं तो नहीं बताऊंगा, ये है मेरा। अच्छा, जो जान के ना बताए एडम, फिर उसको क्या कहेंगे? ठुल्ला। क्योंकि तुमको जलेबी बनाने का मौका ना मिले। नहीं, क्योंकि मोहम्मद साहब कहते हैं अगर आपको एक आयत भी पता है तो उसको बताओ। अरे यार, बैकग्राउंड में जलेबी तली जा रही है। वो आप तल रहे आपके लिए हैं। लाई गई, तुम्हारी आपके लिए जलेबी स्पेशल लाई स्टीमी गई। जलेबी है, इसका मतलब तुम्हारी स्टीमी जलेबी है। सर वो आपके आने के बाद बनी है। एडम सर ये तो वही बात होगी, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ऐसी बातें बताई नहीं जाती है। अगर हम बताएंगे तो तुम और भी मस्त जलेबी बना सकते हो। एडम, जी एडम सर। वो हमारे कौन सा नाम भूल गया यार, ये तो होगा को सुना है आपने? ये तो होगा। हाँ हाँ, ये भी उसी का ये तो डायलॉग है, मैं नहीं होगा, बताऊंगा। सिर्फ वीडियो सर्च करो ना, बड़ा बड़ा जबरदस्त हो। ये तो होगा। रुको मैं यार ढूंढता हूँ, बड़ा यार जबरदस्त है, रुक जाओ। साहिल भाई, प्रॉब्लम ये है किस किस्म के लोग इस्लाम को डिफेंड करने आ जाते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती। ये दूसरे दूसरे चैनल्स पे जाके ये ऐसा इस्लाम को बताते हैं जैसा इस्लाम से अच्छा मजहब, सच्चा मजहब कोई है ही नहीं। जब हमारे सामने आते हैं तो इनके पास जवाब ही नहीं होता है। नहीं ये नहीं, कहते आपको मैं नहीं बताना नहीं जानता। चाहता, आपको बताना नहीं चाहता मैं, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताना नहीं सर चाहते। आप ना वॉशरूम चले जाएं, खुद को बताते रहें। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा रुको, मैं एक चीज शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। एक मिनट, सब लोग अभी थोड़ा सा। यार साहिल भाई, जितनी देर में आप शेयर कर रहे हैं, क्या हमारे पास पढ़े लिखे मुसलमानों की कमी है इंडिया में? बहुत कमी हो गई है, पूरी दुनिया में कमी हो गई है। नहीं नहीं अरे एडम सर, मैं पता है क्या सोचता हूँ इस बारे में, जो समझदार होता है ना वो पहले ही छोड़ देता है, बाकी ये फिल्टर होके आते हैं। अरे तभी तो प्रॉब्लम है यार, तभी तो हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, नहीं मिलते। चला दें सर? ये ले। सर फुल स्क्रीन में चलाएं सर। अरे रुको ना। अरे भाई, तुम्हें सलमान याद है ये अपने आरिफ साहब और खान साहब की गली में वो कुक्को के वालिद का क्या नाम था? कुक्को अब्बास था। एक्स मुस्लिम से पहले यहीं बैठते थे क्या? अमरोहे के थे, मशहूर भाई कहलाते थे। स्टाइल देखो खाली एडम। अरे भाई कायम, तुम्हें याद है? अरे जेंगू। उस गली का है। अरे कौन जाफरी, लड्डन जाफरी, मुझे को याद आया। लड्डन जाफरी अमरोहे के थे, उन्होंने मुझे खुद सुनाया। मैं अपनी अम्मा के साथ करबला गया था, उनकी औलाद से जाके पूछ लीजिएगा, गली बता दी। उनके बेटों के नाम भी मुझे याद है, एक दो बेटे शायद दुबई में, सब यहाँ है। वो डेकोरेशन की दुकान जिसकी है उसका क्या नाम है? शमीम। शमीम तो है ना यहाँ, लड्डन जाफरी का बेटा, उससे पूछिएगा, वो बता देगा। कोई बात ही नहीं, रिलेवेंट बात ही नहीं है। अम्मा मुझे लेके करबला गए, मुझे पतंग उड़ाने की आदत। मैं करबला में जहाँ ठहरा था, छत पे चढ़ गया, पतंग उड़ाने लगा। करबला में भी उन्होंने पतंग उड़ाई, कहने के छत से गिरा और मर गया। मर गया, इंतकाल। अम्मा जो आई, पता चला तुम्हारा बेटा छत से गिर के मर गया। अम्मा मुझे उठा के हजरत अब्बास के रोजे में ले गई और उठा के मेरी लाश में फेंक दी, का इकलौता बेटा मेरा। और मैं बेटे को लेके आई कि अब यहाँ से क्या मैं इसको मैयत लेके जाऊं, मुझे जिंदा बेटा चाहिए। लड्डन जाफरी कहने लगे मैं जिंदा हो गया। जब मैं जिंदा हो गया तो अम्मा ने मन्नत मानी कि जब ये जवान हो जाएगा तो मैं इसको लेके आऊंगा, लेके आऊंगी। जब ये जवान हो जाएगा तो मैं मन्नत उतारने आऊंगी।
तो मैंने कहा फिर अम्मा कहाँ गई? कहले उनका तो इंतकाल हो गया। कहा तो फिर आप करबला नहीं जाएंगे मन्नत उतार? कहले नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहले कि मन्नत कैसी है? आज मैं वहां जाऊंगा फिर मर जाऊंगा। जब तक यहाँ हूँ, जिंदा हूँ, हज़रत अब्बास ने मुझे जिंदा रखा है। पता नहीं वहां पहुंचू मलकुल मौत कहे आ गया तू जवान हो के, तुझे तो मार दिया था, अब तू फिर आ गया तो रूह कब्ज हो जाए। ये वाकया उन्होंने मुझे खुद सुनाया। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, लड्डन जाफरी का। हज़रत अब्बास ने जिंदा कर दिया उनको, तो इस पे हैरत में करो वो सारे लोग कैसे लेके अब्बास को मैली साहब के पास पहुंच गए। देखिए जमीर अख्तर ने क्या पढ़ दिया। वो मैली साहब ने कहा इसमें क्या ऐसा है? हाय हाय, वो जो नुक्ता है वो कोई बयान नहीं कर रहा। चूंकि जो कमा का मातम करते थे वो मर गए और वो जिंदा हो गए। परेशानी ये कमा वाले रजिस्ट्रेशन ले आए अल्लाह के यहाँ से। ये तो होगा, ये तो होगा। ये अगर आपने पीके सर जी, ये जो होगा है ना, ये सेम आदम का भाई है ये। सर ये देखें, मैं ये तो होगा आपको दिखाता हूँ। ये वाला ये तो होगा चलाएं सर, वो वाला नहीं, ये वाला चलाएं सर। ये वाला ले, ये तो होगा सर, ये चलाएं, ये आदम का भाई है। ये चलाएं, ये चलाएं। ये तो होगा, ये तो आदम का भाई है। ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो आदम का भाई है। ये लड्डन जाफरी को एडम बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए एक्सप्रेशन के लिए। क्या बोलते हो सर? मैं कहता हूँ सर, ग्रेट, बेशक ये तो आदम का, ये तो आदम का भाई है। अच्छा, लड्डन जाफरी ने भी ये बात कही थी कि ऐसी बातें बताई नहीं जाती है। तो ये ये पीटर जाफरी है, ये आदम पीटर जाफरी है, पीटर जाफरी है। यार ये ऐसा करें साहिल साहब, ये अब इनको निकाल दें और आसिफ साहब दोबारा जुड़े हैं, मेरे ख्याल में उनको ले लें। नहीं, आसिफ साहब कहाँ पे है? सर वो प्राइवेट चैट में उन्होंने लिखा है ये क्या वीडियो है। आसिफ अली साहब अभी या तो आए थे और फिर चले गए। हाँ, हो सकता है वो लड्डन जाफरी को सुनकर निकल गए हो। सर वो उस वक्त तो 2 मिनट में भागे हैं वो आसिफ अली साहब के। नहीं जी, यहाँ पे हम कुछ और बात नहीं करें, हालांकि मैंने उसका आंसर भी दे दिया, फिर भी जो है नहीं। तो यार ये लोग क्यों ऐसा करते हैं साहिल साहब? बिल्कुल। अच्छा, ये यूनिवर्सल ब्यूटी जो है, ये दूसरे चैनलों पर बैठकर ऐसा बयानबाजी करते हैं जैसे इस्लाम से अच्छा कोई मजहब ही नहीं है। इस्लाम के पास सभी चीजों का जवाब है और इनसे बड़ा कोई आलिम है ही नहीं। इनको कुरान इतना अच्छे से समझ में आता। यार मुझे ये समझ में नहीं आता, इनहेरिटेंस वाली आयतें क्यों नहीं समझ में आती है? सर वहां पे असल में जाके ना इनको मौका मिल जाता है टेंटे करने का। असल में चंद एक चैनल्स हैं जो इनको बहुत ज्यादा बोलने की इजाजत दे देते हैं, रिफ्यूट नहीं करते। दैट्स व्हाई इस पे सवाल नहीं करते, सवाल नहीं करते ना इस पे, वहां पे इस वजह से चल जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मेरे सामने आगे कोई बंदा बोलता है ना, तो भाई मुझे तो एविडेंस चाहिए, नहीं तो फिर मत बोलो। अब ये जो बताया पूछा है कि यार खालिकीन कितने हैं कुरान में, दिखाओ ना। फिर दिखाए ना यार कुरान में खालिकीन को। नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आयत ये देखो, मैं समझाऊंगा, बताऊंगा नहीं। यार एडम भाई मुझे एकदम लगा कि आप ही लंदन जाफरी बन गए। यार देख ले यार। अच्छा, ये मिसाल भी क्या दी है, फैब्रिकेटर, मतलब अल्लाह भी फैब्रिकेट करता है। अगर अल्लाह फैब्रिकेट करता है तो इसका मतलब है कि क्रिएशन ऑलरेडी मौजूद थी। यानी कि पहला वाला जो वो था, कोई मटेरियल मौजूद था तो अल्लाह ने फैब्रिकेट किया। तो भाई वो मटेरियल का खालिक कौन है? खालिक खलक करने से आता है कि ही क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। अगर आप आउट ऑफ नथिंग कोई चीज बना रहे हैं ना साहब, तो वो फैब्रिकेशन में नहीं आता, वो खालिकीन में आता है, वो खलक करने में आता है, वो क्रिएटर में आता है। बाकी सब चीजें इज फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेट की गई हुई चीजें, गाड़ी, मोबाइल, कुर्सी, या मैन्युफैक्चर्ड। एग्जैक्टली, दे आर फैब्रिकेटेड, मैन्युफैक्चर्ड। बट खालिक का जो वर्ड है
ये बजाते खुद एक ऐसा लफ्ज है कि वो उसमें नहीं आ सकता, लेकिन चूंकि इनके पास जवाब नहीं है तो जलेबी तो बनानी है। आपने सही किया, पीछे जलेबी की वो पिक्चर लगा दी। तो साहब अच्छा अच्छा, ये भी सोचो ना यार एडम के, चलो थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम जो ये नॉर्मल क्रिएटर की बात करें, जैसा कोई मैन्युफैक्चर, इसको ये क्रिएटर समझे, तो यार अल्लाह अपने आप को कंपेयर कर रहा है ऐसे लो लेवल क्रिएटरों के साथ? ये भी एक सवाल अपेरेंटली बनता है। अपेरेंटली तो ये कैसा अल्लाह है फिर? अच्छा, आसिफ अली साहब आ गए हैं, ओके, इस्लाम शायद पे वो बात हमें बता दें। करेंगे। सर इस पे मुझे भी एक चीज पूछनी है कि अगर जन्नत में जो चीज मांगोगे वो मिल जाएगी, तो हम कहें हमें तुम्हारी कुर्सी चाहिए, यार गिराना है। तो उस पे क्या आंसर होगा? सर ये स्क्रीन पे दोबारा दिखा दें सर, शायद ये दिखा दें, अब हमें इसके बारे में बता सकें आसिफ अली साहब। आसिफ अली साहब, आपका इस्तकबाल है फिर से। आसिफ अली साहब, हमारे पास बिल्कुल 10 मिनट रह गए हैं आज की स्ट्रीम क्लोज करने के साहिल लिए। भाई, जी आसिफ अली साहब। जी जनाब, कैसे हैं आप? साहिल भाई बोल के ये गायब हो गए, सर चले गए। वो नहीं सर, बैठे वो गायब सर फौरन से पहले। ये तो साहिल साहब होगा, ये तो होगा समा का मातम, जिंदा हो गए। नहीं बोलते अच्छा हाय हाय जिंदा हो। अच्छा, यार कहानी भी ये, कितनी मजे की है कि वापस हाँ चला गया तो वो फरिश्ता जो है ना जान ले लेगा, वापस ना गया तो यहीं पे जान नहीं लेगा। यार फरिश्ता भी लिमिटेड है यार। यार नहीं, और नेक्स्ट पूछेगा लेवल। आ गया तो जवान होके मतलब वेट कर रहा था। मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेवल आलिम थे यार ये, मेरे ख्याल से इनका इंतकाल हो गया है। नहीं, अच्छा साहिल साहब, नहीं फरिश्ता वहां पे वेट कर रहा है। फरिश्ता जो है वो किसी और दुनिया में किसी और जगह पे नहीं जा सकता, फरिश्ते को नहीं पता कि ये बंदा कहाँ पे जिंदा है। वहां पे गया तो पकड़ा जाएगा यार। यार यार पाकिस्तानियों को मालूम है ये मीम मटेरियल मिल गया, मालूम, ये लड्डन जाफरी की वजह से। यार इनको ओ, सुनने वालों में कोई अक्ल नहीं होती। नहीं सर, अच्छा वो भी ऐसे ही उसमें होते हैं। उसमें उसमें सबसे बेस्ट पार्ट कौन है मालूम है लड्डन जाफरी के बाद? कौन? वो जो बैकग्राउंड में जो वॉइस निकालता है, हक है हक है हक है हक है। आसिफ अली साहब फिर से जुड़ गए। जी आसिफ साहिल साहब। भाई जी, जी, तो ये समझा बोल सकते के हैं। चला गया थे कि मैं भाग गया। नहीं नहीं, भाग गया नहीं कहा ना मैंने, आप ड्रॉप हो गए नहीं, कहा, मैंने नहीं कहा, एडम ने कहा होगा। उन्होंने कहा कि मैंने मैं कहा भाग मैंने गया, कहा तो मैंने मैं तो कहा मैंने कहा मैंने क्या भाग गया? अभी भी इनका इंटरनेट इनका साथ नहीं दे रहा है, अल्लाह से इनको जी, दुआ करना पड़ेगा। जिब्राइल को लेके आए यार साथ में, आप अकेले काफी नहीं रहेंगे। ना मैं आपके चैनल पे आऊंगा, यार फिर जिब्राइल बात होगी जिब्राइल ना। आपकी हेल्प करेगा, जिब्राइल आपकी हेल्प करेगा अगर आप इसका जवाब दे दें जी, कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ये अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह को बुलाएं, अल्लाह को याद मतलब करें, शायद अल्लाह आपकी हेल्प कर दे। फतबारकल्लाहु अहसनुल वही तो मैं आपसे खालिकीन। कहूंगा कि सर मैं कहाँ है यही तो जीसस, पूछ रहा हूँ, मतलब फिर वही बात, ये जीसस वही कहाँ वही है? गेम, वही गेम। फिर नहीं, भागेगा 23 से वो। मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाई, यहाँ पे अल्लाह मियाँ ने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, दुनिया के चले खालिकीन गए। कितने हैं? यार ये भागता क्यों है अल्लाह इतना? अल्लाह इनकी मदद ही नहीं करते यार। मैं तो चाहता हूं कि हमारे मोमिन भाई सीधा अल्लाह को लेके आ जाए इस टीम में। मैं भी यही चाहता हूँ यार। हाँ, एक ही बार में मसला रफा दफा हो जाए। ये मैं मुफ्ती तो शुफ्ती को छोड़ो यार, मुफ्ती शुफ्ती को छोड़ो, सीधा अल्लाह को लाओ यार, कोई कोई मदद तो हो सके तुम लोगों की, कोई तो 1000 मदद हो फरिश्ते सके। भी ना भेजने पड़े क्यों अल्लाह को। नहीं आप हाँ सूरह ये तौबा और आयत यार नंबर 39 खोलो, ये मुझे 39 खोलो। ओके, नहीं जी, सूरह तौबा आयत नंबर 39 खोलने लगा हूँ। इनके कहने पे ये वहां से हमें बताएंगे कि अल्लाह अहसनुल खालिकीन कैसे है। 939 जी सर।
नहीं बताएं उस पे आप बात करते हो ना, सर, उस पे करें ना, आप बात 939 खोल दी करते हो ना। सर, आपके सामने 939। जी साहब, सर जी अल्लाह को ले तो आए, इसमें क्या अकेले आप काफी नहीं। मतलब आप सर 939 आसिफ मैंने तो दिखाई नहीं, आपने कहा मैंने खोल दिए। 29 यार अल्लाह के 29 अरे भाई अल्लाह 29, के नाम पे ओके कोई पैकेज लगवा लो। सर 29 खोल दी सर, ये ले सर 29 नहीं खोल दी। जी सर, जी जी सर। जी तो इसमें क्या बुराई है, आप इस पे हमेशा वीडियो बनाते रहते हो तो आपके चैनल क्या पे। इसमें कोई बुराई नहीं है आपके ख्याल में? पहले किताब के लिए जो लिखा हुआ है ना नीचे, आप देखो। अहले किताब के लिए है सिर्फ, हिंदुओं के लिए नहीं है। वही सारा है मेरा। हिंदुओं के लिए नहीं है, सिर्फ अहले किताब के लिए है। जी ये नहीं, इस पे हम हमेशा बोलते हैं ना ऊपर ये से, आप इसको ये थोड़ा उर्दू में कैसे ये मन कर सकते हो। सर मैंने पूछा है, ये आयत जी सिर्फ जी अहले किताब के लिए है, जूस और क्रिश्चियंस के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है, एग्नोस्टिक्स के लिए नहीं है, एथियस्ट के लिए नहीं है। चलो कम से कम हमको जिजिया नहीं देना पड़ेगा। टाइम एडम तुमको तो देना इसको पड़ेगा। मतलब यार मैं तो तो मर गया यार। आपके कितने मन रहे थे। जी मेरा वही सारा है। कट यार कट के आपका आ रही वॉइस है आसिफ कट की कट के आ बात। रही है, इंटरनेट सही करें ना। नहीं आप सॉल्व कर जाता हूँ। सर मुझे इस आयत को समझा देना आप। नहीं आप समझाओ ना, ये किस पे बात हो रही है नीचे कि अहले किताब के लिए जो अपने ही किताब को नहीं मान रहे थे, तो ये मतलब ये कौन सा टॉपिक है, आप मुझे समझा सकते हो। आप इस पे ये सर हमेशा बात लिखा हुआ करते रहते है, हो अपने लाइव चैनल पे। अनटिल दे गिव जजिया और फहुम जागिरून, जलील होकर। सर ये क्या तरीका है जजिया लेने का, और जजिया किसे कहते हैं, और जजिया कितना होता है? नहीं उसको छोड़ो, आप तो नीचे तो आप क्या पढ़ो उसको ना, छोड़ो? ये एक अहले किताब के लिए जो नहीं मान रहे थे अल्लाह पाक। यार नहीं मानते ना अल्लाह पाक को, नहीं मानते ना, क्या करें अब क्या करें, नहीं मानते अल्लाह पाक को। आसिफ अली आगे साहब अल्लाह को क्यों नहीं लेके आ जाते यार आप लोग। मुफ्ती तो आएंगे नहीं, अल्लाह को ही ले आओ यार, मोहम्मद क्या साहब को भी मसला ले है। आओ। जब पहले आसमान पे अल्लाह आ सकता है तो स्ट्रीम में क्यों नहीं आ सकता है। ये गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये तो सर बड़ा जेंगो क्वेश्चन मारा है आपने। पहले आसमान तक आ सकता है तो ये, वैसे पहला आसमान है कितनी दूर हमसे, पता है आपको? पता नहीं। सर पहला आसमान जो है ना, वो 5000 साल की मुसाफत पे है, 500 साल की मुसाफत पे, सॉरी 500 साल की मुसाफत। अब सर मोहम्मद साहब के जमाने में तेज तरीन चलने वाली चीज कौन सी है? खोता। नहीं यार, ऊंट। ऊंट, खोता नहीं, ऊंट। तो ऊंट की 500 साल की मुसाफत। सर ये कितने माइल्स बनेगा पहला आसमान? फॉर्मूला बताना पड़ेगा। जी सर, मैं डिस्टेंस अभी इज आपको। इक्वल टू हम्म, स्पीड, ये स्पीड देखे ना, अपॉन टाइम ना। नहीं, स्पीड ये देखे इनटू ना, टाइम। हाउ फास्ट अ कैमल कैन रन। सर हमने वॉक नहीं कराना, हमने रन कराना है, ठीक है जी। नहीं जी, कैमल कैन रन फॉर 40 माइल्स एन आवर। ओके जी, 40 माइल्स एन आवर पे कैमल जो है वो भाग सकता है। अब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है जी। अब अगर 500 साल की मुसाफत है तो उसके घंटे निकालने हैं। तो 500 साल जरबे 365, ये दिन निकल आए, जरबे 24, ये घंटे निकल आए, ठीक है जी। और इसको हमने 40 के ऊपर डिवाइड किया तो ये निकल आए हमारा डिस्टेंस। सर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,09,500 मील। सर तो हमारा जो पहला आसमान है जिस पे अल्लाह मौजूद है, वो 1,09,500 मील का फासला है। तो वहां पे भी इंटरनेट कनेक्शन लगा सकते हैं ना।
सर वहां से तो आसानी हो जाएगी ना, दूसरी सैटेलाइट लगा लेंगे। सैटेलाइट से, हाँ सैटेलाइट से तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी, करीब हो जाएगा। अरे बाप रे, बाप तो रे आ बाप। जाए ना यार, क्यों ये जो प्यादे हैं वो हमें धमकियां देते हैं। चलो यार, प्यादों को गोली मारो, आओ। मेरा ख्याल है चलते हैं आज सारे ये लोग। डीएजी कह रहे हैं कि अल्लाह के पहले आसमान पे आने का टाइम हो गया है इंडिया के हिसाब से। अरे हो गया। चलो यार, इंडिया में अब अल्लाह आ जाएगा। इन सबको चाहिए कि अल्लाह को बुलाने की कोशिश करें, शायद वो इनकी मदद कर दें, वरना लगता है अल्लाह भी छुपा हुआ है पर्दे के पीछे। या कोई फरिश्ता ही भेज दें। नहीं सर, फरिश्ता नहीं आ सकता सर, वो नबी बन जाएगा ना सर, आपको पता नहीं इस बात का? नहीं, वॉइस वाला आ जाए जस्ट इधर ज्वाइन होने के लिए। सर कुरान के मुताबिक नबी बनने की सिर्फ एक ही शर्त है कि कोई फरिश्ता उससे आके बात कर रहा, बस। और अच्छा, मतलब साहिल सर फिर नबी बन जाएंगे? सर साहिल साहब ऑलरेडी प्रॉफिट है। एडम, इसमें और एक चीज है ना, जब अल्लाह जो है वो आग के जरिए से बात कर सकता है, तो इंटरनेट के जरिए से क्यों नहीं कर सकता है? सर आग के जरिए से बात उसने सिर्फ एक ही से की है, मूसा से। अच्छा, स्ट्रीम यार्ड का लिंक फिर से शेयर कर दूं ताकि अल्लाह ज्वाइन कर सके, लिंक भी तो रहना चाहिए। सर आग में फेंके, सर आग में, सर आग जलाएं घर के पास, उसके अंदर स्ट्रीम यार्ड के लिंक का प्रिंट आउट निकाल के फेंके, शायद अल्लाह को पता लग जाए। स्वीटी जी ने स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी शेयर कर दिया है। स्वीटी जी फौरन इस स्वीटी जी लाइव ही आ जाएं थोड़ी देर के लिए, और इस स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है वो प्रिंट आउट करें अपने प्रिंटर से, और घर के पास चूल्हे की आग में जरा फेंक दें, शायद वो अल्लाह तक पहुंच जाए लिंक। वैसे साहिल सर इस स्ट्रीम यार्ड का लिंक लिख के ना आप तवीज बना के पहने, शायद आ जाए अल्लाह। ओ यार दोस्तों, चलिए स्ट्रीम क्लोज करने का भी वक्त हो गया है, वरना कोई मुझे डांट ही देगा। और क्या देगा? डांट देगा। कौन डांट रहा है? हाँ, जो कोई तो है जो मुझे डांट देगा अरे कि बड़ी लंबी लंबी स्ट्रीम्स करते हो आप। अरे तो जी, तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को आज की स्ट्रीम पसंद आई होगी, खास करके जिस तरीके से जजर मोहम्मद आए, एक्स मुस्लिम ऑफ केरला जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, और उम्मीद है कि उनके जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी जल्द इस चैनल पे आएंगे और अपने व्यूज रखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज तक हमने कोई मोमिन अभी तक इस चैनल पे नहीं देखा जो इनहेरिटेंस की वर्सेस को हमको समझा सके, क्योंकि अच्छा ये इतना लीथल यानी वर्सेस है कि कितने बड़े भी जलेबी बाज हो, कितने बड़े भी अपने आप को दानिशमंद समझते हो, वो यहाँ पे आके इस आयत पे हार मान जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता। तो आज तक कोई आया नहीं, उम्मीद है कि आगे भी ऐसे नहीं हो पाएगा कि कोई आकर इस वर्स को सिंप्लीफाई करके हमें बता सके। हम कोशिश करेंगे, हम इंतजार करेंगे। और दोस्तों वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट आफ्टर द स्ट्रीम इज ओवर। थैंक यू। एडम के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके अलावा अगर आपको जो एक्स मुस्लिम ऑफ केरला का जो वर्क है या उनके टीम में कौन कौन मेंबर है, अगर वो देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, exmuslimofkerala.com है शायद उनकी वेबसाइट, वहां पे आप देख सकते हो। डॉक्टर्स ने शायद लॉयर और कई सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी आप एक्सेस करके एक बार गो थ्रू कर सकते हो। मिलते हैं ट्यूसडे ओपन लाइव स्ट्रीम के साथ। और मैं सोच रहा था कि ये टॉपिक रखा जाए कि एडम को जो आदम अलैहिस्सलाम या हजरत आदम को जो जन्नत से निकाला गया, तो मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदी साहब ने कहा था कि ये अल्लाह की स्कीम का हिस्सा है। तो मैं सोचा था जी, तो मैं सोचा था उसी पे उनके एक सेंटेंस पे कि अल्लाह की स्कीम थी, उस पे हम स्ट्रीम करेंगे, और जो हमारे मोमिन भाई बताएंगे कि वो मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदी साहब की इस बात पे कितना एग्री करते हैं।
अच्छा, और उसी से जुड़ जाएगा फिर फ्री विल, जो कि एडम ने एक स्ट्रीम चलाई थी और हम भी उसी पे स्ट्रीम करेंगे, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर एडम। मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब ने कहा था कि ये अल्लाह की स्कीम का हिस्सा है। सर मैंने तो ओपन की थी और किसी में जरूरत नहीं हुई वहां पे आने की। सर आप इतने छोटे पॉइंट को लेंगे तो किसकी हिम्मत होगी सर? देख लेते हैं ना, कोई कम से कम ये आके कह देना कि मुफ्ती यासिर साहब ने सही कहा है या गलत कहा है कि ये अल्लाह की स्कीम का हिस्सा है। साहिल सर, अरे दिन भर कुछ नहीं खाना, शाम को बहुत जलेबियां मिलेगी। अरे यार, यार ऐसा हो जाएगा कि स्कीम कहे तो भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हमारे मोमिन भाई, और स्कीम ना कहे तो भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। चलें भाइयों, निकलते हैं। मेरी तरफ से इजाजत। थैंक यू सो वेरी चलिए, मच बहुत सर। बहुत शुक्रिया एडम, आप जुड़े और बहुत अच्छा लगा। एक्स मुस्लिम अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप भी इस चैनल पर अपना इंटरव्यू दें कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, हालांकि मैंने बहुत पहले आपसे कहा था इस बारे में, तो जरा वक्त निकाल कर इस चैनल को आप दीजिए। एक्स मुस्लिम अली जी जी, साहब, जरूर जरूर। अभी मुझे कुछ टाइम मिल रहा है तो मैं बीच में आपको बता दूंगा। ये देखिए यार, एडम कहाँ चला गया यार, फिर से आजा, स्वीटी जी जुड़ गई है। एडम फिर से आ जा यार, एडम फिर से आ जा। स्वीटी जी, आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत Thank है। you. Thank you. Can you hear me? यस स्वीटी जी, कैसी हैं Yeah, I आप? just came for Adam. हाँ, एडम भी आ जाएंगे, आपकी आवाज सुनकर तो कोई भी आ जाएगा स्वीटी जी। No, आजकल खराब है आवाज। आपकी आवाज ही इतनी प्यारी है और आप भी प्यारे हैं। Thank you. अभी तो खराब है आवाज। अच्छा, तो आवाज देखिए, मैंने कहा था ना, ये देखिए, यार साहिल मरता हुआ भाई, इंसान भी जिंदा हो जाएगा। मैं कहता हूँ अब स्वीटी जी आ गई, उन्होंने कह दिया शी केम फॉर मी, तो यार अब तो मुझे आना पड़ना था ना यार। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, Hi मरता हुआ Adam. इंसान भी जिंदा हो जाएगा। नहीं No, स्वीटी Adam जी, called me to call, so that's why I came. थैंक यू सो वेरी मच। नहीं जी, थैंक यू सो वेरी मच। यू आर डूइंग एन ऑसम जॉब एज ए मॉडरेटर इन माय चैनल। आई रियली Thank you. अप्रिशिएट दैट। तो मैं My आपका pleasure. स्पेशल स्पेशल शुक्रवार, क्या कहते हैं, शुक्रगुजार, शुक्रगुजार। धन्यवाद। हाँ, शुक्रवार हो, okay. नहीं नहीं थैंक सर, यू, शुक्रगुजार। शुक्रगुजार, यस। My pleasure. It's my pleasure. तो We are स्वीटी जी, all working in this together, so it's all cool. ऑसम ऑसम, थैंक यू सो वेरी मच। तो क्या कहेंगे स्वीटी जी वो कल की लाइव वीडियो के बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं? I was alone handling your chat, so I just tried to हिंदी में listen बोलिए ना also. स्वीटी जी। मैं कोशिश कर रही थी आपकी चैट को हैंडल करने का, बिकॉज बहुत कम मॉडरेटर्स थे, सो मैंने थोड़ा सुना, ज़्यादा नहीं, बट अगेन इट्स द सेम थिंग, यू नो, you they just try to defend something which is, I mean, I don't know, कुछ कुछ किसी को कुछ समझाने के लिए उनको ओपन माइंड होना पड़ेगा, बट दे आर नॉट ओपन माइंडेड एट ऑल, सो समझाना इज लाइक, यू नो, यू आर टॉकिंग टू अ वॉल. वेरी And वेल सेड। hats off to you guys. I mean, Adam, you do have patience, but sometime aggression is also needed, which is okay to show sometime. अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो वेरी मच। वो बाज दफा वो यू नो दिमाग का मीटर पो जाता है, यू नो। That's okay. The other वो day, I वो think पता है ना Smart एडम, वो, Creation was talk. Go ahead, sir. हाँ एडम, वो पता है ना, वो तो कार में समझो पानी खत्म हो जाए, कार्बोरेटर, वो क्या होता है वो, जहाँ कार्बोरेटर पे, में, हाँ, तो वो नहीं कैसे वो इंजन रेडिएटर गर्म में, हो जाता है। रेडिएटर में, रेडिएटर में, रेडिएटर, हाँ, रेडिएटर से इंजन गर्म हो एग्जैक्टली। जाता है, वैसा आपका इंजन गर्म हो जाता है वो। ओह यस, मैन That's कितनी okay. जलेबियां सुना है। You are there as a nice, so I think it works out well. थैंक यू सो वेरी मच स्वीटी जी, और साहिल भाई का भी। और Yeah, so I was just saying, I forgot what I was saying actually. स्वीटी जी इतनी बुड्ढी तो नहीं है ना, आप ऐसी बातें तो ना करें अब आप। क्या आप भूल I'm गई what you were saying? no, I was saying something. I forgot. मोहम्मद साहब भी भूल जाते थे कितनी रकात Oh नमाज yeah, I नमाज was पढ़ते saying the other day when a Smart Creation was saying something, and ex-Muslim Samir,
he I think dozed off और वो एकदम से इतना जोर से चिल्लाया my I was like that I just loved that and yesterday I think you screamed at someone my Bluetooth connection got disconnected. I was like, oh my god. And that, I swear it got disconnected. You screamed at it. It was so funny. Oh man, that's crazy. Okay. But it's fun. It's fun to listen to you guys. But you know what? Not only fun, it's just that it's very eye opening to a lot of people. Because a person like me who had no clue about Islam, now मुझे बहुत पता चला है what it is about actually. We can't even call this a religion anymore. It needs to be called cult. Absolutely. Finally. That's the statement I wanted to listen from everyone. Islam is a cult, not religion. Yeah, it's not religion. Calling it because religion you can reform. You can, Mhm. you can moderate, you can just bring new things and take some things out or any social norms that you're following, you can take them out. But this is something is so closed boxed that you can't do anything about it. Absolutely true, sister. अच्छा, Absolutely. सामिया नईम जी कह रही हैं हाउ टू कॉल और टॉक। सामिया नईम जी, हालांकि स्ट्रीम क्लोज करने का वक्त है यार, बाकी कोई लोग प्लीज ना जुड़े। लेकिन सामिया नईम जी, अगर आपको बात करना है तो जो स्ट्रीम यार्ड का लिंक है वो ऑलरेडी मैंने पिन किया है। आप उससे जुड़ सकती हैं और अपनी बात रख सकती हैं। हालांकि स्ट्रीम क्लोज होने का टाइम है, बिल्कुल हम क्लोज करने वाले थे, लेकिन आपके लिए हम थोड़ा रुक सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है, पिन कमेंट में लिंक है, क्रोम ब्राउजर में आप ओपन करिए और ज्वाइन कर सकती है। परवर कौर जी ने जाते जाते $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं रिक्वेस्ट टू एडम, नो मैटर व्हाट द प्रोवोकेशन, डोंट शो योरसेल्फ, यू आर वेरी प्रीशियस। Sir, यानी आपने thank you जो so very कैमरा चालू much. किया था, तो वो कह रहे हैं कि कितना भी प्रोवोक किया जाए बट यू शुड नॉट शो योरसेल्फ। सर वो मेरा कैमरा जो है ना मेरे को कैप्चर ही नहीं कर सकता। अल्लाह की तरह ना मैं पर्दे में रहता हूँ, कैमरे की आंख मुझे पकड़ ही नहीं सकती है। तो ये प्रॉब्लम है नमस्कार मेरे एडम भाई। कैमरे के साथ। अच्छा, सॉरी। समिया नईम नमस्कार जी, एडम। आपको लिंक नमस्कार एडम ऑलरेडी भाई। शेयर किया है। निशांत जी, जी नमस्कार नमस्कार निशांत जी। जी, कैसे हैं आप? Okay, Sahil, Adam, thank you. I'm gonna go now. थैंक यू स्वीटी जी, थैंक यू थैंक यू सो स्वीटी वेरी जी। मच एंड Take थैंक्स अ care, लॉट। stay safe, you guys. You are all precious. That's how Parvat said. Thank you so थैंक्स अ much लॉट। and thank you so very much for all your work that you are doing for the channels. My pleasure. You're welcome. Take care. Take care. जी एडम निशांत भाई, जी, मैंने जो आपको भेजा वो पढ़ लिया था आपने? सर आप जो अभी नहीं अभी पढ़ कह रहे थे सका था उसके सर, मैंने ढूंढ लिया हुआ है और मैं पढ़ूंगा सर, टाइम लगा के साहिल भाई पढ़ूंगा आपने सर। पढ़ा था? साहिल भाई सर सर जी पढ़ जी लेंगे सर, पढ़ लेंगे अभी जी तो जनाब मन कल। सरकार क्या हाल है साहिल? और ताटी जी खैर हो गया। जनाब मन्ना, मैं ठीक हूँ। जनाब मन्ना, जलेबियां आप कैसे हो? दिखा दिखा मुझे जलेबियां दिखा एडम। और क्या हाल अरे है भैया? हाँ, जी भैन ठीक है गया, तुसी सुनाओ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अच्छा, बेहतर मेरे अच्छा, को होना एक चाहिए। बात कीजिए। शाहिद भाई, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ी हैं या जुड़े हैं अभी पता चलेगा। सामिया नईम जी, सामिया जी आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम। थोड़ा ऊंचा बोल सकती है सामिया जी, आपकी आवाज काफी धीमी है। um अच्छा अभी मेरी आवाज आ रही है? आ तो रही है एडम, स्लो है ना आवाज? स्लो है लेकिन ठीक है, काफी गुजारे में है। और कैसे हैं आप एडम जी? अस्सलाम वालेकुम। और या हेलो, मेरी आपसे बात हो चुकी है बट इस तरह से लाइव नहीं। जी जी सॉरी। मैंने कहा आपसे बात हो चुकी है लेकिन इस तरह से लाइव नहीं हुई है, स्काइप के थ्रू हुई है। अच्छा ठीक है। बहरहाल ज्वाइन करने का मकसद यही है या ये बताने का कि सुनती हूँ मैं आप लोगों की स्ट्रीम और मैं मुसलमान ही हूँ स्टिल। और लेकिन ये है कि अब बहुत सारी चीज़ों पे कंफ्यूज हूँ। तो फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गई हैं।
और मैं सुनती हूँ, मैं इवन रॉक क्रिस्टन को भी सुनती हूँ, क्रिस्टन प्रिंस को भी सुनती हूँ। रॉक क्रिस्टन का लिंक मैंने पाकिस्तान में सेंड किया अपने भाइयों को। दे वर सो मैड और दे टोल्ड मी दैट व्हाई यू वर लिसनिंग टू दिस, यू नो, एंड उन्होंने बोला कि ये सब फजूल है और फिर मेरा लिंक ना सेंड कीजिएगा, छितर पड़ जाएंगे। बहुत डांट पड़ी, क्योंकि आधी डांट मुझे पड़ गई, पर मैंने यही बोला कि सुनने में क्या बुराई है। उन्होंने बोला हम लोग को इतनी समझ नहीं है, हमें इतना दीन का नहीं पता, तो हम जैसे लोग सुनेंगे तो हम तो गुमराह हो जाएंगे। अरे तो उनको बेसिक कहना था सेंस। अल्लाह गुमराह करता है, सामिया जी, उनको कहना था अल्लाह गुमराह करता है। अल्लाह करे अभी ये तो बस मैंने नहीं, किसी को नहीं भेजा, ना ही कोई सुन रहा हूँ मुझे उनमें से, वरना तो बहुत बुरी डांट पड़ेगी। तो सामिया जी, ओके, तो यहाँ पे एक बेसिक सा सवाल है। इतना कुछ सुनने के बावजूद आपने देखा होगा कि रॉब के चैनल पे 2-3 दफा मैं गया हूँ और हाँ बिल्कुल लोगों सुना को है। रन टाइम पे लाइव इस्लाम उन्होंने छोड़ा है वहां पे। तो आपके अभी तक क्या डाउट है कि आप इसमें बैठी हुई हैं? यह आसान नहीं होता। सारी जिंदगी आपने जो एक अकीदा जिया होता है, और बेशक उसमें आपके डाउट सामने आ रहे होते हैं। कितनी हदीसें जो कभी हमने सुनी ही नहीं थी, इतना फिल्टर करके इस्लाम सामने रखा गया था। इतनी हदीसें ऐसी हैं जिनमें के नबी पाक के जो वालिदैन हैं वो दोज़ख में हैं, और मतलब अबाउट सकलिंग एंड ऑल दैट, यू नो, वो सब सुनी तो मतलब दैट वाज सो शॉकिंग फॉर मी, इवन दो आई ट्राई टू डिस्कस दैट विद द उलमास एंड ऑल दैट आई न्यू, पर आई डोंट नो एनीवन पर्सनली एनीवेज। लेकिन मैंने किसी ना किसी थ्रू किया तो मुझे उसका यही जवाब मिले, इन चीज़ों में घुसना नहीं चाहिए, जिस चीज़ का आपके अमल से ताल्लुक नहीं है उसको नहीं समझना चाहिए, और इन सब के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ये उस दौर में एक मौके पर की हुई बातें हैं, तो ये यानी सब कि इन पढ़ने रियलिटी आपको आंसर नहीं मिला? नहीं मिला। नॉट आंसर नॉट अ नहीं मिला। सिंगल सॉलिड लॉजिकल आंसर। ये नहीं पढ़ना, नहीं सुनना, मत देखो, दैट्स ऑल। इट्स समथिंग कि आंसर नहीं मिला, कहानी मिली। तो अच्छा, बिल्कुल। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीच में कही है कि हमें अमल करने चाहिए और अमल से हम जन्नत में जा सकते हैं, करेक्ट? हाँ, बोला कि इस चीज़ का अमल से ताल्लुक नहीं है, उसमें घुसो ही मत ना, ये सिंपल कह के ओके। चुप करा देते हैं। अमल का ताल्लुक किस चीज से है? क्या आपने ये सवाल किया उनसे कभी? हाँ, मैंने ये सवाल तो नहीं किया, पर मैंने ये सवाल किया भाई मेरे दीन का ताल्लुक है, मुझे नॉलेज चाहिए, मेरी नॉलेज का ताल्लुक है, जिसकी बेस पे मैं तो चुप नहीं करूंगी, मुझे तो आंसर चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको उनसे ये भी सवाल करना चाहिए कि अमल का ताल्लुक फिर किस चीज से है? हाँ, अमल का ताल्लुक है सजदों से, नमाजों से, कुरान से, रोजों से। कुरान वो जो पढ़ रहे हैं जिसका मायने हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसको सही करने पे तुले हुए हैं कि तजवीद अपनी अच्छी कर लें और अच्छे से पढ़ लें बस। हम्म। बच्चों लेकिन को पढ़ा दें। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तमाम लोग जो हैं वो सिनर्स हैं, राइट? हम्म। और सिर्फ अल्लाह की मर्सी, अल्लाह की रहम से ही आप जन्नत में जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। हम्म। बिल्कुल। और अगर अल्लाह आप पे रहम ना करना चाहे तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो फिर अल्लाह आदिल कैसे है? अल्लाह का एक बेसिक नाम है आदिल, अल आदिल, अदल दी, करने वाला, अदल इंसाफ करने करने वाला। वाला। ठीक है। और अल का मतलब होता है दी, यानी कि सबसे बड़ा आदिल। आप कुरान की जोन सी मर्जी आयत मेरे पास ले आए, अमाल का दारोमदार नियतों पे है और नियतों का दारोमदार अमाल पे है, लेकिन उसका दारोमदार जन्नत पे नहीं है। जन्नत में जाने के लिए नो मैटर कुछ भी हो, जितने मर्जी अमाल हो, 51% भी हो, डज नॉट मैटर। कुरान की चैप्टर नंबर 19 की वर्स नंबर 70 टू 72 कहती है कि हर बंदा पहले जहन्नम में सड़ेगा और फिर अल्लाह जिसको चाहेगा उसमें से निकाल देगा। वरना दूसरा फैक्ट ये है कि अल्लाह ताला जिसको चाहेगा माफ कर देगा और उसको जन्नत में डालेगा, और जिसको चाहेगा नहीं माफ करेगा। बिल्कुल। हजरत अबू बकर की सॉरी हजरत उमर के थ्रू एक हदीस नरेट है कि वो कहते हैं कि जन्नत में अगर मेरा एक पांव जन्नत में हो और एक पांव भी जन्नत से बाहर हो, तो उस वक्त भी मैं अल्लाह की प्लानिंग, ट्रांसलेशन में हम्म। प्लानिंग, अरबी में मकर, से डरता हम्म। हूं कि शायद वो मुझे जन्नत में जाने से रोक दे और जहन्नम में फेंक दे। बिल्कुल। तो इन सारी बातों को देखते हुए अल्लाह का अदल और आपके अमाल किस खाते में है जन्नत में जाने के लिए? पॉइंट नंबर वन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये पॉइंट रखा, मैं इसलिए आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ, हम्म। जाके पता कीजिए। ठीक है, मैं आपको पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद समझना चाह रही हैं और सीखना चाह रही हैं, लिहाजा मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, जाके इसके आंसर लें। ये आंसर मेरे लिए बड़े मुश्किल थे, मुझे नहीं मिले थे। ठीक है। हाँ, तो अभी तो कितनों के मुझे आंसर्स नहीं मिले हैं अभी तो। मैं तो बहुत सवाल उठ रहे हैं, बड़ी देर होगी मुझे इस चीज में घुसे हुए, डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट चीजों में, और
Sam Shamoun, David Roden, all that, you know, and I'm listening to them. Or I have a lot of questions in my mind that I never get answers when I try. नहीं मिलेंगे। अरे मुझे तो एक और बात नहीं पता कल, जैसे अत्तवाबु रहीम है कुरान में कितनी जगह, तो अत्तवाबु हमेशा ट्रांसलेट किया जाता है कि तौबा को कबूल करने वाला, बट अत्तवाबु एक्चुअली मींस इस तौबा करने वाला। एग्जैक्टली वाह। अत्तवाब है। तो अब आपको पता है बहरहाल ना कि अल्लाह प्रे भी करता है, हम्म, अल्लाह अल्लाह प्रे भी करता है। मूसा ने पूछा फरिश्तों से कि अल्लाह नमाज पढ़ता है, प्रे करता है? आगे से जवाब आया नाअम, यानी कि हाँ। नाम और अल्लाह हमेशा दुआ करता रहता है कि मेरी जो मर्सी है वो मेरे गुस्से से प्रेसीड कर ले, यानी कि अल्लाह इतना ओहो, गुस्सेले वाला है, गुस्से वाला है, मेरे से ज्यादा गुस्से वाला है। वो हर वक्त दुआ मांगता रहता है कि मेरी जो रहम है ना वो मेरी गुस्से के ऊपर आ जाए। वो बेचारा हर वक्त यही दुआ करता रहता है। किससे करता है किससे सर? करता? सर खुद ये से आप ही। बोल पूछे उनसे कि किससे करता है। हम तो बस अभी 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 चल रही हैं, अभी कश्मकश और जद्दोजहद अभी जारी है, और पता नहीं तो ऊँट के किस करवट बैठता है मेरी लाइफ में, बट यस आई एम ट्राइंग टू रीच द ट्रूथ एंड आई एम विश कि मैं आई विल सी द ट्रूथ तो वेरी सून। ये तो सिस्टर जबरदस्त बात है सामिया नसीम जी। बहुत अच्छी आपने बात की है, लेकिन विश ना करें, लॉजिक को पकड़ें और अपने दिमाग को यूज करें और आप छोड़ देंगे। पता है लॉजिक और दिमाग तो मतलब लेकिन मसला सारा ये है ना कि खास तौर से एक औरत का और फिर ऐसे यू नो माशरे का, और फिर मेरे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है अकेले रह करके बहुत इन डिफिकल्ट डिसीजन है। को लेना। मैं आई अपनी मियाँ को अंडरस्टैंड। शामिल करती हूँ बीच में, उनको उनसे शेयर करती हूँ, तो वो जरा पसंद नहीं कर रहे होते ज्यादा। एक तरफ वो कह रहे होते हैं अच्छी बात है, हमें लर्न करना चाहिए, नई चीजें देखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ वो कह रहे होते हैं कि मतलब अब थोड़ा सा मेरा टोन चेंज हो रहा होता है ना, बोले तुम एग्रेसिव अब उस तरह हो रही हो कि तुम खिलाफ जाकर एग्रेसिव हो रही हो, पहले तुम एग्रेसिव तब होती थी जब तुम डिफेंड करती थी, हम्म तो वो चीज उन्हें थोड़ी बुरी लग रही होती है। और वो ये नेचुरली हो रहा होता है, कभी अभी मुझे जो चीजें सामने आ रही है मुझे नहीं अच्छी लग रही, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी ना। लेकिन इस्लाम में अच्छा क्या है ये भी पूछ लेना था किसी से। मर्दों के लिए तो सब अच्छा है भाई। एग्जैक्टली, औरतों के लिए भाई आप तो बैठी होंगी जन्नत में अपने खावंद के इंतजार में, जब वो 10 या 15 या 20 या 70 या 72 से फारिग होएगा फिर आप तक आएगा। उतनी देर तो आप घर में बैठे इंतजार कर रही हैं। मतलब अच्छा वो तो लेकिन देखें पहले तक क्रिटिकल होकर सोचा ही नहीं ना, तो पहले तो मतलब ये सोचती कि मतलब कि वहां कोई ऐसी फीलिंग्स ही नहीं होंगी कि जेलसी होगी, और सबसे बढ़कर ये सोचती पहले मैं अपने अमाल इतने दुरुस्त कर लूं कि मुझे जन्नत मिल जाए, इससे बढ़कर तो हाँ मैं वो कुछ भी एक बहुत सोचती ही बड़ा नहीं हूँ। मसला है। अच्छा वैसे सर यहाँ पे एक सवाल है कि टाइम तो इस दुनिया के लिए है, तो आसमान पे तो टाइम नहीं होगा ना? सर लेकिन वो 72 से फारिग होगा तो अपनी बीवी के पास आएगा ना, बीवी तो सरदार बन के बैठी हुई है ना। नहीं वो टाइम और भी तो कितने बताते हैं ना हजारों कि साल इतने तक चलते रहेगा मामला, कितने 10,000 हजारों साल साल तक ये मामला चलते रहेगा। जो एक जब सॉरी टू से इरेक्शन होगी ना माजरत के साथ, वो 10,000 साल तक हाँ चलेगी। तो अगर उसको 10 सूरें मिल गई हैं वो जन्नत के लेट से, अच्छा ये भी एक बड़ा बड़ा मसला है, जन्नत के 42 लेवल्स हैं, ठीक है, और बाज जगह पे आता है कि जन्नत के 12 लेवल्स हैं, ठीक है। हायरार्कीज है जन्नत की भी, हर बंदा एक ही जन्नत में नहीं होगा, डिफरेंट जन्नत की हायरार्कीज हैं। और जन्नत की जो लोअर लेवल पे बंदा बैठा होगा वो अपर लेवल वाली जन्नत के साथ देखेगा तो वो रश करेगा, ओ अल्लाह काश के मैं इस वाले लेवल की जन्नत पे होता। यानी जन्नत में भी आप कंटेंट नहीं होंगे, हिरिस आप रहेगी। उस वक्त आपके उस वक्त भी आपके पास हिर्स होगी ज्यादा अमीर बनने की कि मैं ऊपर वाली जन्नत में चला जाता। अच्छा दूसरा मसला आता है, लेट से बीवी के अमाल जो हैं वो जन्नत के 4थे दर्जे वाले हैं, मियाँ के अमाल जो हैं जन्नत के 6ठे दर्जे वाले हैं। यहां पे मुफस्सिरीन का भी इख्तलाफ आ जाता है, क्या बीवी 6ठे दर्जे में जाएगी या बीवी को नया खावंद मिल जाएगा और मियाँ को नई बीवी मिल जाएगी, व्हाट्सएवर एसवाइजी लोगों सीढ़ी। के हाँ। फिर आप जन्नत के 6ठे लेवल में हो सकते हैं, बीवी 4थे लेवल में हो सकती है, बच्चे 11वें लेवल में हो सकते हैं। बच्चे माँ बाप को अपने लेवल पे ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे? सर इसके पीछे इतनी बड़ी साइंस है और उलमा का इतना इख्तलाफ है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं।
और अगर आप जन्नतुल फिरदौस पे चले गए हैं, टॉप लेवल ऑफ जन्नत में, ठीक है यार, इतना खम्मन गेड़ियां हैं। आप जब इस्लाम को पढ़ते हैं, जन्नत को भी पढ़ते हैं ना, आप कहते हैं यार क्या पागल बना है यार। इन द हेवन भी आपको हिर्स रहेगी कि मेरे पास वो वाला बड़ा घर होता, या बड़ा बाग होता, या बड़ी ज्यादा वाली औरतें होती। यार क्या क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इन द हेवन यू विल स्टिल बी लुकिंग फॉर समथिंग मोर। एडम सर, वहाँ बच्चे भी पैदा होंगे? नहीं सर, वहां बच्चे नहीं होंगे, वहां पे सेक्स विदाउट किड्स है। पाखाना भी नहीं जाएंगे ना यार अब अली साहब, आप लोगों से पेशाब अच्छा पाखाना लगा भी बात नहीं है। करके, और मैं आप लोगों की बात सुनती भी हूँ और देख रही हूँ, और बस सही राह पता लग जाए और हकीकत पता लग जाए जल्दी, यही ख्वाहिश है। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं जीरो से उठकर यहाँ आ गई हूँ, मतलब मैं वहां पर कि जहाँ मैं नमाजों का एहतमाम, कुरान का एहतमाम, बच्चों को अपने खुद पढ़ाना, क्योंकि बाकायदा तजवीज से सीखा, फिर मैंने अरबिक कोर्स किया जो बेसिक होता है, और दौरे कुरान लेना, मतलब मैं बहुत इस तरफ थी और हूँ भी, लेकिन अभी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। सिस्टर, अगर आपको कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकती हैं, आपके लिए कभी टॉपिक की कैद नहीं है। आप साहिल की स्ट्रीम पे आ जाएं, चाहे मेरी स्ट्रीम पे आ जाएं, जब कभी आपको क्वेश्चन हो आप कर सकती हैं। उसके अलावा मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक पड़ा होता है मेरी हर डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने प्राइवेट सवाल करना हो तो डिस्कॉर्ड पे जुड़ जाएं, और वहां पे आप मुझे प्राइवेट सवाल भी कर सकती हैं। आपके लिए कभी भी किसी टॉपिक की कैद नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपकी भी टेस्टिमोनी मैंने सुनी हुई है और बहुत मुझे अच्छा लगा था फादी के उस पे शो पर। तो एनीवेज दैट वाज रियली नाइस, और बहुत ज़्यादा फिर समझ आती है कि नहीं, मतलब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये खामखा की कोई फीलिंग्स है। तो बेशक बेशक। चलें, बहुत शुक्रिया आप सबका, और बहुत बहुत दुआ में याद शुक्रिया रखिएगा। जी, बहुत बहुत डेफिनेटली। शुक्रिया सामिया नईम जी, आप आई और आपने अपनी बात रखी। उम्मीद है कि जो आपकी जो तहकीक है, रिसर्च है, वो जल्द पूरी होगी और आप इस जंजाल से निकल जाएंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अभी हाँ ज़रूर, अभी तो मतलब मैंने एक सीड अपने भाई के और मियाँ के दिमाग में डाल दिया हुआ है कि सर्च करें कि खाना काबा की क्या हकीकत है, और ये कहाँ इसकी आर्कियोलॉजिकल क्या प्रूफ्स हैं, ऑल दैट, so let's see how it works. जी, डेफिनेटली। बेस्ट ऑफ लक। Okay, बहुत बहुत bye. शुक्रिया। ट्रूथ सीकर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस, यू विल गो इन हिस्ट्री एज prophet of modern times who pioneered and killed Allah to liberate a billion Muslims from slavery of Islam. ट्रूथ सीकर जी, आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। और निशान जी, आप शॉर्ट में अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है साहिल भाई, मैं 1 से 1.5 मिनट लूंगा मैक्सिमम आपका। जी देखिए साहिल भाई, आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग सबके सब, ठीक है। और आपको ना, आप ऑलरेडी फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप, और उसका एक बेसिक रीजन है जो आपकी पॉलिसी है। आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं डिस्कस करते हो, उसके आसपास नहीं जाते हो, विच इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी। ऐसी और भी पॉलिसी है जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे, आप अपने मतलब जो पियर्स हैं आपके आसपास के चैनल से, उनसे बहुत तेजी से बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। वी ऑल सपोर्ट यू फॉर दैट, ठीक है। आपकी थैंक यू पॉलिसीज सर, मेजरली। अब सर मेरी बहुत एक, बहुत एक शुक्रिया छोटी सर। सी, मैं पूरा नहीं नाम लेके बोलूंगा, बट मैंने ना कुछ लिंक्स डाले हैं प्राइवेट चैट में, ठीक है सर। मेरा मानना ये है कि देखिए, मैं एक कल्ट से बचने के लिए दूसरे कल्ट को महान नहीं बना सकता। मैं सर देखिए, मैं कई चीजें पढ़ता हूँ, शायद आप उतना आप रिलीजियस स्टडीज में बहुत ज्यादा रहे, या अपनी बाकी स्टडीज में रहे, तो आपने उतना ज्यादा नहीं शायद पढ़ने का मौका मिला होगा। तो मेरा मानना है, आप पहला आर्टिकल इसको खोल के पढ़िए और कंपेयर कीजिए कि इस्लाम से कितना ज्यादा खतरनाक है। मतलब इस्लाम, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ लेंगे, मैं इसका समरी बता देता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। और ये रिनोन्ड टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मतलब कोई अर्जी फर्जी वेबसाइट से नहीं, और भी बहुत लिंक किए मैंने, सब रिनोन्ड इंडियन वेबसाइट की। एक माँ को उसके 3 बच्चों को उसके सामने मार के, उनका खून निकाल के चावल में मिला के खिलाने वाली आइडियोलॉजी, मेरे हिसाब से तो इस्लाम में भी मैंने इतना खतरनाक नहीं करा है। एंड दिस इज द आइडियोलॉजी। इस वजह से मुझे थोड़ा मतलब लगा कि आपको बोलना चाहिए। शायद आप ना अवेयर हो, आप खोल के पढ़ सकते हैं। ये है आपका साइन बारी मसाकिर, ये एक है, ऐसे कई मैसेजेस। तो ओके, मेरा मानना ये है
साहिल भाई यार कि देखो जोशी आप भाई ग्रो कर प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम ये है सर, आई डोंट नो, मैंने अभी आपके आर्टिकल नहीं पढ़े, मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन एडम भाई प्रॉब्लम मैं इसमें ये एक है, मिनट जस्ट अ सेकंड, एडम भाई लेट मैं मी एक आंसर यू फर्स्ट, तो फिर आप जवाब दीजिएगा। असल में किसी एक आधे बंदे के एक्शन, आई डोंट नो के आर्टिकल में वो कौन है जिसने ये हरकत की, लेकिन किसी भी एक आधे बंदे के एक्शन के ऊपर ना आप उस पूरी सोसाइटी को नहीं कह सकते कुछ, अनलेस कि वो कुछ फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं खड़े हैं, इस चीज को समझें, हम नहीं इस्लामिक एडम भाई आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़े हैं, ठीक है ना। तो अरे आई डोंट नो कि वो आर्टिकल में कौन है कौन नहीं है, लेकिन अगर तो वो कोई आइडियोलॉजिकल रिटन थिंग है जिसको मानते हुए ये सब कुछ उसने किया, देन हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। अगर वो आइडियोलॉजिकल थिंग नहीं है, कोई स्क्रिप्चर नहीं है, कोई रिटन चीज नहीं है, फिर उसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड नहीं व्हाट आई एम सेइंग। एडम भाई मैं आपको उसके खिलाफ बोलने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपनी पॉलिसीज तक स्टक कीजिए। जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, हो सकता है आप किसी ट्रैप में फंस रहे हो। देखिए कई सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, आप फ्लरिश कर रहे हैं, हो सकता है 10 लोग आपके पीछे आ रहे हो, ठीक है, यू नेवर नो। मेरा सिर्फ आपको सजेशन है एज अ वेल विशर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको अगर आपको सही लगता है आप प्रमोट कीजिए, नहीं डिमोट कीजिए। मेरा मानना ये है कि ऐसा ना हो, देखिए आप हिंदुस्तान, मतलब मैं बहुत ज्यादा ये सब स्ट्रीम में नहीं बोल रहा था, अगर कहीं मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट हो पाता तो मैं शायद और खुल के बोलता हूँ, कि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ ये सब। तो मेरा सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है साहिल भाई कि, और आजम भाई देखिए आपको इंडिया के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं इसलिए आपसे इस बारे में कह भी नहीं सकता, ठीक है। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे अगर आप कहेंगे मैं प्लेथोरा ऑफ आर्टिकल दूंगा आपको, प्लेथोरा ऑफ, मतलब 1000 2000 5000 कितने आर्टिकल चाहिए। और ये रिनोन्ड वेबसाइट से आर्टिकल कह रहा हूँ मैं, किसी मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि किसी ने भी कुछ लिख दिया और मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने इंडिया का जो यार बेस्ट न्यूज़पेपर है देखें, यार उसका देख ले, मैंने आर्टिकल आपका पढ़ लिया, मैं आपको बता देता हूँ। अब जरा म्यूट करें आप, आपके पीछे से नॉइज बहुत है। मैंने आर्टिकल खोल लिया है, ये आप बंगालीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, which has nothing to do, it's not a race, it's not a cult, it's not a, it's come on man, please don't do that, ठीक है। अब ये देखें ना, ये अब वहां पे वो किस चीज को मान रहे हैं, उनके स्क्रिप्चर्स क्या हैं। अब वहां पे हर किस्म के रिलीजन के लोग रहते हैं उस एरिया के अंदर। आप एक पर्टिकुलर, यार नहीं यार, नहीं 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 मैं जोशी पॉज साहब, करूंगा, नहीं ऐसे मैं नहीं पॉज करना कर, एक मिनट एडम भाई मैं आपको पॉज करता जी। हूँ, आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है। आप कहते हैं तो मैं खुल के कॉन्टेक्स्ट बोल देता हूँ नहीं जो मैं सर, फिर बोलना ये नहीं पॉलिटिक्स के, ये चाहता। चैनल नहीं है ना देखिए पॉलिटिक्स के निशान बारे में जोशी बात करने जी, का। आप देखिए नहीं निशान समझे जोशी जो जी, मैं नहीं नहीं समझ पाएंगे, निशान आप नहीं जोशी जी, समझ। एक एक मिनट निशान जोशी जी, ये प्लेटफॉर्म नहीं है पॉलिटिकल और ये वही सब तो मैं भी कह रहा हूँ, चीज यही बात तो डिस्कस मैं भी करने कह रहा के हूँ लिए। एडम भाई, नहीं ठीक यही है, हम बात तो मैं भी डिस्कस भी कह रहा नहीं हूँ। कर रहे हैं ना निशान जोशी जी, नहीं हम वही डिस्कस भी नहीं कर नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, ही सेड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो उस वजह से मेरे को इंस्टिगेट हुआ, इसलिए मैंने आपको भेजा। अदरवाइज आई हैव गॉट नो आइडिया, यू नो योर गेस्ट टुडे, हाँ ठीक है यार, योर वो सी ही इज न्यू टू दिस चैनल, वो उनकी एक मैंने ये बात तो हमने डिस्कस की है ना कि उतना तो गैप हमको देना पड़ेगा कि कोई दूसरा गेस्ट आके वो अपनी बात बता रहा है ना, ही इज नॉट फोर्सिंग यू, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन निशान जोशी जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मैंने आए। बस ये कहा कि आपने पॉलिसी रखी है, बस वैसी ही रखिए, मैं और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, मैं ना किसी को प्रमोट करने को कह रहा हूँ, ना किसी को डिमोट करने को कह रहा हूँ, ना किसी ठीक है, अगेंस्ट बोलने बहुत को कह बहुत रहा हूँ, ना शुक्रिया किसी सर, को। चलिए बहुत थैंक यू बहुत शुक्रिया आजम भाई, आपका, आप आप जुड़े। जी तो ये सर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, सॉरी उसके कोई लिए। मसला नहीं सर, बहुत शुक्रिया, नो वरी सर, थैंक यू फॉर बहुत ज्वाइनिंग बहुत इन। थैंक शुक्रिया सर, आप आए। यू, ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एडम, once again lot of thanks to you for joining this stream, और अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग देख रहे थे स्ट्रीम को, हालांकि नंबर्स कम थे, एंड आई एम श्योर नंबर्स इसलिए कम थे क्योंकि स्ट्रीम इंग्लिश में थी स्टार्टिंग की, तो कई लोग जो है जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है शायद इस वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्टिल क्रॉस 800 व्यूअर्स टुडे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जितने लोगों ने सुपर चैट सुपर स्टिकर्स भेजे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप फाइनेंशियली भी इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। वंस अगेन वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखें। विल कम लाइव विद ओपन लाइव स्ट्रीम विल डू ऑन ट्यूसडे को हम ओपन लाइव स्ट्रीम करेंगे उसी टॉपिक पे जो मैंने कहा कि अल्लाह की स्कीम का हिस्सा था एडम को जन्नत से निकालना, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे, देखते मजबूरी हैं। स्कीम की खातिर मैं यहाँ बैठा हूँ यार, हद हो गई कसम। जी,
मैं चंगा भला तो जन्नत में था, अल्लाह ने निकाल दिया अपनी स्कीम की हाँ खातिर मुझे। देखिए, जी बिल्कुल, ये अल्लाह की स्कीम की वजह से हम सब नीचे भेजे गए। हम सब नहीं सर, मैं खामियाजा आदम एडम मैं हूँ भाई, एडम मैं हूँ भाई, आप कहाँ से? हम हेलो भाई, मेरे को भेजा नीचे, आप तो वैसे ही नीचे थे। ये आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है यार। एग्जैक्टली सर, जुल्म तो मेरे साथ हुआ है यार, आप ऐसे ही रो रहे हैं। चलो, तो उस दिन जो है आपका जुल्म जो आप पर हुआ है, उसको बड़े जोरों शोर से आप जो है उसका क्या कहते हैं, उसको ताकुब करना आप। बिल्कुल, मैं आके रहूंगा वहां पे। मेरे साथ जुल्म हाँ। हुआ है, पकड़ के मुझे स्कीम के तहत निकाला गया जन्नत में से यार, हद हो गई। सर आप बदला लेंगे, आपके साथ ज्यादती हुई है। तो और क्या, फुल टाइम। एडम का, साहिल का, एक्स मुस्लिम अली का, जितने लोग जहन्नम में जाने वाले सबका बदला लेगा रे तेरा एडम। तो वेट करते हैं ट्यूसडे तक का। अगर जिंदगी बाकी रही तो ट्यूसडे ओपन लाइव स्ट्रीम में जरूर मिलेंगे दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब ब खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।